record and can be deduced from the perusal of the record, impugned order as far as petitioner whose name appears at serial number 22 cannot be sustained in the eyes of law. Accordingly, impugned order annexure A2 as far as it relates to the petitioner is hereby quashed. Petition is allowed in part and disposed of. Obliged, my lord. I apologize. पढ़ के आइए, लेकिन आप लोग इस तरीके से मेरे कोर्ट में मत आइए कृपा करके, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. पढ़िए. इफ आई कैन असिस्ट यू, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा. मैं चाहता हूँ यंगस्टर्स ऊपर आए, आप ही अगली पीढ़ी है वकालत की, बट ऐसे हवा में मत आइए. मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे. In this case, my lord, initially this honorable court passed an order dated 15/2/2023, my lord, and but till date they have not complied the said order, my lord. And is also in the last date of this honorable court granted 2 weeks time to file the reply on the amendment application, my lord. देखिए अभी जवाब नहीं आया, क्योंकि मेरा 15/2/2023 की ऑर्डर शीट देख ले my lord. हाँ ठीक है, देख ली. अरे मोमेंट my lord, लास्ट पैराग्राफ देख लिया. श्री किसको जवाब देना है, आपको कि आपको? हमको देना. हाँ, क्यों नहीं दे रहे जवाब? आप दे देंगे सर. दे तो देंगे, बड़ी मेहरबानी. आप नहीं सर, मेहरबानी. दे देंगे, लेकिन क्षमा करें, आज आना चाहिए था. गलती है हमारी सर. हाँ, श्री अमल पुष्प श्रोती tenders apology for not filing reply in time. Let reply be filed within 2 weeks, failing which this court may order for personal presence of the managing director of Madhya Pradesh Purv Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, that is respond number 2. List let reply be filed within 2 weeks. Rejoinder, if any, within further period of 2 weeks. List in the week commencing 6 मई 2024. इसमें मेरा फॉर्मल सा अमेंडमेंट है. हाँ ठीक है ना, तो उसको अलाउ कर दीजिए. जवाब आ जाए उसके बाद. चलिए. नंबर 10 मोहम्मद अली. Because there's a delay of 10 days in the payment of process fees, and for that I've moved an application for condonation of that delay. Heard on IA 978, Your Lordship. 978 of 24, seeking condonation of delay in payment of PF. Next, application considered, delay condoned, and the delay is condoned. Let notices be now issued to the respondents list after 4 weeks. Most obliged, Your Lordship. सुभोष घोमोरे, इनको मालूम होना कि रोज बैठते हो भाई, रोज बैठते हो, नाम नहीं मालूम रहते वकीलों के, ध्यान दिया करो. Your Lordship, we have filed the application for change of counsel in this matter, Your Lordship. Heard on IA, कहाँ है IA number? Your Lordship, वो ड्रॉप बॉक्स में डाला था, तो we have not received the number yet, Your Lordship. आपका शुभ नाम क्या है? मेरा श्रेय दीवान. श्रेय दीवान. श्रेय दीवान. For the petitioner submits that he has moved an application for change of counsel. As nobody is appearing to oppose that application, same is allowed. Let Shri Diwan is allowed to pursue the case on behalf of the petitioner. बताइए, merits पर बताइए, क्या मैटर? Your Lordship, my respectful submission is that the arguing counsel Yogesh Bhatnagar is. नहीं, ये सब चीजें नहीं. Once application is allowed, बताइए क्या मैटर है? Your Lordship, my humble apology, Your Lordship, मैं fix this matter for the next. नहीं, ये सब नहीं होता. When Shri Diwan is requested to argue this matter on merits, he prays for time. Issue notice to the respondents on payment of PF per registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. List in the week commencing 20 मई 2024. चलो. I'm grateful, sir. Number 10, the Aman Patel. Lordship, the impugned order in annexure P1, Lordship, we have filed, the petitioners filed the application under order 1 rule 10 subclause 2, Lordship. The trial court dismissed the application. बताइए
क्या एप्लीकेशन कहाँ है आपकी? लॉर्डशिप एप्लीकेशन एनेक्चर P4 लॉर्डशिप। P4 पढ़ें उसको प्लीज। प्रार्थी आवेदकगण द्वारा निम्नानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत है। यह कि उक्त नामांकित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें वादी द्वारा प्रार्थी आवेदकगण को यह आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह कि वादी द्वारा शासन जानबूझकर वाद पत्र में अपूर्ण व असत्य सजरा दर्शित करते हुए दावा प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा सजरे में हरिलाल गोंड को मृत दर्शाते हुए सिर्फ स्वयं व गयाराम को हरिलाल का वारिस लेख करते हुए दावा प्रस्तुत किया है, जबकि स्वर्गीय हरिलाल सिंह गोंड के वादी गोरेलाल व लापता गयाराम हैं आप इनके थोड़ा सा फैमिली ट्री बताइएगा। आनंद सिंह साहब का हरिलाल साहब से क्या संबंध है? ये बेटे हैं लॉर्डशिप। हरिलाल आनंद साहब, आनंद, हाँ काम बताइएगा कैसे बेटे हुए इनके? P6 लॉर्डशिप। हैं? P6 क्या है ये P6? जीनोलॉजिकल ट्री है लॉर्डशिप। हाँ पढ़िएगा। ये इसमें लॉर्डशिप हरिलाल सिंह गोंड है, उनकी वाइफ जो थी सुकृति थी, हाँ और इनकी पुत्री संकी सिंह गोंड जो अभी डेथ हुई है। किसकी पुत्री? हरिलाल की नहीं तो इनके एक तो सखी सिंह गौड पुत्री हो गई लॉर्डशिप, ठीक है, गयाराम सिंह गौड पुत्र, हाँ साधु पुत्र, और गोरेलाल जो गोरेलाल जिन्होंने मुकदमा लगाया, लॉर्डशिप, फिर सखी सिंह की ब्योहरन सिंह गौड और सरोज सिंह पुत्री मौजूद, ये दोनों पिटिशनर हैं इसमें। ठीक है। और ये कौन ब्योहरन सिंह और सरोज सिंह? लॉर्डशिप नहीं ये कौन है आपके? आनंद साहब कौन है? ये आनंद बेटे लास्ट में है लॉर्डशिप। कहाँ पर आया है? लास्ट में नंद बहादुर सिंह उर्फ आनंद सिंह गोंड। नंद बहादुर सिंह वर्सेस उर्फ आनंद सिंह लॉर्डशिप। पुत्र। कैसे मालूम पड़ेगा ये पुत्र हैं? ये लॉर्डशिप इनका कोई राशन कार्ड है हरिलाल जी का? P7 में जो ये खसरा पंसाला है लॉर्डशिप। हाँ। खसरा पंसाला में नीचे ये जो खसरा डिस्प्यूटेड पंसाला से टाइटल नहीं आ जाता, आपको ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप जो है इनके वैधानिक पुत्र हैं हरिलाल जी के। थोड़ा सा बताइएगा जरा। आपकी माँ बेवा सुकृति फौत हो गई, वो भी फौत हो गई लॉर्डशिप। ठीक है। ये P7 में लॉर्डशिप पेज नंबर 40 में ये इनका पूरा सभी बेटे बेटियों का सबका नाम दर्ज है। P7 पेज नंबर 40 लॉर्डशिप। हाँ क्या है? एक पेज लगाया आपने जो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये 2 पेज लगा है लॉर्डशिप। इसमें एक ही स्कैन हुआ है, दिखाइएगा भाई। देखिएगा एनेक्चर P7 इज नॉट कंप्लीटली स्कैन्ड। श्री लॉर्डशिप एक हम्बल सबमिशन और है लॉर्डशिप। हाँ एक सुन रहे हैं आपको। अमन पटेल सबमिट्स दैट annexure P7 contains 2 pages, 40 and 41, but only one page has been scanned by the person responsible for scanning. The scanned file is incomplete. Notice be issued to the person responsible for scanning for incompletely scanning the document and not bringing on record the खसरा entries. खसरा एंट्री से टाइटल नहीं आ जाता वकील साहब। आपको मैं मौका दे रहा हूँ, आप राशन कार्ड दीजिए हरिलाल जी का, उससे मालूम पड़ेगा कि उनके परिवार में कौन कौन था। जस्ट एक चीज और बोल रहा हूँ, ये एनेक्चर P8 में P6 में है साहब। है P6 में स्कैन हो गया जो आप P7 बता रहे हैं। क्या करें इसके लिए? हम जिम्मेदार थोड़ा ना है। P6 में अगर स्कैन कर देंगे वो, उनको P7 में स्कैन करना चाहिए। लॉर्डशिप एक और सूट लगाया है इन्होंने जो रिस्पोंडेंट है, इसमें उन्होंने P8 में पार्टी बनाया, सबको पार्टी बनाया P8 में। लॉर्डशिप P8 लगा हुआ है वो सूट। लॉर्डशिप पेज नंबर 43 में इसमें फर्स्ट पेज ऑफ द प्लेंट हमने लगाया है। हाँ। पेज नंबर 43 इसमें इन्होंने सबको आनंद बहादुर उर्फ नंद बहादुर सिंह एंड सो शंखी मुनिया राधा, ये पुत्रियों को भी बनाया, हमें भी बनाया पार्टी लॉर्डशिप। आपका नाम कहाँ आ रहा है? फर्स्ट नंबर पे लॉर्डशिप आनंद बहादुर। आनंद बहादुर। देखिए petitioner's contention is that Gorelal has filed another suit bearing number नंबर लॉर्डशिप RCSA 109/2015 RCS 8109/2015. It is pending in the court of Second Civil Judge Class 2 Amarpatan District Satna, in which petitioner has been impleaded. नहीं, आपके पिता का नाम जो है, एक सेकंड इसीलिए आप ही की बात से चलते हैं। पिता श्री पमनिया गौंड, हरिलाल गौंड नहीं लिखा, सॉरी।
प्रेमलाल सिंह लिखा है, प्रेमलाल सिंह। ये उन्होंने लिखा है हैं? लॉर्डशिप, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है, तो इसीलिए तो हमने आपसे बोला था हरीलाल का ले आइए राशन कार्ड, वेयर इन and submits that the petitioner is entitled to be impleaded as a party and his application under order 1 rule 10 has been wrongly dismissed. Next para. However, it is evident from annexure P8 that Anand Bahadur alias Nand Bahadur Singh Gond is shown as son of Shri Premlal Singh Gond. Premlal Singh Gond and not as son of Harilal Singh Gond, and thus his contention that he is son of Harilal Singh Gond is not made out from the record. Full stop. Petitioner counsel is granted time to bring on record ration card of Harilal Singh Gond to point out as to who were the family members whose names were mentioned in the ration card of Shri Harilal Singh Gond. He prays for and is granted 3 weeks time to do the needful list after 3 weeks. लॉर्डशिप 1 or 2 weeks में भी, होली की छुट्टी आ जाएगी वकील साहब, आपको इसी के आफ्टर होली वेकेशन। हाँ आफ्टर होली वेकेशन आएगा। Petition number 13. Lords, with my lord's permission, I want to make a request to you. हाँ बताइए। Lordship, I am for the Snehalata Parashar, member of the committee. I came to know that the representation they are relying upon has serious allegations against me. In the earlier round of petition, Your Lordship, I was the necessary party. But in this petition, I have not been made a necessary party. So, with Your Lordship permission, I may be permitted to file the intervention application during the देखिए ठीक है, Lord, as well as there is no service matter, my lord. तो फिर नहीं मिसलेनियस पिटीशन भी तो लग रही है हमारे यहाँ। WP. हाँ चलिए। सोसाइटीज का मैटर हाँ? WP है था, हाँ तो WP तो Society. अदर देन लगा है, अदर देन तो अदर देन नहीं है हमारा रोस्टर। लिखिएगा दिस केस इज टू बी लिस्टेड बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच एज दिस कोर्ट इज नॉट हैविंग रोस्टर ऑफ अदर देन सर्विस रिट पिटीशंस। फुल स्टॉप। In the meanwhile, Shri, आपका शुभ नाम बताइए। Divyanshu Tiwari. Divyanshu Tiwari may file an application for intervention. List thereafter. Grateful. May prefer day after ये tomorrow. तो वही पन्ना सोसाइटी स्कूल वाला केस हाँ है वही ये। वाला केस है आप। इसमें बेल वेल दी थी जी जी। जी। उस दिन तो विश्राम हुआ था आप लोगों का। But there was already an inquiry which was ठीक है, conducted. विश्राम के पश्चात ही दी थी ना बेल। जी। चलिए। I'm like, grateful. Not can it be day after or any? मेरे हाथ में थोड़ा ना दूसरी बेंच में लगना है। Petition number 14. Suren Patel. सस्पेंशन अलाउंस नहीं दे रहे आपका ये। My lord, ये Termination अक्टूबर order of 2023 से 17 Order of termination is challenged, madam. नहीं चैलेंज नहीं किया, सस्पेंशन अलाउंस मांगा है माय लॉर्ड फॉर लिमिटेड पीरियड अक्टूबर 2023 से टर्मिनेशन ऑर्डर किस तारीख का है? ये है माय लॉर्ड 17/1/2024। 17/1/24 तक का टर्मिनेशन सस्पेंशन अलाउंस चाहिए आपको। ठीक दे दीजिए। दे देंगे सर। Petitioner's only prayer in this writ petition is that he is entitled to suspension allowance with effect from October 23 to 16 January 2024 when on 17 January 2024 he was terminated from services. Full stop. Shri Vivek Sharma, learned Deputy Advocate General, undertakes to direct the concerned collector Lindori to examine and pay the arrears of subsistence allowance if not already paid within period of 15 days from today. With the aforesaid direction, petition is disposed of. Can it be 30 days, madam? अरे नहीं बहुत काम है अभी तो सर, असल बिजी हो में- जाएंगे चुनाव में। चुनाव की अभी नहीं डिंडोरी में अगले फेज में चलने दीजिए, करने दीजिए इन लोगों को। ठीक है सर। Petition number 15. Petitioner is become eligible for special grade 1 in year 2011-12, my lord. My lord, but respondent didn't give him the special grade, my lord. Thereafter, my lord, किस पद पर हैं आप? my lord, grade स्पेशल ग्रेड मिलना है लॉर्डशिप। किस पद पर हैं आप? क्लर्क है लॉर्डशिप। WCL उसमें नहीं आता है, कैट में नहीं आता है। CGIT के सामने, CGIT नागपुर के सामने हमारा केस पेंडिंग है लॉर्डशिप। Case is pending before the CGIT lordship, and my respectful submission is that in
Similar relief was claimed in another petition, which was dismissed. That is at annexure at page number 43, Lordship. Similarly, the relief in this petition as well as relief in... कंसीडर क्यों नहीं कर लेते? कंसीडर कर लीजिए उसका रिप्रेजेंटेशन. मतलब हमने ये नहीं फाइल की थी, मतलब लॉर्डशिप ऑर्डर शीट, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था. कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर करके स्पीकिंग ऑर्डर से डिसाइड कर दीजिए. मतलब Lordship, I am appearing for the respondent number 1 and WCL is the contesting party. तो WCL तो ये बैठे ना श्री अनूप नायर, आप WCL है ना, आइए श्री, इनका रिप्रेजेंटेशन कंसीडर कर लीजिए, इनको जो ग्रेड रेट मिलना है. मतलब हमको 30 दिन में देने का ऑर्डर हुआ था, मतलब 2021 में. कंटेम्प्ट लगाना चाहिए वकील साहब, अभी तो सिर्फ इनको कंसीडर करने के लिए बोल देते हैं. जी लॉर्डशिप. Petitioner's contention is that he has already made a representation to the authorities for grant of special grade A with effect from the year 2011-12, but he has not been given the said special grade despite his eligibilities. Next para. Shri Anup Nair, learned senior advocate, assisted by Shri, आपका शुभ नाम बोलिए. मिहिर लूनावत, undertakes to direct the authorities to consider and decide petitioner's case through a speaking order within some reasonable time. Full stop. In view of this such undertaking, respondent number 2 and 3 is directed that petitioner's case be considered on its own merits within period of 45 days of receipt of certified copy of the order and be decided through a speaking order. This court has not expressed any opinion on the merits. Number 15. My lords, may kindly see page number 14 of the. This is my application for giving the correct pension loan. The last pay drawn was 70,600, but they have given the pension for rupees 60,500. कहाँ है आपका last pay drawn? My lords, may kindly see page number next P2 में गए. जी. Page number 11. ये सर आखिरी में मैंने इसकी टाइप कॉपी भी लगाई. जी. आखिरी में लिखा हुआ है सर 70,000 और इसका हमको पहले भी एरियर्स दे चुके हैं सर, इसी बेसिस पे कि हमारा जो लास्ट पे ड्रॉन था वो 70,600 था, वो पेज नंबर 12 पे लगाया था. Petitioner's contention is that his last pay drawn is 70,000. Yes, sir. 70,600. 70,600, and on that basis his pension should have been computed, but his pension is computed on the basis of incorrect calculation Next para. This petition can be disposed of with a direction to the Assistant Commissioner Lok Shikshak Sanchalaналय. Yeah, respondent number 5 envelope. Point number 4 and 5 to consider and decide petitioner representation, and वो 15 दिन 45 दिन. Number 17. Giri Goswami. Compassionate appointment has been rejected on the ground of delay, my lord. On the ground of delay? Delay. Kindly see, my lord. कब हुई थी ब्रेड अर्नर की डेथ? My lord. आपके पिताजी या माताजी जिनके एवज में आप कंपनसेट अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी हुई थी 2014 में, my lord. डेट बताएंगे प्लीज? जी 28/6/2014. 28/6/2014. ठीक है. आपकी उस वक्त क्या आयु थी? उस समय my lord ये मेजर हुए हम 22/7/2022 में. 22/7/2022 में. फिर आपने आवेदन कब लगाया? 22/7/2023 में हमने एप्लीकेशन फॉर्म दी. 22/7/2023 में, my lord. 22/7/2023 में. जी. नेक्जर P1. चलिए देखें. ये पेज नंबर 19 में डेट है, my lord. इसकी पावती कहाँ है?
ये पावती नहीं, रिमाइंडर हमने दिया है। रिमाइंडर से नहीं होता वकील साहब, जब Rejection आप order is आवेदन देते हैं तो P4. उसकी पावती रहती है, उसकी पावती कहाँ है? Rejection order is P4. हाँ, रिजेक्शन ऑर्डर में ये लिखा है 1 साल के भीतर देना था आपको वयस्क आयु प्राप्त करने के। वयस्कता आपने प्राप्त कर ली 22/7/2022 को जी, तो आपको पावती तो बतानी पड़ी। पावती ये एप्लीकेशन पिटीशन में भी हमने मेंशन किया है। इसमें लिखा है वकील साहब, आपके नहीं होता, अधिकारी आपसे कोई दुर्भावना रखते हैं, आपने उनको पार्टी बनाया है क्या? उसमें लिखा है प्रथम संतान पुत्र श्री जतिन अग्रवाल निवासी पुरानी बस्ती इतना इतना का अनुकंपा नियुक्ति भृत्य पद हेतु आवेदन पत्र संकुल प्राचार्य शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िया विकासखंड के पत्र दिनांक 9/10 द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसको एग्जामिन कर लीजिए कि अगर इन्होंने उसके संकुल प्राचार्य को 22/7 को दिया हो तो लिखिएगा पिटिशनर इज एग्रीव्ड ऑफ द ऑर्डर डेटेड 12/2/2024 पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दमोह rejecting petitioner's claim for grant of compassionate appointment on account of delay in filing the application. Next para. Petitioner's case is that his father died on 28/6/2014. Full stop. He attained age of majority on 22/7/2022. Full stop. He had given his application as contained in annexure P1 to the किसको दी थी आपने ये डीओ मतलब डीओ दमोह जी डीओ दमोह on 22/7/2023, but that has been termed to be belatedly received from the Sankul Pracharya on 12/10/2023. Next para. The fact of the matter is that respondents are required to verify as to when the application was received in their office, and if the application was received in time, then to consider it on its own merits. Full stop. Let this exercise be completed within 30 days of receipt of certified copy of the order. This court has not expressed any opinion on the merit. ये 12/10 का जो दे रहे हैं मतलब वो उस पर हमने आवेदन नहीं दिए। 12/10 में एक 9/10 का, एक 10/10 का है, वो एनेक्सर P2 P3 है। Petitioner's contention is that 9/10 and 10/10/23 are the reminders and not the application, and they have been wrongly considered to be the application. ऊपर जोड़ लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट केस। नितिन गुप्ता जी का नाम डाल लीजिएगा, नितिन गुप्ता। अरे भाई इनका नाम तो जो है सुशील गिरी गोस्वामी है और इधर सरकारी वकील का नाम नितिन गुप्ता। चलिए। Lord, this is petition against the termination order, my lord. The petitioner was working on the post of Gram Rozgar Sahayak. His services has terminated via annexure P2, my lord. Dated 11/1/2023. The petitioner has approached before this honorable court, and honorable court has disposed of the writ petition with liberty to assail such order before the appellate authority, my lord. The petitioner has filed the appeal, and appellate authority has dismissed the same, my lord, via annexure P1, my lord. Then this is the second round litigation, my lord. Issue notice to the respondents. Notice is waived by SHRI. My lord, there is the similar Second appeal is identical. also provided. Second appeal is also provided before the commissioner panchayat. नहीं, कमिश्नर के यहाँ ये सेकंड अपील एज पर द गाइडलाइन रोजगार गारंटी परिषद को होती है, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ अपील है पेंडिंग सिंस लास्ट मोर देन 1 ईयर। बोल दिए डिसाइड करेंगे वो 30 दिन में दिएगा। श्री ब्रह्मेंद्र पाठक raised for withdrawal of this petition with liberty to file second appeal before the Madhya Pradesh State Rozgar Guarantee Council, Bhopal. And if such appeal is filed within 15 days from today, then the said commissioner is directed to decide it through a speaking order within further period of 30 days. ग्रेटफुल। वैसे इसमें मिलॉर्ड के कई ऑर्डर्स हैं जो हमने एनेक्सर के रूप में लगाए हैं, जिसमें सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन है, वो ऑर्डर्स हैं जो रिट अपील का ऑर्डर है, उसकी लाइट में जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई वहाँ क्वेश्चन करके वापस भेजा गया कि अपॉर्चुनिटी प्रोसीजर फॉलो किया जाए। लेकिन अब आपका दूसरा राउंड है ना टर्मिनेशन का ऑर्डर। ऑलराइट, आपका भी दूसरा राउंड है। आप बताइए क्या कह रहे हैं। Kindly pass over this matter, my lord. Issue notice to the respondents. Notice is waived by Shri VIVEK Sharma for the state
Let reply be filed to the petition within 4 weeks list thereafter. Sir. श्री दिलीप, शुभ नाम आपका? उदित पांडे। कुलदीप पांडे। उदित उदित, अच्छा उदित प्रकाश। प्रकाश क्यों हटा दिया आपने? उदित प्रकाश पांडे, पूरा शुभ नाम डालिए। नंबर 20 दीपक कुमार। हो गया इनका मेडिकल हो गया अप्रूवल आ गया मालूट विद इन शॉर्ट पीरियड विल पे। श्री दीपक कुमार सिंह फॉर द पिटिशनर, श्री Anup Nair for the petitioner, assisted by senior advocate, assisted by Shri Lunawat. Pura शुभ नाम Mihir Lunawat submits that approval has been received and soon the amount of reimbursement shall be disbursed in favor of the petitioners. On such undertaking, that amount will be reimbursed in the accounts of the petitioner within 15 days from today. Petition is disposed of. This only happened because of your lord's magnanimity. नहीं, अरे नहीं। सर जो है सर वो बोलने में कुछ नहीं है सर। अरे नहीं है, उसका भाग्य है ये। सर नंबर 21 दीपक कुमार अग्रवाल। Sir, in this case, we filed the amendment petition, sir. The IA number is, sir, 2558. कब फाइल किया आपने? Sir, ये मैंने फाइल की 19/2/2024 after the registry made the objection in regard of the mentioning the revenue officer party without their name. Pardon, IA number? IA number है 2558, sir. 2558 है आपकी फाइल में? नहीं सर, हमारे पास भी नहीं है, दिखाइए तो फिजिकली देखे। सर एक सेकंड एप्लीकेशन स्टे की एप्लीकेशन भी अलग से फाइल करिए सर, उसके लिए थोड़ा सा अमेंडमेंट इन रिकॉर्ड 21 नंबर का केस है ना ये 21 MP है ना 1080/24 है नहीं 7267/2023 है सर। 7267/2023 नहीं, ये तो पिटीशन है, WP है। MP है सर, MP है। इसमें इसका जो एप्लीकेशन है अमेंडमेंट की, उसका नंबर है 1080/24। जी हाँ, नंबर कुछ और बता रहे हैं सर 2558 है सर, ये देखिए ना सर। अरे भाई इसमें तो 1080/24 लिखा हुआ है। 1080/2023 अमेंडमेंट एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 पार्डन आइए 18/1/24 को फाइल करी है आपने। नहीं सर, देर आफ्टर उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन आया तो फिर हमने ये 19/2 को फाइल करी है सर। अच्छा, दूसरी एप्लीकेशन का नंबर 23 जनवरी 2024 को 2558 बता रहे हैं आप? हाँ सर 2558 बता रहा हूँ सर। ये तो क्रोनोलॉजी क्या लगा दिया आपने सर, ये बड़ी दिक्कत है भाई। सर ये स्टे एप्लीकेशन है, स्टे साथ में स्टे एप्लीकेशन भी फाइल करी मैंने, ये है वो। अरे भाई वकील साहब, 2422 application for amendment said to be filed by the petitioner is not available on record. Same be brought on record list along with the application. सर स्टे एप्लीकेशन भी बोल रहे हैं सर। उसके बाद उसको भैया आने तो दीजिए, अमेंडमेंट तो आने दीजिए सर। नंबर 22 KP पांडे। काय का इंक्रीमेंट चाहिए पांडे जी? मिलट 1/4/6/1/7/6 का हमारा इंक्रीमेंट विथहेल्ड कर लिया। 1/7/2006 का। आप 30/6/2007 को रिटायर हुए थे? नहीं, रिटायर नहीं हुए, हमारा रिटायरमेंट 24 में, सितंबर 24 में। तो फिर अभी वेट करिए, इसमें नोटिस इशू, नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, रिप्लाई आ गया इसमें? नहीं आया, नोटिस हैव नॉट बीन इशूड। नोटिस इशू, नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, ये सब नहीं, नोटिस आने दीजिए। इम्प्यून ऑर्डर में क्या करना है? विकल्प चेंज करने के लिए इन्होंने स्वीकार किया है, ये कहा है कि ये वाला सर्कुलर नहीं, ये 23 मार्च 9 का सर्कुलर एप्लीकेबल होता है। आने तो दीजिए जवाब। और दूसरा क्या आप कंसीडर करेंगे क्या इनका? One other has already been rejected, my lord. तो इसीलिए इशू नोटिस, notice is waived by Shri VIVEK Sharma, Learned Deputy Advocate General for the state, that reply be filed within 4 weeks list in the week commencing 6 मई 2024। चलिए नंबर 23 And I'm praying for 4 weeks time for filing the plan.
आपका नाम सोनाली परोचे है कि विश्वास? सोनाली विश्वास. Parochi is my Gotra, your lordship. अच्छा, लेकिन आप यहाँ गोत्र लिखती हैं, कॉज लिस्ट में तो गोत्र लिखना है कि? That was mistaken. सोनाली परोचे, वकालतनामे में क्या लिखते हैं आप? दोनों लिखते हैं सर. सोनाली विश्वास. ऐसा मत करिए कल को आइडेंटिटी के चक्कर में कहीं कोई प्रोसिक्यूट ना कर दे. एक ही लिखिए, सोनाली परोचे फॉर द petitioner Shri Vivek Sharma praised for and is granted 4 weeks time to file reply. List after 4 weeks. Number 24. I'm seeking permission to withdraw this petition as in pursuance of my representation orders have been passed with the liberty to challenge those. To Ghosh Komore submits that in pursuance to the representation made by the petitioner, orders have been passed and therefore he prays for withdrawal of the petition. Accordingly, petition is disposed of as withdrawn. साहब का नाम डाल लीजिएगा रिस्पोंडेंट. Plus that liberty with the opposite. In case petitioner wishes to pursue the remedy against some new cause of action, he will be free to file a fresh petition. Most obliged, Your Lordship. Number 25. Lordship, this petition is for compassionate appointment. In the earlier petition, respondent number 1 is directed to decide the representation within 90 days. Annexure P13 is the impugn order, yes, in which they have offered 2 lakh rupees in. आपके फादर डेली वेजर थे क्या? जी. तो प्यून थे सर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय. अच्छा. एक बार आपने 1 लाख रुपए ले लिया, फिर कैसे मिल जाएगा आपको? नहीं सर, 1 लाख रुपए का उन्होंने हमको वो दिया था, ऑफर दिया था. हाँ. वो भी हमको मिले नहीं थे. फिर हमने फ्रेश रिप्रेजेंटेशन उनको फिर से 2 लाख रुपए दे तो रहे हैं आपको. सर इसमें क्या है कि भाई आपके पिताजी की मृत्यु 2009 में हुई थी वकील साहब. 14 साल तक अनुकंपा नियुक्ति वेट नहीं करती है. इफ यू कुड सर्वाइव फॉर लॉन्ग 14 years, that means that you don't need compassionate appointment. सर 9 में ही हमने इसका तो 9 में तो आप 8वीं पास नहीं थे वकील साहब. सर 14 8वीं आपने 2014 में की है. ठीक है, चलिए क्या चाहते हैं सर? काइंडली अनुकंपा नियुक्ति तो नहीं मिलेगी. 2 लाख रुपए ले लीजिए. काइंडली नोटिस में भी इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ. प्रवीण कुमार सेन, नितेश पटेल. Nitesh Patel, returnable in 6 weeks. Listed thereafter. Number 26. We obtained the signature of Anubhag Adhikari as well as the SE and submitted with the report with its reply. Compliance report. क्या लिखा आपने compliance report में? Lordship, it is filed yesterday only. जी, आ गई रिकॉर्ड पर. Lordship, kindly see the page 7, Annexure R1. This is the signature of superintending engineer. Page 7. Page 7, Lordship, of the report. जी. And page 8, the signature of the Anubhag Adhikari, Mr. A.N. Garg. ये तो मुख्य अभियंता रीवा लिख रहे हैं. Lordship, मुख्य अभियंता लिख रहे हैं. आप रिप्लाई का पेज 7 और 8 दिखा रहे हैं ना? नहीं, ये हमने कल रिपोर्ट भेजी उसकी. कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 4098. हाँ, लॉर्डशिप इसी का 7 और 8 दिखा रहे हैं. 7 और 8 उसी का तो देख रहे हैं. इसमें तो मुख्य अभियंता करके साइन कर रहा है कोई व्यक्ति. मुख्य अभियंता रीवा क्षेत्र. देखिए तो आप ये पेज नंबर 8 में तो सिग्नेचर ए.एन. गर्ग की, लेकिन सिग्नेचर ऑफ श्री ए.एन. गर्ग. ऐसा तो पेज नंबर 8 में तो नहीं लिखा है. आरोप पत्र लिखा है, श्री ए.एन. गर्ग कार्यालय सहायक श्रेणी 3 वृत्त में पदस्थ को आदेश क्रमांक की. तो आरोप पत्र है. नहीं, ये तो पेज 9 है आरोप पत्र. नहीं, ये यहाँ पेज 7 लगा हुआ है यहाँ पर. तो पेजिंग की गड़बड़ी हो सकती है लॉर्डशिप. अच्छा, इनके में हो सकती है क्योंकि हमारा देखा. ये आपका रिप्लाई है.
आपका अभी रिकॉर्ड पर आया नहीं, दिखाइए। ये है लॉर्डशिप, 7 में एसी के हैं और 8 में घर के हैं। और ओरिजिनल दूसरे भी कॉपी साथ रखा हूं मैं हर पेरूजल। वो जो लेटर जारी किया, एक मिनट, ये सेकंड ओरिजिनल भी रखे हैं इसके हम। ये त्रिपाठी और गर्ग के, त्रिपाठी इज ऐसी, गर्ग इज अनुविभाग अधिकारी। इट्स ओरिजिनल लॉर्डशिप और इट्स पेरूजल सिंस द I have already filed the original with the reply, lordship. And P10 was issued with the signature of A.N. Garg, not by the SE. पेज 8 पे जो है लॉर्डशिप, ये सिग्नेचर्स एएन गर्ग के हैं। एएन गर्ग के। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है आपने? इसको मैंने एक तो ट्रांसफर कर दिया और दूसरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। पेज 9 और 10 में देखें, 9 में ट्रांसफर ऑर्डर है, 10 में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कर दी 2 ग्राउंड पे। एक तो उसने एसी की हैसियत से वो लेटर जारी किया और दूसरा आरोप कि इसको प्रपोज दिया था कि आपको क्यों ना रिकवरी वो इंक्रीमेंट विथेल कर लिया, उसका जवाब नहीं दिया। तो 2 आरोप लगा दिए इसमें और ही इज अटैच्ड इन रीवा। जी बताइए। कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, अब तो और क्या चाहिए आपको? रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 को आपने नोटिस जारी किए थे हमदस्त। हाँ, कौन आ रहा है रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 के लिए? हाँ बताइएगा। अब एग्रीकल्चरिस्ट कब से हो गए? मैं इसमें निवेदन करूं, जो इनका एनेक्जर P2 है, हाँ हाँ, उसी में देख लें लॉर्डशिप, जो इनका सब कहना है कि सप्रेशन है। हाँ हाँ, एनेक्जर P2 का पेज नंबर 27 देखें लॉर्डशिप। जी जी, इसमें लास्ट पैराग्राफ के लॉर्डशिप जी पढ़िएगा। आवेदक एक वृद्ध व्यक्ति है एवं शासकीय कर्मचारी है। कहाँ लिखना है लॉर्डशिप? ये लास्ट पैराग्राफ के जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ के लास्ट के पेज नंबर 27 पे पढ़ रहे हैं ना लॉर्डशिप। ये आवेदक आरोपी के अनुसार ये उसका प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। जस्ट सर लास्ट में इसके देखें, हाँ 7-8 लाइन ऊपर। आवेदक एक वृद्ध व्यक्ति एवं शासकीय कर्मचारी। तो भाई यहाँ कॉस्ट टाइटल में गलत कैसे लिखा था? वकील साहब को नोटिस देना पड़ेगा अगर आपका कहना वकील साहब ने गलत लिखा तो। हो सकता है टाइपोग्राफिकल एरर में सरकारी कर्मचारी एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हो जाता है। यू मिसरिप्रेजेंटेड द फैक्ट। नहीं, आई एम रेफरिंग दिस मैटर कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए मिसरिप्रेजेंट करने के लिए। ये 5वीं तक पढ़ा हुआ है। तो क्या हो गया? आपको ये नहीं मालूम कि आप लाइनमैन हैं, शासकीय कर्मचारी हैं? और इनका जो आप बेल एप्लीकेशन में लिखते हैं एग्रीकल्चरिस्ट, उसके पीछे पर्पस है आपका लिखने के लिए। आप ये बताना चाहते हैं कि बहुत झूठे आरोप लगा रही है क्योंकि उसको मेरी जमीन में हिस्सा चाहिए। नहीं लॉर्डशिप, ऐसा कुछ नहीं है। मैं निवेदन करूं, ये जो इसका उत्तर दीजिए आप। एफिडेविट फाइल करिए। लेट एफिडेविट बी फाइल्ड बाय द प्राइवेट रिस्पोंडेंट that under what facts and circumstances he misrepresented himself to be an agriculturist before the High Court when he had filed MCRC 56044/23 and why action be not taken against him for mentioning his occupation as agriculturist and FIR be not lodged against him for misrepresenting and playing fraud with the court. Let affidavit, before any action is taken, let an opportunity is given to the respondent number 5 to furnish his reply on his personal affidavit. ले आइए। लॉर्डशिप मेरा एक निवेदन है, द कंटेम्प्ट नोटिस वाज इशूड अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 2248 में भी ड्रॉप लॉर्डशिप। अभी नहीं, इतनी जल्दी क्या है? अभी रहने दीजिए नोटिस। हाँ जवाब तो दे दिया मैंने। हाँ ठीक है, दे दिया, आपको कंसीडर करेंगे। डे आफ्टर टुमारो लॉर्डशिप। नहीं नहीं, इसको अब लिस्ट आफ्टर होली वेकेशन। Number 27, Pin Yadav. In this case, my lord, I pray 3 weeks time to file reply. Shri Adil Bari. Adil Bari for the petitioner. Shri Pushpendra Yadav, Deputy Solicitor General, prays for and is granted 3 weeks time to file reply. List after 3 weeks.
Ogle. Area number 28. My lord, compromise has taken place between the parties in this matter, my lord. जी मेरे पास क्यों आया है ये? My lord, earlier, my lord, the 482 was allowed by your lordship against the husband, my lord. Now the present applicants, my lord, they are mother-in-law and father-in-law, my lord. अच्छा हो गया है compromise My lord, इसमें पहले राउंड में ही हो गया था, my lord. लिखिएगा. It is submitted by Shri Ravindranath Chaturvedi and not disputed by. आपका शुभ नाम बताइए मैडम. पूनम सोनकर. जी. पूनम सोनकर. Ms. Poonam Sonkar, that parties have entered into a compromise. कहाँ है वो order जिससे My lord, annexure A3, my lord. Earlier petition as filed on behalf of the husband Mayank Shrivastava was allowed wide order dated 15/6/2023. In the same terms, this petition too is full stop. Since the transaction had taken, financial transaction was complete in that case. Therefore, now, except for financial transaction, this petition is disposed of in the same terms, quashing the proceedings in crime number 164/2021 dated 18/9/2021 registered at police station Maila Thana, district Bhopal for offence under section 498A 506 354B 323 of the IPC read with section 3/4 of Dowry Prohibition Act 1961. My lord, it was allowed on 24th of November, my lord. 24th November. My lord. 24th November. My lord, in the same terms, this petition is also. My lord, we have also moved an IA, my lord. The spelling, my lord, इसमें श्रीवास्तव की spelling, my lord, गलत हो गई है, तो उसको correct करने के लिए हमने कहा application for amendment allow कर दीजिएगा. I am for That R1. correction be carried out during the course of the day. R1 के लिए इनका नाम डाल दीजिएगा. My lord. चलिए. Number 29. Java Chaudhary. Some pain for the past over, my lord. This क्या हो गया? my lord. In our council, Siddharth Sharma are you? जी. Siddharth Sharma जी other council. Senior advocate कब designate हुए वो? हाँ जी sir. Senior advocate कब designate हुआ? आपने बोला ना senior counsel. No, my lord. Arguing council. अच्छा. जी. Arguing before the another court, my lord. Pass over round पे ले रहे हैं. Pass over कर दीजिए. Lord, this is second round of litigation. In first, this honorable court has directed to decide my representation law that has been rejected. That is on annexure A1, page number 11 here. जी. क्या petition है आपकी? Lord, in this petition, I am claiming the relief from 2013 from the date they have rejected my representation from the date 21 to 2015, Lord. At least given me a salary as per the collected rate with 18% interest. Lord, I am working under the respondent from 1 to 2011. अच्छा. Yes, sir. किस पद पे काम कर रहे हैं आप? Computer operator, Lord. Lord, in his rejection order, in his second paragraph, Lord, if my Lord, Lord. Annexure P1, page number 11. second paragraph पढ़िए. Yes, ma'am. श्री इंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा अप्रैल 2013 में कंप्यूटर पद पर भुगतान हेतु स्वयं अमाउंट रुपए की राशि की मांग की गई है. उक्त संबंध में उनके द्वारा अप्रैल 2013 में कलेक्टर दर पर नियुक्ति संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा किए गए कार्य का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. जनपद पंचायत के समक्ष अधिकारी द्वारा रिक्त पदों में विरुद्ध नियुक्ति कर्मचारियों को ही प्रतिमाह वेतन पारिश्रमिक दिए जाने का प्रावधान है. शेष जिन व्यक्तियों से कोई अतिरिक्त कार्य कराए जाने की स्थिति में उनका आकस्मिक निधि से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है. क्रमांक 2 पर उनके द्वारा ब्याज की गणना कर राशि की मांग की गई है. चूंकि उनका कोई भुगतान लंबित नहीं है, ना ही श्री सिसोदिया के पास जनपद पंचायत से जारी कलेक्टर दर पर नियुक्ति करने हेतु नियुक्ति पत्र एवं अनुबंध पत्रक है. लॉर्ड इन माय एजेंसी के एम्प्लॉय थे, आउटसोर्स एम्प्लॉय थे. which is that agency? उसको पार्टी तो बना लेते वकील साहब. Which is that agency which had through which you were taken as an outsource employee?
टी-शर्ट बनाते वक्त इतनी सावधानी तो रखना चाहिए वकील साहब. Petitioner has not implemented that outsource agency through which petitioners was deployed to serve Janpat Panchayat Malthon District Sagar. He is directed to implement said outsource agency as a party as is evident from annexure P1. Next para. Let necessary application for correction be filed within 7 days. List thereafter. Petitioner himself is stating that his agreement has already been वही तो इसी तो उसको पार्टी तो बना ले. मेन तो ग्रीवेंस उसके खिलाफ है. जी जी. Oblige, ma'am. Harry Bamoria. Harry Bamoria. Clear number 31. Please, my lordship. Lordship, main counsel is not well, my lordship. I am seeking adjournment. Ashish Singh. Shri Ashish Singh, learned counsel for the petitioner, submits that arguing counsel Shri Ajay Pal Singh is not keeping good health and therefore prays for adjournment. There is a vacating stay application. Lordship, IR to be continued. बारह तीन को तो आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है. 31 नंबर का केस है ना ये. Yes, राम बहोर मिश्रा. Yes, तो के पांडे अपीयर तो हुए थे पिछली बार. श्री के पांडे had appeared in this matter. Advocate for petitioner दूसरी बेंच में लगा था. The order of regularization is based upon some order passed in the writ petition, which is reflected from para 1.4 of the petition. However, no such order is placed on record. Interim relief is continuing in the matter since 2016. Counsel for the petitioner prays for and is granted a week's time to place the material on record to demonstrate the same feeling which the interim relief granted on itna stands vacated on the next date of hearing. List the matter in next week. बताइए क्या है ये, थोड़ा समझाइए तो. Lord, I am appearing in connected matter. नहीं अपन पहले इसकी बात कर ले, फिर कनेक्टेड को भी देखेंगे. Lord, Mr. Ajay Pal Singh, he has undergone a heart surgery. नहीं, that is fine. But पिछली बार पांडे जी appear के पांडे was proxy counsel on behalf of Mr. फिर क्या हुआ, मैटर तो समझ लें थोड़ा सा हम. Lord, अगर आप परमिट करें तो I will. हाँ बताइए ना. What happened that, my lord, there were certain orders, my lord, directions were passed, my lord, to consider the case of regularization of certain class of person, my lord. जैसे ये राम बहोर मिश्रा, my lord, ये किस पद पर थे? ये राम बहोर मिश्रा जो थे लेखापाल थे. लेखापाल थे, my lord. ठीक है. अब ये दुखी किस आदेश से हैं? my lord, ये दुखी है उस आदेश से कि जिसमें इनके खिलाफ FIR रजिस्टर करने के ऑर्डर कर दिया है. एक सेकंड. Sir, surely questioning the P5 command not to take कोई इतना तो सस्पेंशन का कौन सा ऑर्डर था इसमें? P5 देखें. my lord, इनका मैं 1 मिनट कर देता हूँ. मीना इतना P516 पेज नंबर 16 का ऑर्डर है. There are two proceedings, my lord. Departmental, they were placed under suspension. Departmental inquiry was initiated, and simultaneously, my lord, there was an order to register FIR against these. तो बताइएगा लॉ क्या है? अगर FIR रजिस्टर करने के लिए कहा गया है तो उसकी जांच होगी. जांच में अगर आप निर्दोष पाए जाएंगे तो फाइनल रिपोर्ट. my lord, kindly have a perusal, my lord. ये FIR खुद ही P5 का ऑर्डर खुद ही certain vague allegations. कैसे क्या vague allegations? P5 देख ले. पढ़िएगा. my lord, श्री सो एंड सो सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी के विरुद्ध माननीय विधायक श्री सो एंड सो द्वारा एवं सो एंड सो द्वारा व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न स्तर पर की गई शिकायतों को समेकित करके सो एंड सो की अध्यक्षता में जांच समिति कमेटी गठित कर जांच कराई गई. जांच समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री सो एंड सो के सीधी द्वारा शासन नियमों के विरुद्ध मनमाने तरीके से कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है, जिसके लिए श्री LR मीणा सहायक आयुक्त आदिवासी सो एंड सो 7 USD दुबे लेखपाल आदिवासी विकास विभाग सीधी, श्री PP सिंह प्राचार्य उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुसमी और श्री राजेश पटेल मंडल संयोजक आदिवासी विभाग सीधी एवं श्री RB मिश्रा लेखपाल आदिवासी विकास सीधी को भी दोषी पाया गया है. अतः आप उपरोक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध थाना कोतवाली सीधी में FIR दर्ज कराकर FIR की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें. Now, my lord, this particular inquiry report which was conducted behind our back, my lord, that is not a part of the record, my lord. Even in this case, my lord, the reply has been filed and
this particular inquiry report has you are not has not been. required to be heard before lodging of the FIR. My lord. When the IO will collect the material, my lord, and will file a charge sheet. In any case, if he decides to file a charge sheet, you will be provided copy of the inquiry report. My lord, my submission is that, my lord. This is not a departmental My lord, inquiry. my submission is that, my lord. FIR and departmental inquiry, my lord, there are two simultaneous proceedings which are proceeding against these persons, my lord, on the basis of same allegation, my lord. Now, the departmental inquiry during pendency of this particular appeal, this particular petition, my lord, the departmental inquiry has concluded, my lord. And so far as these persons, my lord, so far as my client is concerned and other my lord are concerned, my lord, they have been found that they are not directly involved in these particular proceedings, my lord. Apart from that, my lord, this termination. Where is the report of? My lord, the inquiry report, my lord, it is in my petition, my lord, that is 31.1, my lord. This D report is P9, my lord. P9 बाद में फाइल किया आपने? ये P9 इसमें तो साथ में रिजॉइंडर के साथ फाइल की है। जी। कहाँ है रिजॉइंडर के साथ? मेरे 31.1 में। हाँ, 439 प्रतिपाल सिंह में। प्रतिपाल सिंह में। जी। 2 ही पेज रिजॉइंडर के स्कैन हुए हैं। मतलब P7 देखता हूँ कोई डॉक्यूमेंट नीचे। अच्छा P7 ये। P9। हाँ P9 है आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट। उसमें क्या कहा गया? इसका पैरा 6 देख लें, लास्ट पैरा है। हाँ पढ़िएगा। श्री सिंह को जारी आरोप पत्र आदि उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं कलेक्टर जिला सीधी के अभिमत दिनांक 19/1/2016 के साथ नस्ती का समग्र अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए आरोपी का उत्तर पूर्णतः समाधानकारक प्रतीत नहीं होता। श्री सिंह उपरोक्त उत्तर में यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, फिर भी उक्त अनियमितता के सहभागी रहे हैं। अनियमितता माय लॉर्ड। अतः प्रकरण में समग्र रूप से विचार करते हुए पीपी सिंह प्राचार्य सो को आगामी 1 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की सख्ती लगाई जाती है। ठीक है। Now, my lord, my submission is that, my lord, I was not the person, my lord, who was actually responsible for these appointments and regularization. Mr. Prakash Upadhyay, my lord, you are senior enough to understand that there are different connotations to prove a departmental inquiry and a criminal case. My lord. Now, Supreme Court is very clear that such kind of blanket orders staying the investigation should not be passed. They have come down very heavily. My lord. Now, show me that under which provision of law this investigation can be stalled, and that too now for almost 8 years. My lord, my submission is that, my lord, this particular P5 letter for lodging FIR, that is based upon certain inquiry. This is an administrative inquiry which has been undertaken, my lord, not under any law, my lord. It is just fact-finding inquiry which does not have any statutory tenor, my lord. Now, my lord, my submission is that, my lord, the basic requirement of any, my lord, you are finding me guilty without giving any opportunity of hearing, my lord. FIR के लिए आपको जो है सुनवाई का मौका नहीं, आप मुझे बताइए ना, पढ़िए सेक्शन 1 पढ़िए। I am on different footing, my lord. I'm asking you a direct question, my lord, that where is the provision to give you opportunity of hearing before lodging of FIR? My lord, but I am required to give an opportunity of hearing in any finding which is arriving at a conclusion that I am guilty of that particular offence. FIR is the consequence of that particular inquiry, my lord, and I can always challenge that inquiry, my lord, which has never been placed on record. Even in the reply which has been filed by the respondent, they are not coming up with this particular inquiry report. Now, the employees, my lord, who have been terminated, whose appointment has been treated to be illegal, their writ petition has been allowed, my lord, and in their writ petition, my lord, it has been held that their termination is illegal. ठीक है, होगा, we are not concerned with it. ये इसमें भी हो सकता है कि जांच करने के बाद में वो आपको जो है फाइनल रिपोर्ट लगा दें कि आप इनमें से कोई भी दोषी नहीं है या एक व्यक्ति दोषी है, but we will not stall the investigation. Submission is that, my lord, even if P5 is sane, my lord, I can be here for questioning of the allegation made in FIR. For that, let the FIR. My lord, I can file a petition under 480 for questioning of the FIR. P5, my lord. P5 is basically the complaint, my lord. Where is the FIR? My lord, the FIR has not been lost, my lord. Because there was a stay from the. My lord, FIR has not been lost, and that is the reason why we are challenging that particular inquiry report. ठीक है, चलिए. Now, my lord, this P5 is not spelling out any allegation, my lord, specific allegation against this person. Okay. Kindly have a perusal, my lord. P5 is not saying that what was the role, my lord, how I am part of that particular conspiracy, my lord. It is certain vague allegation which is being made, and on the basis of that vague allegation, the FIR is sought to be lodged against this person. जी. Now,
in departmental inquiry also, my lord, I am spelling that out. In departmental inquiry also, my lord, there is nothing on record which specifically spell out that, my lord, that I am the conspirator and I have been involved in any kind of criminal conspiracy warranting lodging of FIR. Kindly have a perusal that this particular judgment, my lord, all the employees who have been regularized, they have preferred a writ petition, my lord. Their writ petition has been allowed, and to my knowledge, my lord, the department has not taken any action against these persons. So, my lord, once in a civil proceedings, my lord, in a petition under Article 226, my lord, it has been their appointment has been protected, my lord. The beneficiary has been given benefit of that protection, my lord. That's I cannot be prosecuted, my lord, for the same offense. That is my submission. My lord, in any case, my lord, my submission is that, my lord, if my lords permit me for 15 years, because Mr. Ajay Pal Singh has made a request, my lord, that... I'm hearing you. I'm definitely... I'm here to assist. I'm hearing you. I'm here to assist, my lord, on that... I'm hearing you. And if the role of this person is taken into consideration, my lord, so far as Pratipal Singh is concerned, my lord, he was the part of that committee which was constituted by superior, my lord. And I have submitted a report. Where is that report? That report, my lord, is P1. जी P1 बताइएगा क्या लिखा उसमें? P1 is the report, my lord. जी. To consider, my lord, there was a reference of a High Court proceedings, my lord, where there... क्या लिखा है उस रिपोर्ट में? My lord, हमने ये लिखा है कार्य कलेक्टर के 100 तत्कालीन सहायक आयुक्त आदिवासी सीधी द्वारा पदस्थापना अवधि के दौरान आदिवासी विकास विभाग के विभिन्न संवर्गों में की गई नियुक्ति पदोन्नति एवं नवीनीकरण की वैधता के संबंध में गठित समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में श्रीमती माया सिंह सो एंड सो को नियुक्ति एवं नियमितीकरण के प्रकरणों की परीक्षण किया गया। तत्कालीन कलेक्टर सीधी द्वारा श्री माया सिंह को दैनिक लिपिक के पद पर कार्यालयीन कलेक्टर के आदेश दिनांक सो एंड सो द्वारा नियुक्त किया गया था। हाई स्कूल दौरा में रिक्त पद पर पदस्थापना की गई। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के पारित निर्णय क्रमांक 100 के पालन में श्रीमती माया सिंह दैनिक लिपिक को समक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत करके एवं सुनवाई का मौका दिया गया। समिति द्वारा माया सिंह दैनिक लिपिक द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन दस्तावेज का परीक्षण किया जाकर सुनवाई की गई। श्रीमती माया सिंह द्वारा दिए गए कथन के अनुसार सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियमित वेतनमान में नियमितीकरण के लिए जाने की मांग की गई। श्रीमती माया सिंह दैनिक लिपिक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का समिति द्वारा परीक्षण जांच कर पाया गया कि तत्कालीन कलेक्टर सीधी द्वारा आदेश दिनांक 792 द्वारा माया सिंह को दैनिक लिपिक नियुक्त किया गया था। श्री माया सिंह दैनिक लिपिक के साथ नियुक्त तथा कनिष्ठ दैनिक लिपिक के सहायक ग्रेड 3 के वेतनमान में नियमित किया जा चुका है। इस प्रकार मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत नियमित वेतनमान के नियमितीकरण किया जाना था, किंतु श्रीमती माया सिंह को सहायक ग्रेड 3 के नियमित वेतनमान में नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया गया। हायर सेकेंडरी भदौरा में सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त किए जाने तथा रिक्त होने पर विभाग की सेवाओं में आवश्यकता होने पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 100 के अनुसार 5 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने पर परिपालन में श्रीमती माया सिंह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 100 को ग्रेड 100 में नियमितीकरण करने की अनुशंसा की जाती है। एंड दिस इज अ कमेटी ऑफ four person, my lord, 4 person have been, my lord, signing this particular report, and they are proceeding only against 2 person, my lord, on the ground of irregularity on the basis of this report. Now, my lord, the inquiry which has been referred to in P5, that has not seen the light of the day, my lord. They have not come up with that particular inquiry report, my lord, which is अभी तो है ना, PP सिंह हो गए, राजेश प्रसाद पटेल हो गए, RB मिश्रा और RB मिश्रा हो गए, 3 लोग। RP गर्ग, RP गर्ग नहीं, RP वर्मा है। सॉरी माय लॉर्ड, RP शर्मा या RP वर्मा है? RP वर्मा। हाँ जी, तो लेखापाल उनको क्यों नहीं किया, वो बताइएगा। वहां पर अप्रूवर बन जाइएगा, वो को-एक्यूज बन जाएंगे। अप्रूवर और को-एक्यूज की बात नहीं है, मतलब इन ऑल फेयरनेस, my lord, the state should have presented that particular inquiry report, my lord. This particular inquiry report, my lord, neither the copy has been provided to us, nor, my lord, we have been given any so-cause notice before finding of guilt, my lord. This one, once they have held that I am guilty and they are lodging FIR, my lord, at least principle of natural justice was required to be complied. If the decision was there, my lord, directly that there is an offense and
this particular FIR is required to be registered, then definitely, my lord, in that circumstances, no opportunity of hearing is required. But where there is, the department has taken a preliminary inquiry, undertaken a preliminary inquiry for administrative action, my lord, then definitely, my lord, opportunity of hearing was required to be given. Apart from that, my lord, the allegations are vague, my lord. How I am a part of that particular conspiracy? What would be the offense which would be made out in these circumstances, my lord, that is not spelled out in that particular report? So, my lord, once the authorities, my lord, direct a lodging of FIR, the police administration does not have any discretion, my lord. They usually register the FIR, and it has certain adverse consequences. It's a very serious action which would be undertaken and against the present petitioner. So that cannot be exercised, my lord, without application of mind. Here, there is no application of mind which is being reflected. That is my sir. Anything else? My lord, my submission is that, my lord, that this particular, my lord, once the state has also not come up with the inquiry report, at least, my lord, that inquiry report may be called and this honorable court be satisfied. Did you file an application for calling of this inquiry report? My lord, I have not filed it, my lord. 2016 नहीं वकील साहब, my lord, 2016 से आपने कब आवेदन लगाया इंक्वायरी रिपोर्ट फाइल करने my lord, I have taken, my lord, this. I'm asking you a direct question. My lord, I have not. Yes. Definitely, my lord. I have. What is there in record, my lord? I am there to assist, my lord. Yes. But, my lord, in any case, my lord, the state should have filed that report to demonstrate that, my lord, I am guilty, because P5 is not demonstrated. P5 allegation in P5 is vague. ठीक है, चलिए, thank you. आपको कुछ कहना है? Lordship, we have filed a reply that the regularization was done illegally by the assistant commissioner, and therefore these 27 persons were regularized, and for that FIR must be lodged so as to ascertain the responsibilities of the erring officers and their practices. ठीक. Hard, रख लीजिएगा इसको. Next case. इसकी फाइल में रख दीजिएगा. पकड़ लीजिएगा. I'm seeking one opportunity may be granted to sir. पूरी बहस कर तो दी इन्होंने, सबका हो गया. चलिए नेक्स्ट केस. आपका शुभ नाम बता दीजिए. हैं? आशीष सिंह. आशीष सिंह का डाल लीजिएगा 31 में और 31.2. 31.3 में रियाज अहमद साहब का नाम डाल लीजिएगा. चलिए. Serial number 32. Please Shankar Dayal. Lordship, on the last date of hearing, I was given time to produce certain documents. I have not been able to collect it, Lordship. Further a week's time may be granted. देखिएगा श्री, आपका शुभ नाम बताइए. SD Shukla, Lordship. जी. SD Shukla. Shankar Dayal Shukla again prays for time to comply the earlier order. On his request, 8 weeks time is granted to do the needful. List in the week commencing 20 मई 2024. Number 33. Lordship, we have obtained permission in the morning itself to file this affidavit. File the affidavit as in compliance of the last court order. बताइए. A copy is there, Lordship. क्या लिखा आपने इस एफिडेविट में? Lordship, para 4 में kindly be क्या seen. लिखा? Lordship, the scrutiny of the GPF passbook maintained by the department at the time of final payment authorization process, it was found that GPF passbook was erroneously maintained. Withdrawal of rupees 500 of 12th month 1978 and rupees 30,000 of 2nd month 1998 are recorded in the GPF passbook. However, the same are not subtracted from the closing balance of the respective years. For easy reference, copy of GPF is annexed. Along with this, some withdrawals which are mentioned in para 3 of the counter reply are not recorded and subtracted in the respective years of GPF passbook. However, the same
are recorded in the ledger account of the petitioner, which is maintained by answering respondent office. Due to the above mentioned discrepancy in the GPF passbook, exaggerated closing balance over and above the actual balance of the petitioner's GPF account reflected in the GPF passbook at the time of retirement. कितना अमाउंट आपने सैंक्शन कर दिया? लॉर्डशिप कितना अमाउंट सैंक्शन कर दिया आपने डिडक्शंस को अकाउंट फॉर करने के बाद? An amount of 5,66,000 पैरा 6. कहाँ उसका हिसाब किताब जो आपने सैंक्शन किया उसका पूरा लेजर अकाउंट कहाँ है? दीजिए ना, पूरा लेजर अकाउंट दीजिए. Respondent has not filed complete ledger account of the petitioner. Let complete ledger account of the petitioner be brought on record. List on 2 अप्रैल 2024. Number 34. लॉर्डशिप आई प्रे 2 weeks टाइम लॉर्डशिप बिकॉज आर्गुइंग काउंसिल का जो ऑपरेशन होना है तो हॉस्पिटल में. Shri Vidas Shankar Jha for the petitioner. Shri Vivek Baderia submits that arguing counsel is undergoing an operation today and therefore prays for adjournment. Looking to personal difficulty of the arguing counsel for the respondents, list this case after 2 weeks. My lord, could I also seek a permission to file the rejoinder? तो 10:15 बजे मिलती permission. You are late. I was late. Number 35. My lord, I have already got the reply from the respondent, my lord. जी. Rejoinder के लिए time. Rejoinder फाइल करना है आपको. My lord. लिखिएगा. श्री आपका शुभ नाम बताइएगा. भागीरथ सिंह. हैं? भागीरथ सिंह plays for time to file rejoinder on his request. 4 weeks time is granted to do the needful. List after 4 weeks. I am appealing for respondent number 6. ब्रह्मेंद्र पाठक साहब का respondent number 6 के लिए नाम डाल लीजिएगा. Obliged. Number 36. My lord, this matter pertains to recovery, my lord. My lord, writ appeal 815/2007. अपलोड हो गया नहीं हुआ ऑर्डर में? लिखिएगा. श्री KVS Sunil Rao submits that order in WA 815/2017 is yet not uploaded on the official website of the High Court. Awaiting uploading of said judgment, case is adjourned. List after holy vacation. Number 37. Matter respect of payment of no commercial tax inspectors through PSC, my lord. Kindly see last order sheet, my lord. हाँ याद है, ठीक है. Your lordship, on the previous date I was directed to seek instructions कि वो क्या pursue कर रहे हैं. Your lordship, वो लोग I had a word with the principal secretary, your lordship. GAD को फॉरवर्ड कर दिया है और GAD को कंटिन्यूअसली परस्यू कर रहे हैं. परस्यू क्या करना पड़ता है? GAD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाएं. उस Your lordship, बीच में कुछ वहाँ पे घटना हो गई थी वल्लभ भवन में, तो थोड़ा सा आग लग गई थी, पेपर में सबने पढ़ा है. फिर वो ठीक हो गया था, तो अब वो आग बुझ गई, वो हो गया. उसके बाद दे आर बैक ऑन ट्रैक, योर लॉर्डशिप. उसको परस्यू कितने दिन में कर लेंगे आप? योर लॉर्डशिप 3 हफ्ते बोल रहे हैं लॉर्डशिप, बिकॉज द स्टेट हैज एक्सेप्टेड द मिस्टेक ऑन एफिडेविट. योर लॉर्डशिप थोड़ा समय दे दें तो उसको ठीक कर लें. हाँ ठीक ही कर लीजिए. इसको लिखिएगा. श्री अदम्य वाजपेयी. आयुष वाजपेयी. अदम्य वाजपेयी साहब दूसरे हैं? जी दूसरे हैं. आप कौन से शहर से आते हैं? मैं भोपाल से. और वो उनका जानकारी नहीं. अच्छा. Ayush Vajpayee for the state prays for to make compliance of the earlier order on his request list on 5 अप्रैल 2024. ठीक. It is made clear that no further time will be granted and the principal secretary of the department may personally approach the principal secretary of the Panchayat and Rural Development Department may personally approach the principal secretary GAD to sort out the things. थोड़ा सा और समय दे दें. बहुत है, पर्याप्त है.
8 अप्रैल कर दीजिए, 8 अप्रैल टॉप ऑफ द लिस्ट, 12 को रख दें सर। 8 को टॉप ऑफ द लिस्ट। बहुत छुट्टियां हैं सर बीच में, क्या करें, छुट्टी आपकी है, उनकी नहीं है। चलिए, राज्य शासन में होली की 1 दिन की छुट्टी है बस। नंबर 38 सर उसमें कॉमर्शियल टैक्स पीएस है, वो शायद पंचायत लिखा है। अच्छा सॉरी, कमर्शियल टैक्स कर देना, कमर्शियल टैक्स कर देना, सॉरी कमर्शियल टैक्स। इसमें बुलवा रहे सर भाई बहन कैंसर से पीड़ित है, तो क्या है इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने मीडिएशन के लिए बुलवाया था। हाँ, वो प्रकरण आ गए वो। नहीं सर, कैंसर उसकी 3 थेरेपी हुई, 3 अभी और बची है। चलिए तो फिर इसको मेरिट पे सुनाइए। चलिए मेरिट पे डिसाइड कर देते हैं इसको, तो मतलब नहीं है जब उनको आना नहीं है। नहीं सर, वो मेरिट पे डिसाइड कर देते हैं। किसी से कर दिया, उसकी पत्नी आने को तैयार है सर। नहीं उससे नहीं होता। वाइफ उनने बोला है कि अगर वो नंद भाभी मतलब उनकी वाइफ जो तय कर लेगी उनको रेडी है। नहीं वो सब नहीं होता। ये इसलिए एप्लीकेशन। चलिए ऑर्डर को देखते हैं, क्या ऑर्डर है P1, उसको सर ट्रांसफर कर देना तैयार। श्री पुष्पेंद्र दुबे for the petitioner, Shri Anand Kumar Sharma for respondent number 1. Petitioner is not present for mediation. Offer for mediation stands terminated. Shri Pushpendra Dubey prays for time to argue this matter on its own merits. List after holy vacation. number 39 Actually, in this matter, the reply is awaited. 19 से reply नहीं आया। No, Lordship, actually, this matter notices were issued on 4/9/2023 only. Thereafter, PF was paid, and I think service report is also not available online, my lords. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल के लिए कौन आता है? आप आते हैं? बुलवा लीजिए उनको, उनके जूनियर को बुलवा लीजिए। श्री आयुर जैन फॉर द पिटिशनर। नोटिस इज एक्सेप्टेड बाय श्री संजय के अग्रवाल ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल। Let reply be filed within 4 weeks. List immediately thereafter. Obliged, my lords. number 40 My lord has directed on 9th of January to implead Ministry of Education, Government of India as party and supply them the copy of petition. We did the same, Reply is awaited. Rest reply of UGC and university has been filed. I'm for responding. उन्हीं के लिए बस अटका है सर। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सर पार्टी बनाया और अमेंडमेंट हुआ जी, और अमेंडमेंट कर दिया आपने जी, और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल को कॉपी भी दे दिया। Petitioners Council submits that he has already implemented Ministry of Education as a party, and advance copy was supplied to Shri Pushpendra Yadav, Deputy Solicitor General of India. Full stop. Let name of the Deputy Solicitor General be reflected in the cause list. He may file reply within 4 weeks. List thereafter. मिलोड वीक कमेंसिंग करने। वीक कमेंसिंग 29 अप्रैल 2024। I stand out. number 41 Matter relates with recovery of fourth grade employee, and that is pending 815 of 2007. List this case after decision in WA 815/17 is uploaded on the official website of the High Court. One petitioner is died, therefore wife is come. Application is there. Heard on IA 2823/22, an application for substituting the legal heirs of the petitioner. Same is allowed. Let necessary correction be carried out within 3 working days. number 42 Sir, I'm appearing for the petitioners. जी बताइए। Sir, IR has to be continued in this. जी IR has to be continued in this. who From the who last has order. who has instructed you to appear in the High Court? Yes. Who has instructed you to appear in the High Court?
Who is your instructing counsel who has asked you to appear in the High Court? आपका शुभ नाम क्या है? अक्सा मुकर्रम. हाँ, आपको किसने कहा है हाई कोर्ट में अपीयर होने के लिए? Senior counsel is Srimati Nirmala Nayak. Is she designated senior? No, Then how can she be termed as a senior counsel? my senior. हाँ, तो ऐसा बोलिए माय सीनियर. तो ऐसा बोला जाता है हाई कोर्ट में कि आई आर टू बी कंटिन्यूड. मेरिट्स क्या है? मेरिट बताइए पहले केस की. So there was an IA already on record. मेरिट बताइए ना. I want to hear this case. Let us hear the merits of the case and decide it on its own merits. बताइए. So this is a matter of a land in question. The khasra number is 42/5, 432, 45/2, /2, 86/2, and 405 on annexure P3, wherein the mutation proceedings have been taken into consideration, and the order was passed by the upper commissioner, and it is on page number annexure P1, page number 10. थोड़ा शॉर्ट में मैं बता दूं. एक मिनट रुक जाइए. जी. जी. They moved an application for partition under section 178 of the Land Revenue Code. And by annexure P3 for Patan was there, that is dated 14/5/2013. एडिशनल कमिश्नर साहब जो कह रहे हैं इसको पढ़िएगा. जी, मैं इसके पैरा 5 पढ़ता हूँ. हाँ. पैरा 5 की आफ्टर 5 लाइन्स लॉर्डशिप. हाँ. अभिलेख में संलग्न नामांतरण 26, पंजी नंबर 26 अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बिल्किस में स्थित प्रश्नाधीन भूमि के बंटवारे की कार्यवाही में सभी सहकार्यदारों की सहमति के हस्ताक्षर नहीं है. हाँ. और उसका पब्लिकेशन भी नहीं हुआ था. जी. तो इसीलिए तो ये ऑर्डर सही तो है, जस्टिफाइड तो है ये ऑर्डर. बहुत ऑर्डर. हाँ. फिर और इसमें सर बहुत ही डिस्क्रिपेंसी है. अगर P3 देखेंगे तो लिखा है इसमें सब लिख दिया है कमिश्नर साहब ने. उसके अलावा जो उन्होंने नहीं लिखा है वो भी बता देता हूँ. उसको काय को पढ़ना, जो नहीं लिखा उसको वहां जाके बताइएगा. जो दो लोग हैं, भाई मैटर इज रिमांडेड टू द तहसीलदार, यू अपीयर बिफोर द तहसीलदार. बोथ द ऑर्डर्स आर जस्टिफाइड. यस, बताइएगा मैडम. सर नाम बता दीजिएगा आपका. अक्सा मुकर्रम. जी. अक्सा मुकर्रम. मिस अक्सा मुकद्दम फॉर द पिटिशनर. श्री देवेश जैन फॉर द स्टेट, फॉर द प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स. श्री अमित मिश्रा फॉर द state. Next, this petition is filed being aggrieved of order dated 16/12/19 passed by the Additional Commissioner Bhopal Division Bhopal
being aggrieved of the appeal number case number 206 बटे अपील बटे 2014-15 passed on 14/6/2017 by the sub-divisional officer Bilkisganj Sihor, whereby the sub-divisional officer had rejected the appeal against the orders of the Tehsildar. Full stop. Matter in short is that some land measuring 2.573 hectares at village Bilkisganj were subject matter of partition between the petitioners and the respondents. That partition was put to challenge before the sub-divisional officer. Sub-divisional officer and thereafter in appeal, petitioners approached the additional commissioner. The sub-divisional officer, sorry, the sub-divisional officer had declared the partition to be illegal and that has been affirmed by the additional commissioner Bhopal Division, Bhopal. In the impugned order, it is mentioned that firstly, the Batwara Panji does not contain signatures of all the co-sharers. Full stop. It is also mentioned that neither any declaration was sought or published before the partition nor consent of all the co-sharers is available on record. And it is specifically noted that signatures of appellant number 4 and 5, Sanju and Manju, had put their signatures, but other co-sharers had not put their signatures on the Batwara Panji. And therefore, partition being contrary to the provisions contained in section 178 of the Land Revenue Code has been set aside. Full stop. There is no illegality in the said order, calling for interference in the supervisory jurisdiction of this court. Matter has been remanded to the Tehsildar. Parties are free to appear before the Tehsildar and obtain proper orders of partition in accordance with law. In above terms, petitions are disposed of. दोनों में same order है क्या? जी. 42.1 भी same है. चलिए. Petition number 43, the Mitra. My lord, in this case, the petitioner is challenging three orders, my lord. The first is with regards to, my lord, the recovery order. Recovery तो उसको हो जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे. Retired employee है ना ये? Sir, इसमें उसके अलावा This case after decision in WA 815/2017 is uploaded on the official website of the High Court. Ali. Number 44, My lord, kindly appreciate order sheet 9/2, my lord, 9/2/2024, my lord. Yes. क्या हुआ उसके बाद? आपने एक्सटेंशन ऑफ टाइम लगाया था, फिर क्या हुआ? It is awaited. Yes. Compliance of the order dated 9/2/24 is still awaited. Shri Amit Mishra prays for and by way of last indulgence granted 4 weeks time to make compliance of the said order. List in the week commencing 29 April 2024. हमारा भी उसी के साथ लिंक है। एक ही है। चलिए नेक्स्ट केस। number 45, साहब नहीं की। My lord, I am paying some time to file an argument in this case. क्या फाइल करना है आपको? नहीं, नोटिस हुए थे उसके बाद आज। कोई बात नहीं, बता दीजिए क्या गलती है ऑर्डर में। नहीं, 23/1/20 के आदेश में क्या गलती है बताइएगा।
Respondent is working as a computer operator, my lord. हाँ In the year of 2003, and there is no order for the appointment and there is no order for the termination, my lord. 2016 में आपने इनको निकाल दिया मौखिक आदेश से। इनका टेम्परेरी अपॉइंटमेंट था, my lord, at some period. वो तो हर आदमी टेम्पररी है। नोटिस पीरियड कहाँ है? वेयर इज द नोटिस? विदाउट बैक वेजेस रीस्टेटमेंट किया, यू शुड बी हैप्पी। पिटिशनर सब इसमें 17B का कंप्लायंस तो कर ही रहे हैं, सब एक मौका अरे दे बड़ी दें। मेहरबानी कर रहे हैं आप, नहीं दे पाएंगे। नहीं, इसमें दो जजमेंट हम 23/1/2020 सुप्रीम कोर्ट के दो आदेशों का हवाला दे रहा ठीक है, पास्ड बाय लर्नेड लेबर कोर्ट रीवा इन केस नंबर 18/IDA/16 reference, whereby learned labor court, after recording a finding that the petitioner's services were dispensed with without following the due procedure in law, and that falls within the definition of illegal retrenchment as directed for reinstatement without back wages. Full stop. On perusal of the order impugned, it is evident that there is no illegality in the said order calling for interference in the supervisory jurisdiction of the High Court, in as much as petitioner state failed to lead any evidence to substantiate their claim that it was not a case of termination of services. एक ground है साहब इसमें. There is no sanction post, and my lord, Full stop. At this stage, learned counsel for the petitioner submits that there is no sanction post, but the issue is that once a man was required to work for over 13 years, then there is an automatic presumption that there was a continuity of work of computer operator, and therefore this ground is not made out. Next para. Petitioner has also not brought on record any material to show that who has been deployed to work as a computer operator in place of the petitioner. And when tested on all these grounds cumulatively, there being no illegality in the impugned order, it does not call for any interference. Petition fails and is dismissed. Petitioner will be entitled to full salary from the date of passing of the order of the labor court. नहीं, हमने दिया भी है, 17B कंप्लायंस हुआ है। 17B में फुल सैलरी मिलती है क्या? नहीं, पूरा दिया है, पेमेंट दिया है। ठीक है सर, कर दीजिएगा, 23 से 20 से दे दीजिए। वो तो नहीं, एट द टाइम रेट का है उसमें। ओला के रेट का मिलेगा इनको, 20 से जो है रेगुलर करंट रेट कहाँ मिलेगा? 20 से मिलेगा, वही तो क्लैरिफाई किया, 23/1/20 से। जो ऑर्डर है अवार्ड का उस डेट से मिलेगा, आप उनको रेगुलर दे दीजिएगा। Let difference of the salary be also paid within 30 days in favor of the workman. ये हमने दिया है नेक्स्ट 82 काइंडली। हाँ, जो भी दिया है आपने बहुत अच्छा किया। 17B का तो ऑर्डर ही था, देयर इज एब्सोल्यूट स्टे बाय दिस ऑनरेबल। 17B के उसके बाद आप थोड़ा नया कानून बता रहे हैं। 17B के लिए कोई ऑर्डर करने की जरूरत है क्या हाई कोर्ट को? नहीं, पर साहब जो ऑर्डर किया था आपने, जो स्टे हुआ है कोऑर्डिनेट बेंच माय लॉर्ड, देयर इज नो फाइंडिंग इन पेज नंबर 21 काइंडली सी माय लॉर्ड। हाँ, नहीं वो ठीक है, उन्होंने बड़ी मेहरबानी करी, लेकिन मत प्रदान करता है। 17B की तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वो हमने दिया है, इसीलिए किया है, तो उसके अलावा जो डिफरेंस आएगा वो दे दीजिएगा। अवार्ड की डेट से आप करंट वेजेस जो उसकी एट लास्ट डाउन पेमेंट होगी साहब। नहीं, it is clarified as learned government advocate is not understanding the implication of the order. It is clarified that petitioner was paid wages in compliance of section 17B of the Industrial Dispute Act as were drawn by the workman at the time of dismissal, retrenchment. Now with effect from the date of the award, he will be entitled to the difference of the current wages minus the amount which was paid in compliance of section 17B. Full stop. Let this compliance be carried out within 30 days of receipt of certified copy of the order, failing which respondent workman will be entitled to initiate contempt proceedings against the state authorities. अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया ना, ओपिनियन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नंबर 48 मैटर रिलेट्स टू एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव एनकैशमेंट। किस पद पर है? He retired as a lecturer. लेक्चरर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। My lord, सर्विस बुक से पेज नंबर 19 रिलेवेंट है। 19 जी।
Page number 19 में sir, they have written that I have accumulated 500 days and 300 days is maximum which I can get. हाँ इसके बाद सर इन्होंने 240 days का दिया. इनका रिप्लाई आ गया है, they have not addressed on that वो जो सर अमेंड करके 300 दिन कर दिया है उसके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है. They have just issued a letter. They say that you are entitled for 240 days. कैसे एंटाइटल्ड होगा? किस तारीख को रिटायर हुए थे आप? Not he retired on 30/6/2020. 30/6/2020. After हाँ, आफ्टर दैट सर्कुलर ऑफ 2018. Yes. बताइए. इसमें आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द पिटीशन ये कैलकुलेशन करा है दैट दे हैव नॉट येट चैलेंज्ड. नहीं, आप कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं जब सर्विस बुक में जो है उसको कैन आई फाइल एन एडिशनल एफिडेविट? Let additional affidavit on the personal affidavit in the form of the affidavit of the Joint Director Public Instructions Riva Division Riva be filed. That how can they change the calculation of earned leave as made noted in the service book contained in Annexure P4 after the retirement of the petitioner and say that he was not entitled to 300 days of leave encashment but only for 240 days. That specific affidavit be filed, failing which this court may order for personal presence of the Joint Director Public Instructions Riva Division Riva. Needful be done within 4 weeks, listed immediately thereafter. Number 47. My lord, in this petition, petitioner seeking the benefit of second time pay scale from 1/4/2006. आप कब अपॉइंट हुए थे? माय लॉर्ड, इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ था 3/5/1978 को जी, सहायक क्षेत्रपाल की पोस्ट पे. उसके 3/5/1978 सहायक क्षेत्रपाल. माय लॉर्ड. असिस्टेंट फिडर. जी. इसके बाद 18/5/1981 को रेगुलराइज हुआ सेम पोस्ट पे. 18/5/81 रेगुलराइज हुआ. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट है. जी. देयर आफ्टर माय लॉर्ड 25/2/1986 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 1 year ट्रेनिंग पीरियड पिटिशनर अपॉइंटेड पोस्ट ऑफ फर्स्ट चिकित्सक क्षेत्र सहायक ABFO. माय लॉर्ड. जी, ठीक है. ये तो हायर पोस्ट है फील्ड असिस्टेंट से. माय लॉर्ड. हाँ जी. 25/2/1986. ठीक है. तो माय लॉर्ड, पिटिशनर गिवन द बेनिफिट ऑफ फर्स्ट हायर पे स्केल जी 25/2/1998 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 years. फर्स्ट हायर पे स्केल. माय लॉर्ड. जी. फिर माय लॉर्ड, देयर आफ्टर गिवन द बेनिफिट ऑफ सेकंड क्रमोन्नत स्कीम जी ऑन 25/2/2010. जी. सेकंड हायर पे स्केल. जी जी 25/2/2010. जी जी. माय लॉर्ड, एक समय वेतनमान स्कीम लॉन्च्ड ऑन 1/4/2006. 1/4/2006 नहीं है, 8 है. 8 है, पर उसको इन्फोर्स किया गया है. चलिए. 1/4/2006 से प्रभावशील. सेवानिवृत्त कब हुए? 31/10/2013. 31/10/2013. जी जी. तो माय लॉर्ड, मैं 25/2/2006 को हमारा 20 years का टाइम कंप्लीट होता है. 20 years में कहाँ है प्रावधान तीसरा समयमान देने का? माय लॉर्ड, पढ़िए तो, थोड़ा पढ़े तो. माय लॉर्ड, तीसरा समयमान मिलता है 30 साल की सेवा पूरी होने पर. तीसरा नहीं, हम सेकंड पे स्केल. सेकंड तो मिल गया ना आपको? क्रमोन्नत स्कीम मिली है. और कौन सा मिलना है आपको? टाइम पे स्केल. कहाँ है वो सर्कुलर? कहाँ है सर? माय लॉर्ड, ये एनेक्सर P7 है. P7 पढ़िएगा. माय लॉर्ड, P7 पेज नंबर 27. एक सेकंड. माय लॉर्ड, राज्य की, एक सेकंड रुक जाइएगा. P7 यस, पेज नंबर 27. राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ाने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से वर्तमान में प्रभावशील क्रमोन्नत योजना को संशोधित करते हुए समयमान वेतन उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है. पैरा 3 में माय लॉर्ड, यह संशोधित योजना 1 अप्रैल 2006 से प्रभावशील होगी. और माय लॉर्ड, पेज नंबर 28 कैंडली से. जी. पेज नंबर 28 में पैरा 9. हाँ.
दिनांक 1/4/2006 को यदि उच्चतर वेतनमान की पात्रता के लिए निर्धारित सेवा अवधि अथवा उससे अधिक सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है तो प्रथम उच्चतर वेतनमान की पात्रता दिनांक 1/4/6 से होगी। दिनांक 1/4/2006 को यदि द्वितीय उच्चतर वेतनमान के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर ली है तो उससे सीधे द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता होगी। तो हमारी जो सेवा है 20 इयर्स की वो 25/2/2006 को कंप्लीट। स्कीम तो पढ़ें थोड़ा, 20 इयर्स क्या लिखा थोड़ा समझें तो आप आधा समझ लेंगे, उससे काम नहीं चल जाएगा। माय लॉर्ड, पैरा 2 पढ़िएगा। सिविल सेवाओं में जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है उनमें आ तथा बा वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को उच्चतर वेतनमान का लाभ सेवा में नियुक्ति पश्चात 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तथा सा वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को सेवा में नियुक्ति के 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उपलब्ध होगा। सीधी भर्ती से तात्पर्य संवर्ग में स्वीकृत पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से। एक मिनट रुक जाइएगा। एवीएफओ पर सीधी भर्ती कब हुई आपकी? एवीएफओ के पद पर आपकी पदोन्नति हुई फील्ड असिस्टेंट के पद से, तो ये कैसे लागू होगा आपके ऊपर? माय लॉर्ड, एक मिनट, माय लॉर्ड से पहले खुद तो आत्मचिंतन तो कर लीजिए, आत्ममंथन करिए कि कैसे लागू होगा, पहले समझाएं तो इसको। इसीलिए आपसे निवेदन किया कि पैरा 2 पढ़िए। हाउ दिस सर्कुलर विल बी एप्लीकेबल टू यू। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि एवीएफओ के पद पर सीधी भर्ती होती है। मैडम कहाँ है वो? क्योंकि हमारी जो लास्ट सर्विस है वो काउंट नहीं हुई। नहीं, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। 2010 के बाद आपका आएगा है माय लॉर्ड जी P3 एनेक्सेस P3 पढ़िएगा। P3 क्या लिखा है इसमें? माय लॉर्ड पेज नंबर 19 जी। निम्नलिखित 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण उम्मीदवारों को तृतीय श्रेणी अलिपिकी वर्ग में पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक के पद पर वेतनमान ₹100 प्रतिमाह पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक शर्तों के आधार पर नियुक्त किया जाता है। वे अपना उपस्थित प्रतिवेदन संबंधित उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सहायक संचालक पशु चिकित्सा सेवाओं को आदेश प्राप्त के 25 दिवस के अंदर कैसे लागू होगा आपके ऊपर तो समझाएं तो। माय लॉर्ड, कैंडिसी एनेक्सेस पेज नंबर 21, इसमें हमारी जो पेज नंबर 21, हाँ, इसमें प्रथम नियुक्ति दिनांक सीरियल नंबर 13 में पिटिशनर का जो काउंट कर रहे हैं वो 25/2/86 से। हाँ ठीक है ना, जब आप एवीएफओ बने तब से उन्होंने कर लिया, 12 वर्ष काउंट किए आपको, इसलिए 98 से दे दिया। ठीक है, उसके बाद में फिर 12 वर्ष बाद आपको दूसरे क्रमोन्नति की पात्रता थी, 2010 में दे दी। अब उसके बाद आपकी तीसरी जो पात्रता आती वो आती 2016 में उस सर्कुलर के मुताबिक 30 वर्ष पूर्ण करने पर तृतीय वेतनमान की। बट उसके पहले रिटायर हो गए। पर उसके पहले आप 2013 में रिटायर हो गए। रिटर्न में भी यही बोला आपने बोला होगा, हमने भी इतना ही समझा है। यही कानून है। ठीक है सर, लिखा दें आप। आपका शुभ नाम बताइए। भूपेंद्र मिश्रा। श्री भूपेंद्र कुमार मिश्रा फॉर द पिटिशनर। दिस पिटिशन इज फाइल्ड बाय द पिटिशनर claiming benefit of third time scale of pay. Full stop. Brief facts of the case are that petitioner was appointed as a daily wager field assistant in veterinary department. Full stop. While order dated 18/5/81, he was regularized as field assistant. Thereafter, on 25/2/1986, he was appointed as assistant veterinary field officer. Full stop. On completion of 12 years of service, he was given first Kramonat Vetanman in terms of GAD circular dated 17/19/4/1999 with effect from 25/2/1998. Full stop. Thereafter, on completion of 24 years of service as AVFO, he was given second pay scale, second Kramonat Vetanman with effect from 25/2/2010. Full stop. Admittedly, petitioner attained age of superannuation on 31/10/2013. Therefore, petitioner is claiming benefit of third time scale of pay in terms of the
Finance Department Circular dated 24 January 2008. Next para. After reading the circular, petitioner is convinced that that circular is applicable to the directly recruited persons and not to the promoted persons. Secondly, it is evident from the said circular that petitioner would have been entitled to third time scale of pay on completion of 30 years of service and रहने दीजिए इसको. And since petition, sorry, I said 30 years, sorry. And in the terms of that circular, in clause 14, it is mentioned that the said circular shall stand amended. The aforesaid circular and annexure P7 will amend the earlier GAD order dated order number F-1-1/1 BA-PRA/99 dated 19th April 99 and order of same number dated 17/5/2000 shall stand amended to that extent. Full stop. Thus, it is also provided in the क्या लिखा? Since petitioner had already received the benefits under circular dated 17 March 99/19/4/99, therefore he is not entitled for reopening of the case in terms of para 5 of the said circular. Finance Department Circular dated 24 January 2008. Therefore, claim of the petitioner for reopening of his claim is not maintainable and thus petition fails and is dismissed. चलिए. Order number 38. Lord, in this case, the advertisement was issued, Lord, by the respondents for engagement of, Lord, the workers, Lord, under the respondents, Lord. The petitioners, Lord, applied annexure P2, page 20 is the advertisement, Lord. That was for the fixed period, Lord, and on fixed pay, Lord. Thereafter, Lord, the various, Lord, the note sheets were initiated by the department to continue, Lord, that workers, Lord. But, Lord, that part was considered by the department. Therefore, we filed writ petition, Lord. And after filing, Lord, writ petition and direction of the Honorable Court to decide our representation, Lord, this order P1, page 19 is passed, Lord. That is not speaking order, Lord. And if Lordship may kindly see the last para, which says only that Madhya Pradesh शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रगणों को कोई सेवा को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव नस्तीबद्ध किया गया है, Lord. There is no reason assigned, Lord. Now I want to refer, Lord, page 36. केस अलग है. यह वित्त आयोग की अनुशंसा पर कुछ पद क्रिएट किए गए थे. प्रोजेक्ट बेस्ड एंड जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया
उसके बाद में आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया गया। लॉ बहुत क्लियर है, कल लेकर आना, वो निकाला था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाला 1996 सुप्रीम कोर्ट निकाला था, कल आपने लेकर आइए जी। तो लॉ बहुत क्लियर है उस बारे में। जी जी सर। Now my submission is, my lord, that if lordship kindly peruse, my lord, this आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर तो दिखाइए। जी सर। P3 is, my lord, the page 24. क्या लिखा है इसमें? Lord, it was, my lord, for a specific period, page 27 पर. And is it your case that the project under the 13th Finance Commission is still continuing? My lord, that is my case, my lord. This is my submission. Kindly appreciate it, my lord. Now what they did, my lord, after passing, my lord, this order, P13 may be seen, my lord. The same work is allotted to private company, respondent number 4, my lord. जी, जी। Page 57, my lord. The work is available, my lord, and the experienced persons are not engaged by the company, my lord. That is not, you apply to the company कि वो आपको engage कर लें। एक सबमिशन और सर, प्लीज सर। अरे तिवारी जी आप आराम से बहस करिए, बताइए। So, my lord, our submission is, my lord, that the respondent number 4 has not filed reply, and on behalf of respondent number 4 also, my lord, the state has filed reply, my lord. Without, my lord, he has not turned to file, my lord, separate reply, my lord. Now in similar situation, my lord, where the vocational trainers were engaged by this concerned schools, my lord, that work was allotted to private company, and the state government has filed affidavit, my lord, and that is on record, my lord, with this IA, my lord. Kindly see, this is, my lord, connected case WP 19892.1 per. जी। Lord, and IA is, my lord, 5658 of 22. 5658, yes. जी. Lord, kindly come to page 10. जी। Lord, the affidavit is reproduced in this order, my lord. जी। पैरा ए जो कोड है उसका 5-6 लाइन के बाद मैं इसको पढ़ता हूँ। पढ़िए। जी सर। In this context, now the state government is considering that if the individual petitioner submits their qualification along with the mode of is a continuing job. 13th Finance Commission has already closed its proceedings. After that, 14th and 15th Finance Commission have been constituted. You understand why Finance Commission is constituted? For census. जनगणना के लिए। जनगणना के लिए फाइनेंस कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। फाइनेंस कमीशन राज्यों और केंद्र के बीच में रेवेन्यू का बंटवारा कैसे किया जाएगा उसके लिए बनाया जाता है। जी। ठीक है। तो जब फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया था उसका पीरियड खत्म हो गया, उसके लिए जो करनी थी आंकड़े एकत्रित करने थे वो हो गया काम खत्म। नाउ यू हैव नो राइट, लॉ इज वेरी क्लियर इन दिस बिहाफ। वो तो क्लियर है सर, लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरिट पर तो ठीक है, अदरवाइज जो है आपको लिबर्टी दे देते हैं, आप आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर को अप्लाई करें, अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो कंसीडर। We may be liberty, Lord, and Lord, this order may be also considered, Lord, which is, Lord. That I've seen there is a difference. वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स का है, वोकेशनल ट्रेनिंग की स्कीम स्कूलों में समाप्त नहीं हुई है। वहां पर वो प्रिंसिपल लगेगा that one set of contract employees cannot be replaced with another set of contract employees. जी। But there is a difference. Here you are appointed on a project. लेकिन वही सर, वही काम एक कंपनी को दिया गया सर। ठीक है। तो मैं सर लिबर्टी दे दी जाएगी। वृंदावन तिवारी, after arguing at length and when informed that petitioner's appointment as a calculator, enumerator, Lord. Enumerator. Yes, Lord. Was made under the scheme of 13th Finance Commission, and that has since come to an end. Therefore, in the light of law laid down by Supreme Court in state of HP through the Secretary Rural Development to the Government of HP Shimla versus Ashwini Kumar and others, 1996 1 SCC 773, where Supreme Court has held that on closure of a scheme, termination of services cannot be said to be illegal or arbitrary, praise for withdrawal of this petition with liberty to approach the outsource authority to engage the petitioners if they are qualified and if the outsource agency so requires them for work. अगर वो withdrawal नहीं रहेगा तो मिल जाएगा कुछ सर।
चलिए number 59. जी, आप तो बहुत सस्ते में छूट गए। जी सर। क्या हुआ फिर, आपको पच्युत कर दिया गया सेवा से? जी, सेवा से पच्युत कर अपील में क्या हुआ? अपील भी रिजेक्ट हो गई सर, अपील किया था अभी। हिरकने साहब ने बड़ा हिराकत वाला काम किया। नाउ माय लॉर्ड्स में प्लीज हैव अ लुक। P7 जी, P7 is the order. हाँ And before that, I'll just take your lordship to annexure P1. जी P1 is the charge sheet. जी Now, one of the ground which I have taken in this case is that the charge sheet and the ये केस किसने फाइल किया? योगेश कुमार हिरकने साहब नहीं है क्या आप? ही इज नो मोर। he is no more sir. His wife was substituted. अच्छा ओके जी। एंड इसमें एक अमेंडमेंट भी किया है सर हमने बाद में, इसके जिसका इन्होंने एडिशनल रिप्लाई भी दे दिया है। जी जी For that we had taken the ground that the charge sheet was served by an incompetent authority and the inquiry was instituted by an incompetent authority. जी। Now for that purpose, my lord should refer. हिरकने साहब was working on which post? He was my lord pharmacist grade 2 Pharmacist grade in jail department. who is the appointing authority of pharmacist grade? Appointing authority सर अगर आप देखेंगे इन्होंने जो रूल्स हैं सर इनके जेल इससे पहले रूल्स हैं सर इनके मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी अलिपिकीय वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय जेल सेवा। कौन से वॉल्यूम में सर? सर ये जेल मैनुअल। अच्छा जेल मैनुअल। जी जेल खाली किताब नहीं लिख कर दी। पुलिस मैनुअल अलग होता है, जेल मैनुअल अलग होता है। नहीं कौन है अपॉइंटिंग अथॉरिटी? my lords may I'll just pass it on. सर्विस मैनुअल वाली जो किताबें 8 वॉल्यूम में जिंदल की उसमें होंगे ये देखिएगा। मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी अलिपिकी वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय जेल सेवा भर्ती नियम 1974। इसमें नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी दिया है सर जी। कहाँ पर? डेफिनेशन क्लॉज में। डेफिनेशन क्लॉज में जी।
तो जेल नियमों में क्या प्रावधान है? अब जेल नियमों में सर जो ये जो इसका इन्होंने शेड्यूल दिया है, इसमें शेड्यूल में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का पोस्ट तो मेंशन है, दैट इज इट्स टू बी फिल्ड 100% बाय वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यस, तृतीय श्रेणी अलिपिक के जी पदों की संख्या 74। जी सर। वेतनमान 5200, तृतीय श्रेणी है ये। जी, तृतीय श्रेणी अलिपिकी है। अलिपिक जी। लेकिन आगे इसमें सर आगे शेड्यूल में कहीं इस पोस्ट का नाम नहीं है। जी। So we'll have to मानो टेक असिस्टेंस फ्रॉम द तृतीय श्रेणी अलिपिकी के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? हाँ, ये अगर आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल और somebody else। अब मैं सर वो नाउ मालोट्स विल हैव टू रेफर टू 1966 के रूल्स अगर आप देखें सर, डिसिप्लिन रूल्स ये इन्होंने लगाए हैं सर इसमें सप्लीमेंटरी में लगाए हैं। सप्लीमेंट्री रिप्लाई के साथ शेड्यूल पेश किया। अच्छा, बताइएगा। 66 ये होगा जी। Now Malord should kindly refer to the rules which they have filed। इसका पेज 10 देखेंगे सर जी। इसमें फार्मासिस्ट का पोस्ट तो कहीं इंक्लूड नहीं किया है, बट कंपाउंडर करके पेज 10 में देखें सर काइंडली। जी जी। ये क्लास 3 नॉन मिनिस्ट्रियल ऊपर टॉप पे लिखा है जी। और लास्ट में अगर सेकंड लास्ट आप देखेंगे कंपाउंडर लिखा है। जी जी। कंपाउंडर के आगे इन्होंने लिखा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी मेडिकल ऑफिसर। जी। फिर उसके आगे लिखा है मेडिकल ऑफिसर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जी जी। और लास्ट कॉलम अलॉट दिस द अपीलेट अथॉरिटी जी, दैट इज द आईजी ऑफ प्रिजन। आईजी प्रिजन सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है जी। ये सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इज द मतलब दैट इज गिवन इन सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इज 3 जी। नहीं हाँ, सो मेडिकल ऑफिसर एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जी। 3 means the authority who can impose the penalties। जी। अब आप इसमें देखेंगे सर चार्ज शीट में वो पदेन अधीक्षक ने दिया, पदेन अधीक्षक कैसे दे देगा? हाँ, दैट इज मान लो दैट इज सर अब आपके साथ रह के इतना सिंक कर नहीं सर मैं इसलिए इतना सही इतना सा पॉइंट है इतना सा बताइएगा, इसका जवाब दे दीजिएगा आप ही के मुताबिक। नहीं एडजॉर्न थोड़ा ना करेंगे। No, my lord, my humble submission is that this सिंपल सी बात है कि आपने खुद का सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी and superintendent of jail has not issued the charge sheet, and where is the order of punishment? Punishment is P मतलब that is P7। P7 it has been passed by whom? वो ये पास किया है सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट ने। लेकिन डिसिप्लिनरी इंक्वायरी जो है it can be initiated by somebody inferior to the superintendent of jail, इतना बता दीजिएगा। but it has been done, this is an limited position my lord, but पदेन उनका यही वो है कि this is by अरे वकील साहब आपको लंच के बाद बता दीजिए। I'll do that। पूछ लीजिए, जो कानून जानते हो सर से ही पूछ लीजिएगा। I'll bring that if their nomenclature is different। Yes how an in charge superintendent yes my lord, that of a sub jail is entitled to issue a charge sheet। लिखिएगा, the only issue involved herein is that whether an in charge superintendent of sub jail is entitled to issue charge sheet to a class 3 non-ministerial employee holding the post of pharmacist grade 2, full stop. According to the chart enclosed by the respondents along with their supplementary reply, it is evident that the competent authority is the superintendent of jail, full stop. Therefore, Shri Ankit Agarwal prays for and is granted time till post-lunch Passover round to ascertain from the Director General of Prisons and Reforms that whether there is any delegation of authority in favor of the in charge superintendent of the jail to issue charge sheet to a class 3 employee, class 3 non-ministerial employee। So can I take leave मालूम है because at 2:15 DV number 2 में एक मैटर स्टार्ट होना है। तो ये खड़े होके बता देते मिस्टर आदित्य वीर। अरे ये जुमरे साहब भी बता देते, ये भी रहेंगे सर, हम कर देते उसमें। हमारे यहाँ कोई नहीं पड़ता है वो सर 2:15 पे एक मैटर रखा है। अरे मैं क्या निवेदन कर रहा हूँ कि ये तो इतनी बार जुमरे साहब बता देते तब भी हम कर देते, आप नहीं आते तब भी कर देते। I know great।
number 50. But this relates to recovery, my lord. हाँ Relates to recovery, my lord. काय की रिकवरी वही This he was 815 list this case after decision in WA 815/17 is uploaded on the official website of the High Court. Number 51. Lord, I'm praying for 1 week time to file the rejoinder. Yesterday only I received the reply. श्री आपका शुभ नाम बोलिए. Rohit Mishra. Rohit Mishra prays for and is granted 3 weeks time to file rejoinder. Additional return, if any, be filed within 2 weeks thereafter. List thereafter. चलिए. Obliged, my lord. Number 52. For the respondent. My lord, reply is awaited. श्री जितेंद्र कुमार. Rudra Pratap Dwivedi. रुद्र प्रताप द्विवेदी. My lord. Lord, इसमें company is the party, my lord. हाँ? Company is the party. Which company? पूर्व क्षेत्र में lord, Ved, Mr. name of the Ved Prakash Tiwari is mentioned. None for the respondent. So name of the counsel is reflected in the call. This reply is not filed, though notices were issued on 16/6/2022. Time was sought on 25/4/2023. Subject to payment of cost of rupees 3,000 to be deposited in the High Court Legal Services Committee. 3 weeks time is granted to file reply, failing which this court may order for personal presence of the respondent number 2 and 3. Chaliye, next please. Number 53. Rakachan. Lordship praying for 2 weeks time to file rejoinder. मैडम का शुभ नाम डालिएगा. Prays for and is granted वैशाली दुबे. 2 weeks time to file rejoinder. List after 2 weeks. दुबे. Number 54. Right, please, Milas, in WP 20211, Milas, the service report of respondent number 6 was being called for. That is awaited, Milas. By order dated 28/8/2023. नोटिस कैसे दिया था? रजिस्टर्ड डाक से दिया था ना? Yes, Milas. हाँ तो सर्विस प्रिज्यूम हो जाएगी और क्या है? The report was not available with the रजिस्टर्ड डाक से दिया तलवाना तो सर्विस प्रिज्यूम हो जाएगी. कहाँ ढूंढने जाएंगे कलेक्टर साहब को? because the reply was being वकील साहब कलेक्टर तो इंसिडेंटल है. बाय नेम आपने उसको पार्टी बना लिया, वो कहाँ उस जिले में टिका रहेगा? ठीक है. because of this particular officer. मेरिट्स पर बताइए, मेरिट्स में क्या कहानी है? Let us start hearing on merits. क्या मैटर है? The petitioner herein was working as assistant grade 2. Assistant grade 2 in the office of CMHO Umaria, Milas. Who issued the charge sheet? It was in the name of respondent number 6 itself. That is why the respondent बताइए, हम charge sheet बताइएगा. Charge sheet is annexure. Before that, may I take a lordship to the first suspension order? पहले charge sheet तो बताइए. Are you challenging suspension order also in this petition? Because in the connected matter, the suspension order is challenged by the same officer. Connected को देखेंगे. पहले इसको देख ले. P12, Milas. P12, yes. Page 59. Yes. कलेक्टर उमरिया ने चार्जशीट जारी की है Yes, Milas. That is what is being challenged in the petition, Milas. हाँ, आप किस पद पर है? सहायक ग्रेड 2 हैं. अभी डेलीगेशन ऑफ जो अथॉरिटी है सीसीए रूल्स में, उसको कलेक्टर को डेलीगेट की गई है जिले की डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. तो उसके लाइट में व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज इलीगल इन हिज इशूइंग अ चार्जशीट? The first occasion which started off, Milas, was with regard to attachment of the petitioner at page number 25. We are not dealing with the subject matter of what the only issue here is, the only legal question which arises is
that whether the collector is competent to issue a charge sheet against a class 3 employee in regard to whom there is a delegation of power by the governor. This is the only legal question. Because the aspect of malice may also be seen malice because का allegation बताइए malice का allegation बताइए. Where is the allegation of malice? one after the other, Millers, the orders of attachment were passed, suspension orders were passed, which all came to be stayed by this honorable court. नहीं ठीक है, सस्पेंशन ऑर्डर तो देखेंगे अभी. अगर हाईकोर्ट आपके ऊपर इतना मेहरबान है तो उसके लिए बात अलग है. आपको पहले लोकस तो बताना पड़ेगा मैलिस इन्फर करने के लिए, और प्लीडिंग बतानी पड़ेगी. ग्राउंड तो हमें समझाइए कि किस ग्राउंड पर हाईकोर्ट स्टे कर रहा है. The only issue which we are required to see is twofold. One is the lack of authority and another is the competence. Now, you show that collector is not competent, that will be the end of the matter. Petition will be allowed. इसके पहले वाले केस में यही तो बहस हो रही थी. Then seek a passover to address on that issue. Passover में लीजिए. Petitioner prays for passover to address the High Court that whether collector is competent to pass an order of suspension / issuance of charge sheet in regard to a class 3 employee working in the office of CMHO Umaria in terms of the delegation of authority vested in him in terms of the orders of His Excellency Governor of Madhya Pradesh or not. Shri Anvesh Shrivastava prays for Passover. Matter be taken up in Passover round. Area number 55. Sir, in this case, I praise for 10 days time to file rejoinder, my lord. Shri Rakesh Singh prays for and is granted 2 week time to file rejoinder list after 2 weeks. Area number 56. Pension. हाँ. She retired from service. हाँ. In the 2021 Maratha. जी फिर. P3 Maratha. हाँ. Actually, what happened in this case, Maratha, initially she was appointed. हाँ. In the daily rated employee. 90 में डेली रेटेड एम्प्लॉय बनी. Yes, Maratha. On the collector rate. फिर हाँ, फिर 2014 में रेगुलराइजेशन हुआ और फिर कब 21 में सेवानिवृत्त हो गए. तो बताइएगा पेंशन नियम में कहाँ प्रावधान है? पेंशन किस मत से मिलेगी पेंशन आपको? अरे भाई P1 यस. ये पैरा 2 है. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी. द्वितीय श्रेणी लिपिक के पद पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है. इससे कैसे हो जाएगा? ना आप कॉसी परमानेंट आएंगे 1960 के नियम में, ना जो है आपका नियमित अपॉइंटमेंट है, ना आपकी तनख्वाह जो है, ना आप FR से कवर होंगे. कैसे आपको पेंशन मिल जाएगी? ये रूल 12 में. रूल 12 कौन सा रूल? पेंशन. हाँ दिखाइएगा रूल 12. इसी ये वाली ऊपर वाली किताब उठाइए. एक्शन पढ़ते हैं वकील साहब. 12(2) पढ़िए. ये नियमों में बंदों की अध्ययन अंग्रेजी में नहीं लाए क्या? Subject to the provisions qualifying service of a government servant shall commence from the date he takes charge of the post to which he is first appointed. किस पद पर हुए आप? सहायक ग्रेड. कहाँ है? उसके पद के विरुद्ध है, पद पर नहीं है. पद के विरुद्ध और पद पर फर्क होता है. ऐसा ही होता है जैसे आपका जूनियर आता है आपके बिहाफ पर एडजॉर्नमेंट मांगने के लिए, वो वकील साहब की एवज में आता है. ठीक है, लिखिएगा. This petition is filed by the petitioner claiming pension on the ground that petitioner was appointed as a daily rated employee against the post of second grade clerk at collector rate wide order dated 31/10/1990 passed by the project officer Women and Child Development Project District SHRI. Full stop. Petitioner's contention is that thereafter her services were regularized with effect from
4 मार्च में 4 March 2014, Annexure P2, full stop. She attained age of superannuation on 31/10/2021, Annexure P3, and therefore she is entitled to pension in terms of provisions contained in Rule 12 within bracket 2 of the Civil Service Pension Rules. Next para. Shri Khatka opposes the prayer and submits that petitioner was never given a regular appointment. Full stop. While Annexure R1, the state had issued a notification dated 13/4/2005 mentioning therein that contributory pension scheme will be applicable to the employees appointed after 1/1/2005. Full stop. It is not the case of the petitioner that she was drawing any pension or she was making any contribution to the pension fund or was paid any GPF amount or was made member of the pension fund upon her appointment as a daily wager in the year 1990. Therefore, next paragraph. After hearing learned counsel for the petitioners and going through the record, it is evident that petitioner, having put only 7 years, 8 months, 26 days regular service, has not completed the qualifying service for grant of pension, and therefore she is not entitled to the said pension. Full stop. Even otherwise, sub-rule 2 of Rule 12 says that subject to the provisions of these rules, qualifying service of a government servant shall commence from the date he takes charge of the post to which he is first appointed, either substantively or in an officiating or temporary capacity. Full stop. It nowhere uses the word daily wager. Therefore, even the provisions of sub-rule 2 of Rule 12 will not be applicable to the case of the petitioner. Therefore, petitioner being not entitled to any pension, her petition fails and is dismissed. Clear number 57. Om Shankar Pandey. देखिएगा श्री आपका शुभ नाम Manish Mishra. Manish Meshram submits that reply is awaited. Let reply be filed within 4 weeks. Clear number 50. एक second. By way of last indulgence, 4 weeks time is granted to file reply. List after 4 weeks. चलिए. Clear number 58. Pass over कर दीजिए. Clear number 59. क्या अखिल क्या हो गया क्या है क्या मैटर क्या है आर्ग्यूइंग काउंसिल कहाँ चले गए से जाना एडजस्टमेंट तो लगा नहीं इसमें ये क्या अच्छा अच्छा इसका मैटर क्या समझ तो ले वकील साहब लिखिएगा श्री आशीष कुमार आशीष कुमार शर्मा सबमिट्स दैट आर्ग्यूइंग काउंसिल कौन से वकील साहब चले गए श्री शैलेंद्र वर्मा had to leave court due to some emergency. He prays for adjournment. Readings are complete. List this case for final disposal. In part, petition is admitted. List for final disposal in part B of the cause list as per its turn and seniority. Tell number 60. Recovery matter is to be listed after decision. वही 815/17. Next case. Number 61.
Lordship, I have received the return on 6 Feb. Kindly, the जो return था वो मुझे 6 Feb को receive हुआ है। रिजॉइंडर फाइल करना है आप जी, rejoin जी। मैडम का शुभ नाम लिखिएगा। पूनम सोनकर। पूनम सोनकर। Compulsory appointment has been denied, my lord, due to the petitioner husband was working on the daily wage employment, lordship. बताइएगा फिर रिजॉइंडर क्या फाइल करना है? डेली वेजर को कहाँ राइट है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का? आपको एक मुश्त एक्सग्रेशिया मिल जाएगा, वो दे दिया आपने एक्सग्रेशिया। एक्सग्रेशिया दे दिया आपने? नो लॉर्डशिप। पॉलिसी में क्या लिखा है? कंपल्सरी अपॉइंटमेंट मांगा था, वो डिनाई किया उसको इसी ग्राउंड पे। वो तो ठीक है, डेली वेजर को अधिकार नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इनको एक्सग्रेशिया तो मिलेगा ना सर। क्लेम नहीं किया सर अंदर तो। हैं? ले आ जाने दीजिए, रिजॉइंडर देख लेते हैं। लेट रिजॉइंडर बी फाइल्ड विद इन 3 वीक्स लिस्ट। एक मिनट रुकिएगा। चलिए रिजॉइंडर के लिए टाइम दे रेस फॉर, ठीक है ना, लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स। नेक्स्ट केस। Has been classified and pursuant to the circular dated 7/10/2016. By way of this petition, my lord, the petitioner in the light of Ramnaresh Rawat is claiming the minimum of payment. कब क्लासिफिकेशन हुआ आपका? My lord, that has in the year of 2017, my lord, Annexure P4 is the order of classification. 6-10-17 के उसमें 7-10-17 की लाइट में है क्या? हाँ, 7-10-16। 7-10-16। इसको तो मैं डिसाइड कर चुका, 7-10-16 वालों को पात्रता नहीं है। सर अगर ये इसका सर्कुलर का वो क्लॉज देखेंगे। हाँ बताइए। कम टू मतलब पेज नंबर 18 my lord. पेज नंबर 18, यस 18 पैरा 5 my lord of the circular dated 7/10/2016. Annexure P2 my lord. P2 पढ़िएगा क्लॉज। मध्य प्रदेश दैनिक वेतन क्लॉज कौन सा पढ़ रहे हैं आप? सर क्लॉज नंबर 5 सर एट पेज नंबर 18 पढ़िए। मध्य प्रदेश दैनिक वेतन भोगी सेवा शर्तें नियम 2013 जो कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी किए गए को निरस्त किया जाकर विभिन्न निर्माण उपरोक्त कंडिका 1.1 से 1.8 तक के अनुसार मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अस्थायी आज्ञाएं अधिनियम 1961 व नियम 1963 के अंतर्गत इन निर्माण विभागों में कार्यरत श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिक मानते हुए आदेश जारी किए जाएंगे। मीनिंग देयर बाय माय लॉर्ड दिस विनिमितीकरण हैज बीन बोरोड फ्रॉम द एसएस, देयरफॉर इट्स अ क्लासिफिकेशन। Therefore, I am entitled to get the minimum of pay, my lord, as per the Ramnaresh Rawat judgment. This is my case. ठीक है, petitioner's contention is that petitioner is entitled to minimum of the regular pay scale in the light of the judgment of Supreme Court in Ramnaresh Rawat. पूरा लिख लीजिएगा 2017 का 3. Next, he has drawn attention to clause 5 of the GAD circular dated 7/10/16, which provides that the earlier rules, namely Madhya Pradesh दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी within bracket सेवा की शर्तें bracket close नियम 2013 which were formulated under Article 309 of the Constitution are being cancelled, and aforesaid paragraphs 1.1 to 1.8 persons are to be treated as laborers under the Madhya Pradesh Industrial Employment within bracket स्थायी आज्ञाएं, स्थायी आज्ञा को क्या बोलते हैं? Standing orders. Standing orders bracket close अधिनियम 1961 and the rules of 1963, and thus it is submitted that
petitioner's regulation of service will be treated to be a regularization of, permanent classification, and thus in view of such permanent classification, they are entitled to the benefit of the judgment of Ram Naresh Rawat. Let the specific affidavit be next line में लिखिएगा filed by the Secretary Ministry of Principal Secretary Public Works Department in this behalf. But as per the reply, also paragraph 6, my lord. The answer is that no post has been assigned to the petitioner when he was declared permanent classification के लिए post कहाँ assign की जाती है? This aspect has been raised by Shri Aivasi for the first time. It is an interesting legal question which needs to be answered and which will settle many controversies which arise before the High Court on day-to-day basis. Full stop. Therefore, it is directed that the affidavit of the Principal Secretary of the Public Works Department and also that of the Principal Secretary GAD be filed within 4 weeks, list in the week commencing 29 अप्रैल 2024. Number 63, Bhagwan Singh Thakur. This case, time was granted to file additional reply, but that has not been filed. भगवान सिंह ठाकुर for the petitioner. क्यों नहीं फाइल किया भैया आपने? No communication has been done, my lord. So we're 3 weeks time of filing additional. By way of last indulgence, 3 weeks time is granted to file additional return to the amended petition. List immediately thereafter. Week commencing? Week commencing 6 मई 2024. अप्रैल नहीं हो पाएगा उससे पहले. Number 64, Keith. This case तो filed rejoinder. जी. Rejoinder is rejoinder फाइल करना है आपको? कर दिया. कर दिया तो बताइए क्या मैटर है? It may be taken after the. क्या हो गया? देखिएगा श्री अखिल सिंह submits that he is not prepared with the matter and prays for time to argue this case. On his request, case is adjourned, list after 8 weeks. Number 65, PK Mishra. My lord, सर 15 नवंबर 2022 को नोटिस जारी हुआ था सर एमपी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड को. आज तक कोई आया नहीं सर उनकी तरफ से, रेस्पोंडेंट की तरफ से. नोटिस हमने जमा भी कर दिया 17/11/2022 को. Shri PK Mishra for the petitioner, none for the respondents. Though notices were issued on 15/11/2022. Full stop. श्री पूर्व क्षेत्र के लिए उनको बोल दीजिएगा उत्कर्ष अग्रवाल को. श्री उत्कर्ष अग्रवाल is directed to accept notice on behalf of the respondents. He may file his वकालतनामा and reply within 4 weeks. List thereafter. मैं कॉपी सप्लाई कर देता हूँ. Let an advance copy of the petitioner be supplied to Shri Utkarsh Agrawal. Number 66, Kumar Singh. मैडम का शुभ नाम डालिएगा. क्या शुभ नाम है आपका मैडम? प्रिया मिश्रा. श्री अमित कुमार स्थापक prays for and is granted by way of last indulgence 4 weeks time to file reply, list after 4 weeks. Number 67. 11 सितंबर 2023 इनको लास्ट चांस दिया था रिप्लाई के लिए. सर ग्रेचुइटी का मामला रिप्लाई ही नहीं देगा सर 4 बार से. Only 2 weeks time. So file reply on behalf of the student. तो मैं 2013 में रिटायर हुआ सर और 6 स्टेटस में ग्रेचुइटी पे करना सर मेरे को. I sincerely apologize that. सर 2021 में पेमेंट किया सर 9 साल बाद. Shri Dharmendra Soni for the petitioner. Shri Priyam Srivastav for the respondent number 2. On 11/9/2023, coordinate bench of this court had granted time by way of last indulgence. Thereafter, case was listed on 10/10/2023 when
Again, time was sought to file reply. Reply is not filed till today. Subject to payment of cost of rupees 5,000 by way of last indulgence, 2 weeks time is granted in favor of respondent number 2 to file reply. Let reply be filed on or before 19 अप्रैल 2024 list thereafter. No, बताइए राय साहब. 70 को list after decision in WA 815/17 is uploaded on the official website. भगवान दास जी, आपको कुछ कहना है क्या? नहीं सर, मैं धन्यवाद, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद.
4 बजे क्या है ये वही है कर्मचारी मोर्चा। निकाल लो। हैं? ये पिटिशन नंबर 2 का ऊपर ये घोषणा पत्र है कर्मचारी मोर्चा। जी, कितने कर्मचारी हैं, कितने मेंबर्स हैं, बायलॉस कहाँ है आपकी, फाइल करिए सबको। रेजुलेशन आपने बाहर जी भाई साहब, हाँ? रेजुलेशन रिजोल्यूशन कहाँ है इसमें? फाइल करता हूँ। हाँ, श्री Ashok Kumar Mishra plays for time to bring on record resolution of the general body authorizing the petitioners to file this petition. And there is 2 association, 1 and 2. Petitioner associations. 2 association. Let resolution, bylaws of the society, petitioner society and other relevant documents be filed within 4 weeks, list thereafter. Chali. These documents are necessary to determine the locus of the petitioner in terms of the judgment of Madhya Pradesh High Court in Prabhat versus Barkatullah University, Bhopal, 2000 ILR 2011 MP 1692. Your Lordship, बताइए प्लीज। my senior is connecting through VC, Your Lordship. कौन सा केस है ये? Serial number 6. मेरे यहाँ क्यों लगा है ये? मेरा तो बेल का रोस्टर नहीं है। Earlier it was decided by my lords. वो एक्यूज को दी है, कहाँ है वो ऑर्डर? 2 लोग देखिए सर, ये 439 है, 438 लगी। अच्छा, वेट प्लीज मैं हाँ 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। Am I audible, my lord? 1 मिनट रुकिएगा सक्सेना जी। जी बताइएगा।
Yes, Sakshana ji बताइए. मतलब पैरा 6 में kindly be seen of my bail application, my lord. Para 6 of the bail application, yes. मतलब the allegations are that co-accused Bubbly, Rani, Bubbly Gone and Urmila Gone. जी, सुसाइड नोट कहाँ है? उसमें क्या लिखा है? उसमें मतलब पैरा 7 लास्ट लाइन आई हैव मेंशन, my lord. पैरा 7 लास्ट लाइन, यस. क्या? हमने इनके नंबर इन सबको जानकारी आरती व्यास देती थी. That's the total allegation in the suicide note. जी जी जी. I am a government teacher. This FIR and Dehati Nalsi was registered 2021. The entire family has committed suicide. जी जी जी. The name of family members are also mentioned. Para Nandini, Archana, Grishma and Purva. और संजय जोशी इसने करी, उसने भी सुसाइड कर लिया, पांचों लोगों ने. जी जी जी. So the total allegation is after 2021 nothing has been charged, has been filed. 2024 the police is saying that we have verified the suicide note. You are also responsible. चार्जशीट आपके खिलाफ थोड़ा फाइल हुई है अभी कि आपके खिलाफ फरारी में फाइल हो गई? नहीं, फरारी में 299 की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं है. फाइनल चार्जशीट जाइए, सरेंडर करिए, सरेंडर करके फिर इन्वेस्टिगेशन में भाग लीजिए. I will participate, मतलब आई एम ए गवर्नमेंट टीचर. द डिफिकल्टी इज क्या हो गया? क्या हो गया? वो अरेस्ट हो जाएगी, जॉब चली जाएगी सर. तो नहीं, जॉब नहीं जाएगी, सस्पेंशन होता है जिसमें जॉब नहीं जाती इमीडिएटली. अरे वो सर अरेस्ट हो जाएगी, बेल नहीं होगी और फिर सस्पेंशन. क्यों नहीं होगी बेल? रेगुलर बेल ले लीजिएगा, ठीक है, सरेंडर करिएगा. Malord में पास, Malord if Malord is not inclined, Malord my submission दो ingredient of 306 and 107. If Malord is not inclined, all में सुसाइड नोट में नाम आया, मैंने मार्क कर दिया. सुसाइड नोट में आपका नाम है? हाँ, नाम सर, नाम पे एलिगेशन नहीं, मैं बोल रहा हूँ नाम है. उनने लिखा है सुसाइड नोट के सेकंड के जिम्मेदार हमारे पालतू जानवरों का वर्ड लिखा है सर. हाँ, के साथ में हमारे पालतू. जिन लोगों ने सुसाइड किया ये उनको नंबर प्रोवाइड कराती थी बात करने के लिए, बस इतना. हाँ, ये एलिगेशन है सर. हाँ हाँ. पर इंस्टिगेशन या अबेटमेंट मेरे खिलाफ कुछ नहीं है. 3 साल बाद अब पुलिस मुझे बोल रही है कि हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे. जी जी, ठीक है. आई विल कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन. सरेंडर कर दीजिए, लिखिएगा. श्री मैरिट पर चाहिए कि विड्रॉ करेंगे विद लिबर्टी टू सरेंडर? सर मेरे इंस्ट्रक्शन मैरिट्स पे कर दें सर, निवेदन था क्योंकि वो गवर्नमेंट सर. दिस इज फर्स्ट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 CRPC on behalf of the applicant Srimati Aarti Vyas, wife of Shri Rajesh Vyas. Full stop. It is submitted that petitioner is falsely implicated in trace crime number 1201 of 2021 at Piplani Police Station, District Bhopal, for offence under section 306, 294 and 34 of IPC and 3/4 of Debtors Protection Act. Next paragraph. It is submitted that if anticipatory bail is not granted to the petitioner, then she, being a government teacher, will face lot of harassment. Next paragraph. Shri. ये ऊपर सब लिख लेना. अंकित सक्सेना through video conferencing assisted by her. Shri Nitin Gupta, learned Deputy Government Advocate, has produced the suicide note as is available in the case diary, in which it is specifically mentioned that whole family committed suicide under gift of Rani Dubey and Bubbly Dubey, and the mediator in between was the present applicant Aarti Vyas. Full stop. Thus, it is submitted that Aarti Vyas, being a mediator, had a role of instigating the family and was part of the harassment caused to the persons who committed suicide. Next paragraph. Provide mobile numbers. She was providing mobile numbers to the opposite party. Next paragraph. It is submitted that 5 members of the family committed suicide. Yes, namely राजेश जोशी. नाम कहाँ है? पैरा 6 में 1 में लास्ट में है सर, पांचों के नाम आपने पैरा 6 में दिए. डिजीज पर्सन लास्ट 3 लाइन सर. नेमली श्रीमती नंदिनी जोशी, अर्चना जोशी, कुमारी ग्रीष्म जोशी, कुमारी पूर्वी जोशी, and also informant Sanjeev Joshi had consuming poison on 25/11/2021. Next paragraph. Petitioner has not come to cooperate with the investigation since for over 2 years. Full stop. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is true that charge sheet has been filed against some of the accused, and some of the accused have been given regular bail under section 439 CRPC, but petitioner has not cooperated with the investigation. Charge sheet is not yet filed against her. Full stop. There is no charge sheet under section 299 CRPC.
In view of such facts, comma, petitioner is still required to cooperate with the IO and then charge sheet can be filed against her. Or charge sheet may be filed against her, taking these facts into consideration, and prima facie case against the applicant Aarti Vyas, comma, anticipatory bail application under section 438 is hereby rejected. Oblige, my lord. Petition number 29. Please, Your Lordship, Lord, we were directed to comply with the order dated 19 February, my Lord, 2024. So today, after taking permission from the Lordship in the morning, those necessary documents have been brought on record. In case it has not reached Your Lordship, my Lord, may I just supply one copy? We have received this copy today only. अभी भी नॉन compliance है. We had granted you 7 days time on 4/3/2024. You were required to make compliance within up to 11/3/2024. You have not made any compliance. Where is your officer? I respectfully pray, my Lord, that first of all, my Lord, I offer my apology, my Lord, within that stipulated time frame, it could not be done. Where is the apology? Document में कहाँ लिखा है आपने? Document में नहीं लिखा, my Lord. तो फिर return affidavit file करिए. I offer my apology. I'll do it within the next 1 day. हाँ, you file your affidavit. देखिएगा श्री Naveen Vaswani for the petitioner, Shri Kabir Paul for the respondent. There is non-compliance. Respondent number 2 and 3. There is non-compliance of order dated 4/3/2024. Compliance was required to be made within 7 days. It is not made, and today morning permission was sought to file certain document with covering memo. Shri Kabir Paul tenders his unconditional apology. ये बताइए क्या लिखा है सर्विस बॉन्ड में? After perhaps not going through the impugned order, the Lordship had inquired as to what are the conditions in the service bond, my Lord, which he has violated. So, my Lord, may I just draw my Lord's kind attention to the impugned order, page number 32. Page number 32, annexure. Number 32 of the reapplication. Annexure. P3. P3, my Lord, P3. जी क्या लिखा? These are conditions 6, 10 and 11. 6, condition number 6. 6, 10 and 11. पढ़िएगा 6 क्या कहती है? 6 are कहती. May I just pray, my Lord, can it be taken up, my Lord? Today we have only received this document. ठीक है, देख लेते, एक मिनट रुक जाइए. My Lord, number 6, the service bond says, मुझे नियुक्ति पश्चात समय समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य संपादित करने के लिए मैं बाध्य रहूंगा. नंबर, my Lord. तो क्या उल्लंघन किया? कुछ जांच तो की होगी ना आपने? We had inquired into the allegation. Where is the inquiry report? The termination order, my Lord, records all. Where is the inquiry report? Recording a finding that there is violation of conditions 6, 10 and 11. My Lord, the authority was competent to, my Lord, review his performance. He has prepared a report, my Lord, that, my Lord, may be seen. Annexure. My Lord, may please have a look at the return filed by respondent number 2 and 3. Page, my Lord, annexure R24, my Lord, page number 17. जी. तो एक पेज का रिटर्न लगा हुआ है यहाँ पर 8145/14. The return of the respondent number 1. और तो 2 and 3 लिखा हुआ है इस पे. Return on behalf of respondent number 2 and 3. देखिए only दिखाइएगा, फिजिकल फाइल दिखाइए. R1 हमने अडॉप्ट किया है, R23 का इन्होंने अडॉप्ट किया है. रिटर्न मेरे रिटर्न में भी है साहब. अच्छा, आपके रिटर्न में देख लेते हैं. पेज नंबर 20 R24. हाँ, पेज नंबर 20 R1 के रिटर्न में पेज नंबर 20. हाँ.
पढ़ी क्या लिखा है इसमें 20 में? It says not, this is 13, dated 13 January 2014. Yes. This is not, sir, addressed to the competent authority. It reads not, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि श्री मोहित वर्मा मलोट इज द पिटिशनर। जिला समन्वयक को भोपाल संभाग में राज्य कार्यालय के आदेश क्रमांक 100 भोपाल दिनांक 21/6/2013 अनुसार अटैच किए गए थे, जिसके परिपालन में संबंधित द्वारा संभाग कार्यालय में अपनी उपस्थिति दिनांक 25/6/13 को दी थी। संबंधित को अटैच दिनांक से संभाग भोपाल अंतर्गत प्रारंभिक रूप से प्रस्फुटन समितियों की लंबित पंजीयन की अद्यतन स्थिति प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी से संपर्क स्थापित कर यथाशीघ्र लंबित प्रकरण का निराकरण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके लिए संबंधित द्वारा उपरोक्त लंबित प्रकरणों का कोई भी प्रगति तथा निराकरण से इस कार्यालय को आज दिनांक तक अवगत नहीं कराया। अतः इस कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है तथा संबंधित को पुनः संभाग कार्यालय के आदेश क्रमांक 418/100 भोपाल दिनांक 30 नवंबर 2013 द्वारा निम्न कार्य आवंटित किए। पहला साहब, संभाग नर्मदापुरम जिला हरदा होशंगाबाद एवं बैतूल में विकास खंड स्तर पर स्थापित नर्सरियों का मूल्यांकन तथा निरीक्षण करना। संभाग भोपाल की समस्त नगरीय 50 नवाकुमार संस्थाओं से संपर्क स्थापित कर चयनित बस्तियों में संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन कर निरीक्षण करना। संबंधित को पुनः रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज में संभाग भोपाल अंतर्गत समस्त जिलों की प्रस्फुटन समिति से संबंधित लंबित पंजीयन संबंधी प्रकरण चिन्हित कर उनका निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त अनुसार संबंधित Where is the inquiry? Where is the inquiry? Where is the show cause notice that you have not followed these provisions of the service bond and why not your services be terminated? Where is it mentioned? In number 22. Over a period of time, Over a period of time, we are not concerned. We are concerned with only one thing. But where is the show cause notice? There are number of allegations. No. What prevented you from issuing a show cause notice and inquiring into them? आप ऐसे हिटलरशाही कैसे चलाएंगे? अगर ऐसे ही हम आपकी पिटीशन को सिर्फ ये कह के खारिज कर देंगे, कबीर पॉल साहब खड़े हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऐसा कर सकते हैं क्या? हमें जो भी आप बहस कर रहे हैं वो लिखनी पड़ेगी and then I'll have to meet out this way or that way. If the case falls in your favor, I'll have to write. So where is the show cause notice? लिखिएगा. This petition is filed being aggrieved of order dated 21/1/2014 passed by the Executive Director of Madhya Pradesh Jan Abhiyan Parishad, Department of Personal, क्या है ये? PE&S क्या है? जी सर. Planning, Economic and Statistics, whereby services of the petitioner have been terminated. Full stop. It is mentioned in the said order that the order of termination is being passed on account of violation of the condition number 6, 10 and 11 of the service bond. Full stop. Next para. Condition number 6 of the service bond provides that petitioner had given an undertaking that he will perform all the works entrusted to him after appointment. Full stop. Clause 10 of the service bond provides that he will not perform any work or his conduct will not be of such level that it will violate the government rules or the public morals. Next paragraph. Clause 11 says that he shall not move out of the district without the permission of the state office. Full stop. There is no, next paragraph, there is no show cause notice issued to the petitioner. There is no whisper that how petitioner is guilty of violating these three conditions which have been mentioned in the impugned order annexure P3, dispensing with the services of the petitioner. Therefore, in absence of principles of natural justice being followed, the impugned order cannot be sustained in the eyes of law. Full stop. Shri Kabir Paul, ऊपर लिख लिया, Kabir Paul is at loss to point out that the principles of natural justice were ever followed and any show cause notice was issued against the petitioner. Full stop. Impugned order is set aside.
petitioner is reinstated in service. However, respondents will be at liberty to issue show cause notice, conduct a departmental inquiry, and if found guilty, to take appropriate action. In above terms, petition is allowed and disposed of. ये रखिएगा. As of now, my lord, we have to reinstate him. Yes, yes. We just, my lord, make one submission. But in one of the cases, my lord, that I had argued, my lord, there was some kind of similar allegations, and that particular, my lord, employee happened to be a contractual employee. Now, my lord, considering the allegations against him happened to be serious, wherein, my lord, one of the allegations is that he was taking the photographs of a female employee. my lord. यहाँ इनके खिलाफ है क्या ऐसा ऐसा allegation उन्होंने accept किया. कहाँ है वो allegation? इनकी डॉटर में एक बार मेरी प्रार्थना आप देख पढ़िए ना. पढ़िएगा. Lord, please have a look at page number Lord, 31. That is not an example. हाँ ठीक है 31 पढ़िएगा. It says there are number of allegations. नहीं आपने जो बताया फीमेल उनके फोटोग्राफ ले रहे थे वो कहाँ है बताइए थोड़ा सा. Lord, may please have a look at first paragraph only. Lord, श्री मोहित वर्मा की नियुक्ति संविदा आधार पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में जिला समन्वयक के पद पर दिनांक 12/3/2007 को की गई तथा श्री वर्मा द्वारा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में संविदा पर भर्ती हेतु निर्धारित शर्तों के पालन हेतु सर्विस बॉन्ड दिनांक 16 प्रस्तुत श्री मोहित वर्मा की संविदा पर लिखिएगा. एक चीज और लिख लीजिएगा. दो देयर आर एलिगेशंस ऑफ 2013 का एक्ट लीजिएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. दो इन द इम्प्यून्ड ऑर्डर देयर आर एलिगेशंस ऑफ indecent behavior with the subordinate women employees, but it is not pointed out that when internal complaint committee was constituted in terms of the provisions contained in act का नाम लिखिएगा. सर ने एक्सेप्ट करके माफी मांग ली थी. उससे क्या होता है in the sexual harassment of women at workplace within bracket prevention comma prohibition and redressal bracket close act 2013 and no such report of the internal complaints committee has been brought on record, which is mandatory after coming into force of the act on 22nd April 2013. Full stop. Order of termination is dated 21/1/2014. Therefore, it was mandatory to have followed the provisions of the act of 2013. There is no such material available on record. चलिए. That complaint was perhaps in the year 2008-9. So then there is no point in referring it to in the year 2000. At this stage, Shri Kabir Paul submits that complaint of harassment to women employees was probably in the year 2008-9. At that time, Act of 2013 was not in force. Full stop. If the complaint was of the year 2008 and 9, and there is no material to show that petitioner had repeated such indecent act subsequently, that stale old and stale charge could not have been made a foundation for removal of the petitioner. Full stop. Thus, impugned order annexure P3 further reveals that respondents were bent upon to get rid of the petitioner without following the due procedure as prescribed in law. ठीक है? चलिए. Next case. Whether my respectful submission is liberty has been reserved to us to inquire into the other allegations. मैंने कब कहा अदर? सुना तो करिए. Number 49. जी मिला आपको? Yes, my lord. Charge of all sub jails are with the subdivisional magistrate, my lord. जी. जो charge of sub jail है. नहीं charge of sub jail है, लेकिन नियम notification है 2001 का notification है. The rule in the rules 88 it, my lord may see. पढ़िएगा. If I may give a नियम लीजिएगा. This is the rule 88, my lord. इसमें it has been inserted in the chapter of superintendent of jails, my lord. पढ़िएगा. And the amendment is there, my lord. Rule 88. The subsidiary jail shall be supervised as collateral charges by the subdivision officer revenue of the subdivision in which the subsidiary jail lies. And no special pay or allowance. ये तो supervision के लिए disciplinary authority कब बनाया आपने इसको? वही my lord. अरे भाई. My lord, my only submission is that this is by virtue of this rule 88.
the subdivision magistrate exercises the powers of the superintendent of jail, my lord, that sub jail, my lord. Because this, my lord, ये उसी superintendent of jail की ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है? उस chapter में add हुआ है. Subsidiary line and If, my lord, that rule book is seen, it has been added in the chapter of superintendent of jails, my lord. ठीक है, it may have been noted. My lord, this is the rule, my lord, by which इसीलिए इन्हीं ने सब डिविजन मजिस्ट्रेट नहीं किया है. ठीक है, हम लिख देंगे. लिखिएगा. This petition is filed. इनका श्री. एक मिनट, एक बार वो चैप्टर भी देख. हाँ, देखिए ना. चैप्टर कौन सा? वो इसी में है जिसमें ये है, my lord, खंड 4 सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है. उसी में ऐड हुआ है. मध्य प्रदेश स्थिति लिपि में खंड 4 देखना है. यस my lord. खंड 4 अनुसूची. ये एमपी प्रिजन रूल्स 1968 है, my lord. हाँ, उसका खंड 4. इसमें खंड 4, my lord, में सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के अंडर ही रूल 88 ऐड हुआ है, my lord. अच्छा, देखते हैं एक मिनट. जी. CCA rules legal. CCA rules legal. CCA rules legal चाहिए ये वाले रूल. बीबी. होते.
वहां दिखाया था जी मिनट वो आई हैव फाइल्ड वो सीसीआर का शेड्यूल मिनट हाँ शेड्यूल वो आपने फाइल सप्लीमेंट्री रिप्लाई में मिनट वी हैव फाइल्ड हाँ उसमें ये सप्लीमेंट्री रिप्लाई इज आइए यस डॉक्यूमेंट नंबर मिनट 6965 और 23 बॉटम में है मिनट स्कैन में एक मिनट रुकिए सप्लीमेंट्री रिप्लाई यस मिनट इसमें मिनट शेड्यूल एनेक्स किया है हाँ R2 यस मिनट इसमें पेज 10 मिनट यस ये कंपाउंडर की जो पोस्ट है उसकी इक्विवेलेंट है हाँ तो उसमें इसमें क्या सुपरिटेंडेंट कहा? ऑफ जेल एंड मेडिकल ऑफिसर दो हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है ना यस मैम तो ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल में ही खंड 4 में जो रूल 88 ऐड हुआ है हाँ क्या उसमें क्या कह दिया उसमें जो भी सब जेल हैं इसको सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल कहाँ कह दिया था ये सब्सिडियरी रूल 88 इज नॉट स्पेसिफिक ऑन दैट बट वो उसी चैप्टर में ऐड हुआ है मेरा ये नहीं अगर आप वो चैप्टर खंड 4 का चैप्टर देख लिया जी इसमें कहीं पर भी ये नहीं कर था सब्सिडियरी जेल शिल बी सुपरवाइज्ड यस मिनट by the as collateral charges by the subdivisional इतना of the subdivision in which the subsidiary ये है मिलॉट बट ये यही इसी के पावर्स दे आर एक्सरसाइजिंग इन सब जेल्स नहीं वो नहीं होगा मिलॉट वो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का तो फिर पद ही खत्म हो जाएगा नहीं मिलॉट सब जेल में इनको है बस नहीं जहाँ पे वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी थोड़ी ना डेलीगेट की गई है मिलॉट वो यही लिखिएगा ये सेम रैंक होते हैं एसडीएम उससे क्या फर्क पड़ता है नहीं मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो इसी this petition is filed being aggrieved of the order dated नोट एक एस्पेक्ट एक चीज 30/7/2019 annexure P7 whereby petitioner who was working as pharmacist grade 2 in sub jail Dabra has been visited with a penalty of dismissal from service in terms of the provisions contained in Rule 10 within bracket Roman 9 bracket close of the Madhya Pradesh Civil Services Classification Control and Appeal Rules 1966 by the Director General of 66 full stop. Petitioner's case is that charge sheet was issued to the petitioner on 16/4/18 by the subdivisional officer and in charge superintendent of the sub jail where the petitioner was working, sub jail Dabra, where petitioner was working. He was not a competent authority to issue the charge sheet, full stop. It is submitted that along with the supplementary reply filed by the respondents as IA 6965/23, they have enclosed a schedule to the Madhya Pradesh Civil Services CCA Rules 1966 as SR/2 and on page 10 of this, though the post of pharmacist is not shown, but post of compounder is shown and the disciplinary authority for the compounder, class 3 non-ministerial compounder is superintendent of jail and medical.
Thus, it is evident that the appointing authority for class 3 non-ministerial employees like carpenter, compounder, male nurses, etc. is shown to be IG of prisons. Full stop. अपॉइंटिंग नहीं है, अपॉइंटिंग ही तो है, आप पढ़िएगा ना. बट ये शेड्यूल में जो लगाया है उसमें मेडिकल ऑफिसर भी है. हाँ, अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है मेडिकल ऑफिसर. ये हमारे पास भी शेड्यूल है ये. इसके लिए सॉरी इज द अपॉइंटिंग कंपाउंडर appointing authority of the compounder is medical officer, IG prisons काट देना. And the authority competent to impose penalties with reference to item numbers in Rule 9 is the medical officer / superintendent of jail. Then all penalties can be imposed and the appellate authority is IG of prisons. Full stop. Superintendent of jail कहाँ defined है? Not superintendent of jail, not is. जेल मैनुअल में होगा ना? Yes. Chapter is not that one. Just that is खंड 4 में ही है सुपरिटेंडेंट. खंड 4 में. हाँ, कहाँ लिखा है खंड 4 में? Definition नहीं है, not it is with respect to superintendent of jails. खंड 4. हाँ, डिफाइंड है सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल. जस्ट इसमें डेफिनेशन में नॉट इसको रख लीजिए. मैं लिखा दूंगा इसको देख के. रख लीजिए. Can I make more submission? हाँ, बताइए. Firstly, this regarding the whether this subdivisional magistrate was incompetent, they have not raised this ground anywhere. Anywhere. लीगल ग्राउंड हम देख सकते हैं. हाँ, अमेंडमेंट में बस सीधे लेके आए, पिटिशन में भी नहीं था. और 1 मिनट फॉर जस्ट 1 मिनट एडिशनल रिप्लाई में भी सी. हाँ, एडिशनल रिप्लाई बताइए. इसमें जस्ट टू शो दैट द पिटिशनर हियरिन ड्यूरिंग इंक्वायरी आल्सो हैड मेड स्टेटमेंट अगेंस्ट द अर्स्टवाइल एम्प्लॉय. मतलब जो उनके हस्बैंड हैं, ये खुद भी उनसे इतना परेशान थे कि उनने ड्यूरिंग इंक्वायरी उनके खिलाफ स्टेटमेंट किया था. ये क्या स्टेटमेंट दिया था, पढ़िए. एडिशनल रिप्लाई में वी हैव फाइल्ड इट एज एन इंफिडेंट मिलॉर्ड AR मिलॉर्ड AR2 यस. दिस इज एट पेज 9 मिलॉर्ड. जी. उन्हें उनको समन जब भेजे तो नहीं थे, तो उन्हें रिप्लाई किया था उसका. आप इन्हें लिखा है सहायक अधीक्षक जी को जेल जबरा. अब ये पत्र क्या बोलते मेरे निवास पर प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में मेरा पक्ष आपके समक्ष प्रस्तुत है. योगेश कुमार हेल्पर ने फार्मेसी के अनिवार्य रूप से गैरहाजिर रहने का नशा करने के संबंध में बतलाना चाहती हूँ कि पोस्टिंग इसके पूर्व सेंट्रल जेल पर में यहाँ पे भी उनके अनेक बार अनधिकृत रूप से अफसर गैर हाजिर रहते थे. सेंट्रल जेल जबलपुर में पदस्थ थे और मेरे पापा मेरे जेठ जी के द्वारा नशा छुड़वाने हेतु 3 माह के लिए नशा मुक्ति केंद्र जबलपुर और नागपुर में भर्ती कराकर इलाज करवाया गया. इसके बावजूद भी आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ. मेरे अनेकों बार समझाइश दी गई, जिनके बार भी कारबार विवाद होता था. केंद्रीय जबलपुर में भी अनुपस्थिति के कारण वो 9 वर्ष 9 पे का आदेश मिल चुका है. नशे की हालत में अनेक बार कभी रेलवे स्टेशन, कभी नाली, कभी शहर के बाहर पाए गए हैं.
जो कि एक बार मेरे द्वारा सिविल लाइन थाने में गुमशुदा रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी है। नशे की ठीक है, इस फाइल टेक इनटू कंसिडरेशन। चलिए चलिए। मतलब इन्होंने पूरा जो प्रोसीडिंग की है लॉर्डशिप जेल प्रहरी के रूल्स के अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है चलिए। My lord, will allow me. हाँ. There is a judgment, my lord. Even if we assume, my lord, that power has been delegated, my lord, that is only for the serving of charge sheet, my lord. The approval has still to be there, my lord. They cannot issue charge sheet like this. There is no approval, my lord. The charge sheet does not say so. ये जजमेंट भी रख लीजिए इसके लिए। That BV Gopinath's case, my lord, is para 14, my lord. हाँ ठीक। Para 14. 13-14. जी। रख लीजिए। Oblate. Number 54. That put forth a query as regards the competence of the collector. जी. Although it is not there in the schedule, but there is a circular of the state of 1996 which empowers the collector. So we have not raised that issue of competence before your lordships. फिर क्या है उसके अलावा क्या है? अगर कलेक्टर साहब कॉम्पिटेंट हैं तो चार्जशीट कैसे स्टे हो जाएगी? उसके बाद तो सिर्फ ये है कि आपको इंक्वायरी में भाग लेके अपनी जो है निर्दोषिता प्रमाणित करनी है। चार्जशीट के जस्ट पहले इन्होंने हमारे खिलाफ FIR का डायरेक्शन कर दिया था, सेम कलेक्टर विदाउट FIR क्वेश्चन करा लिया आपने? दैट इज बीन स्टेट। हाँ ठीक। उसके 7 दिन बाद इन्होंने हमको चार्जशीट दे दी। ठीक है। उसके पहले 2 बार अटैचमेंट ऑर्डर पढ़े हैं ना, चार्जशीट पढ़े अपन जरा देखें। और चार्जशीट में इन्होंने एक ऑलरेडी स्टे ऑर्डर का हवाला भी दे दिया है। ठीक है, देने दीजिए, चार्जशीट तो पढ़े हैं। कैन द कलेक्टर एंक्रोच अपॉन द स्टे ऑर्डर बाय द ऑनरेबल कोर्ट व्हाइल इशूइंग मी अ चार्जशीट? पढ़िएगा स्टे ऑर्डर क्या है। मतलब वो इनके पेज 61 में ही लिखा हुआ है। इसके पेज 61 जो चार्जशीट है आरोप पत्र का आरोप क्रमांक 7, दिस इज एनेक्सर P12। हाँ पढ़िएगा इसके जो आरोप क्रमांक 7 है। आई जस्ट रीड दैट। पढ़िएगा प्लीज। संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 100 भोपाल दिनांक के द्वारा आपके स्थानांतरण प्रशासकीय तौर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल किया गया था तथा कार्यालय CMHO के आदेश दिनांक 12/7/2017 द्वारा स्थानांतरण स्थान से कार्यमुक्त किया गया था, किंतु आपके द्वारा कार्यालय CMHO जिला उमरिया की ओर से प्रेषित पत्र क्रमांक 19/6/2017 द्वारा कूटरचित तरीके से तत्कालीन CMHO डॉक्टर RK सिंह के फर्जी हस्ताक्षर पर संचालय स्वास्थ्य सेवाओं को स्थानांतरण न किए जाने की अनुशंसा पत्र प्रेषित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश में फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज पेश कर माननीय उच्च न्यायालय जांच में मालूम पड़ेगा ना कि आपके हस्ताक्षर हैं, कूटरचित वो इंक्वायरी भी पुलिस द्वारा की जा चुकी, पेज 75 पे है। उसमें उन्होंने लिखा है कि शिकायत पत्र की जांच के दौरान संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाया गया, शिकायत नस्तीबद्ध हो गया है। ठीक है, तो FIR खत्म हो गई आपकी। ठीक है, अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने से कहाँ बंदिश है? अगर the malice was apparent, that is why the honorable court considered and granted me an interim release. The first order which was passed in favor of the petitioner. Where is the malice apparent? The first order against the petitioner below, that is at page P1, the attachment order, it got revoked by the authority itself, the same authority. We are not concerned with it. We are right now only dealing with the issue of charge sheet, and charge sheet can be set aside only on the ground of lack of authority. They themselves admit in their reply also, Miloj, are aware of the settled position that one of the grounds for challenging the charge sheet is a malice, Miloj, that they say in their para 4. Malice is not apparent on record. Collector exercising his authority against assistant grade 2. Malice कहाँ से आ गई भाई? Time and again, Miloj. Time and again. एक अटैचमेंट ऑर्डर होता है, उसको विड्रॉ करते हैं। एक सस्पेंशन होता है, उसको विड्रॉ करते हैं। दूसरा सस्पेंशन होता है, स्टे करते हैं। ट्रांसफर होता है, उसको स्टे करते हैं। उसके बाद FIR का डायरेक्शन कर देते हैं विदाउट अथॉरिटी। ठीक है, सेम ऑफिसर, ठीक है, सेम कलेक्टर मिलज। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स वुड द पिटिशनर मिलज फॉर अ कंप्लेंट, जिसकी कंप्लेंट आई अगले दिन इन्होंने हमको उठा के सस्पेंड कर दिया। नहीं ठीक है, उसको खुद ही विड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर दोबारा सस्पेंड कर दिया आपको। जब वो स्टे हो गया, जब जांच कंटेम्पलेट की गई
So in contemplation of the departmental inquiry, suspension order can be passed. Because power to register FIR was not there. They issued a direction to get registered an FIR against the We are not dealing with that. That is not the issue before this court. That would reflect something on the part of the authority. 30/12/2021 का सस्पेंशन ऑर्डर है, ठीक है, 30/12/2021 का एनेक्चर P4 पढ़े आपको। ठीक है। No, just prior to that, the revocation of suspension order 8/4/2022 का वो एनेक्चर P3 पेज 28 पढ़िएगा। इसका ऑपरेटिव लास्ट पैराग्राफ, अतः श्री वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी सहायक वर्ग 2 कार्यालय CMHO उमरिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पुनः निलंबन से बहाल कर यथावत पदस्थ किया जाता है। निलंबन अवधि पर का निराकरण ये दूसरा चार्ज था, ये दूसरा चार्ज था। वहाँ चार्ज था रिश्वत लेने का, P4 में रिश्वत लेने का चार्ज है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। So इनका इसी लाइन में जो मैं that is reading P328 उसमें जो लास्ट लाइन लिखी है, क्या लिखी है कि इनको स्थापना वित्त क्रय भंडार शाखा का प्रभार ना दिया जाए। वो ठीक है। तो once this order is being followed, this order is being followed by the authority to that effect also। 21 का ऑर्डर था, ये 30/12/2021 का ऑर्डर है। इसमें जो है आपने किसी मिश्रा जी से रिश्वत मांगी 2.5 लाख रुपए की, वो एलिगेशन है, that is एलिगेशन है, तो उसके जांच होगी, जांच होने दीजिए उसकी। चलिए क्या करना है बताइएगा, जाएंगे जांच में भाग लेंगे कि मेरिट पे ऑर्डर चाहिए। if an observation may come that without being prejudiced to the directions of FIR, because वो already वो तो आपकी ऑलरेडी स्टे हो गई ना, लिखिएगा। वो और श्री and Anvesh Srivastava, after arguing for some time, submits that he is ready to submit to the departmental inquiry, but the inquiry officer be requested to not to be prejudiced with the orders of lodging of FIR against the petitioner. Full stop. To this submission, Shri Ankit Agarwal, government advocate, has no problems. Accordingly, petition is disposed of with the direction that petitioner shall appear before the inquiry officer. Namely, कौन है inquiry officer? Inquiry officer within 7 days from today, along with the copy of this order, and shall cooperate in the departmental inquiry, which the inquiry officer shall make an attempt to complete within period of 6 months of the date of receipt of certified copy of the order. चलिए, accordingly petition is disposed of. Suspension की भी अपील कर दी आपने? Suspension की अपील, because that was pending before your lordship in the interim. We may be permitted to then. It is surprising that there, despite being a statutory remedy of appeal against the order of suspension, petitioner, instead of filing an appeal, approached the court directly and obtained a stay without informing the court coordinate bench that there is a statutory remedy of appeal as provided under the CCA rules 1966. Therefore, when there is a statutory remedy of appeal, the petition should not have been entertained. Full stop. Respondent is relegated to avail the said statutory remedy of appeal. 15 दिन में अपील करेंगे, 60 दिन में डिसाइड करेंगे. This court has not expressed any opinion on the merits.
Because वो observation as regards non-disclosure may come against me. I disclosed it in the petition that there is an alternative remedy of appeal. वो that observation. मैं ये थोड़ा ना लिखूंगा कि जज साहब ने नहीं आप चाहते हो तो वैसा लिख देता हूँ तो आपके आगे भी काम आता रहेगा. The observations are coming against me. मत लिखो ऐसा. That may not come in the order. आप फेयर बात करोगे तो फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा. हाँ, उसको काट देना, उसको ऐसा. That observation may not come. It appears that it escaped the notice of the coordinate bench that there is a statutory remedy of appeal. ठीक है, अब चलिए, हमें आता है सब तरीके से लिखाना. हाँ, वो तो वैसे रहेगा, वैसे रहेगा. In this, my lord, the petitioners were, my lord, the daily wage employees from 1987 to 1989. By order annexure P1, my lord, a regular pay scale was granted to them, my lord. जी. Now, the grievance is that, my lord, the arrears of this pay scale from 2003 to 2016 have not been paid, my lord. कौन सा 58 है ना ये? क्या हुआ फिर से बताइए. In this, my lord, the petitioners, my lord, they were employed as daily wage employees. Yes. Sometime in 1987. Yes. By order annexure P1, my lord. जी. A regular pay was fixed, my lord. When? It was, my lord, order dated 20/2/2018. जी. From page 12, my lord. Yes. Now the grievance is that, my lord, the arrears of pay according to this pay fixation has not been granted. कब से कब तक मिलना था ये? 2003 से 2016 तक. 2003 से 16 का इस स्कीम में कहाँ प्रावधान है? पहली बार तो 7-10-16 में कहाँ प्रावधान है कि आपको एरियर्स दिए जाएंगे? मैं लोग इसमें देख लिया. आप पढ़ाइए, स्कीम पढ़ाइएगा. P2 में. P2 पढ़िएगा. कहाँ है इसमें? पेज 18. पेज 18 यस पढ़िए. लास्ट पैरा में लो. हाँ पढ़िए. अतः आपके अधीन कार्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से निर्धारित सहमति प्राप्त कर एक सप्ताह के आवश्यक सॉरी मैडम एक पैरा ऊपर से पढ़ेंगे. क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं इससे नहीं मैडम आगे इसके एक पैरा ऊपर से ले लेते हैं. और उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषय में लेखे की प्रमुख अभियंता एवं उप सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दिनांक 6/1/22 को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रकरणों के संबंध में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्य विवरण के अनुसार दैनिक वर्गीकृत तिथि से देना है. वर्गीकृत तिथि आपकी बता दीजिए. इसके बाद से स्कीम देख लें मैडम. नहीं स्कीम देखेंगे पेज 19. वर्गीकरण की तिथि तो बता दीजिए प्लीज. ये तो ऑर्डर यही है. इसमें देख लें पेज 19. पेज 19 मैडम. हाँ क्या है इसमें? इसमें मैडम पैरा 1 मैडम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकृत आदेश दिनांक अथवा माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थायी तिथि वर्गीकृत दिनांक से वेतन अंतर की राशि का भुगतान किया जाना है, न कि कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक से. पैरा 4 ऐसे स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्हें पूर्व में नियमित कार्यभारी की स्थापना में वरिष्ठता अनुसार अथवा माननीय न्यायालय के निर्णय. दूसरी क्लॉज है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है. जी आप बताइएगा, एक आध तो हमें क्लॉज बताइए कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है. मैडम 2003 से तो नहीं है ना. नहीं. ठीक है, फिर क्या करें? इसमें हमने रिप्रेजेंटेशन भी किया. रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने से क्या होगा? अधिकारियों को एक नया एवेन्यू क्यों खोलना उनके लिए? जो एंटाइटलमेंट है वो दे दिया. हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो अधिकारी क्या डिसाइड करेंगे? ऑलरेडी आई पेड द लॉट फ्रॉम द डेटा परमानेंट क्लासिफिकेशन. देखिएगा, दिस पिटीशन इज फाइल्ड बाय द पिटिशनर्स क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ डिफरेंस ऑफ द वेजेस in terms of the pay fixation dated 20/2/2012 18 with effect from 2003 full stop. Next paragraph. Shri T.K. Khatka submits that petitioners services were regulated in terms of GAD circular dated 7/10/16. Their pay scales have been fixed accordingly. Now
there is no claim for payment of arrears with effect from 2003 or any other date. Full stop. Taking these facts into consideration and also going through the scheme dated 7/10/2016, comma, there being no provision for payment of arrears of pay fixation from a retrospective date, in as much as pay fixation has been made in terms of the GAD circular dated 7/10/2016, and such pay fixation being prospective in nature, comma, petition being devoid of merits deserves to fail and is hereby dismissed. I am proxy counsel in this case also. I need 2 week time for filing a rejoinder. रिटर्न कब फाइल हुआ था? 14 मार्च 23। फिर साल भर में रिजॉइंडर नहीं हो पाया, अब क्या होगा वकील साहब? अंतिम अवसर। चलिए मेरिट बता दीजिए। मैं प्रॉक्सी काउंसिल मेरिट्स पे केस बता दीजिए। मेरे पास फाइल नहीं, विकास चलिए हम देख लेंगे। करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। हाँ रिप्लाई है। तो आप किस उम्र तक चलना चाहते हैं? आपको 62 तक चला दिया, और कितना चलना चाहते हैं? अंतिम अवसर दे दिया। अंतिम अवसर दे नहीं, हम अंतिम तो देते ही नहीं है यार, ये तो अपनी डेट ऑफ बर्थ का झगड़ा है। जी जी brief facts of the case are that petitioner entered in service on 1/1/1983. He had filled his date of birth in the service record. Full stop. Next paragraph. On 7/1/1999, in 1999, he raised objection regarding correction of his date of birth before the respondents, when on 7/1/99, respondents had directed the petitioner to appear in their office along with date of birth certificate on 20/1/99. Full stop. Petitioner did not appear before the authorities and appeared before the district medical board and for his age verification on 10/5/2000, and in the medical certificate age was mentioned as between 35 to 40 years as on 10/5/2000. Thus, authorities have considered the case of the petitioner and age of the petitioner is accepted as 40 years by the authorities in the light of the medical certificate produced by the petitioner. It is submitted that the petitioner has again raised the dispute of date of birth after a lapse of 22 years and produced another medical certificate for correction in the date of birth at the fag end. Full stop. Next paragraph. It is evident that in terms of the provisions contained in Rule 84 of the Madhya Pradesh Finance Court, so also in the light of the judgment of Supreme Court in the state of Tamil Nadu versus T.V. Venugopalan, 1994, 6 SCC 302, a government servant is not permitted to correct the date of birth at the fag end of his service career, comma, when both the provisions are read together in conjunction, then it is evident that firstly, petitioner having filled the service book in his own hand and declared his date of birth after signing the service book, signing / putting thumb impression on the service book, is stopped from raising a plea of
date of birth at the fag end of his service career in the light of the decision of Supreme Court in TV Venugopalan. Thus, petitioner has no case for correction of date of birth at the fag end of the service, calling for interference in the impugned order annexure P1, declaring the date of retirement of the petitioner to be 31/5/2022. Petition fails and is dismissed. साहब का नाम डाल लीजिएगा. Number 59. लॉर्डशिप इसमें अभी आर्गुइंग काउंसिल के बेटे की तबीयत खराब हुई, उन्होंने फोन पर इन्फॉर्मेशन दी, इसको आफ्टर टुमारो या कल परसों के लिए कल लिस्टेड. परसों नहीं, पहले कितनी बार टाइम ले चुके हैं? बारह बारह बाईस को 12/12/22 को श्री नीलेश जैन है शॉर्ट टाइम. नीलेश जैन लॉर्डशिप. 14/12/22 को श्री राजकमल आर चतुर्वेदी Learned counsel for the petitioner issued notice to the respondent. ठीक है, ये 5/9 को कोई आया नहीं, तो क्या इशू क्या है देखें तो. Shows that, my lord, so the petitioner was inquiry officer, my lord, so TI. He manipulated the CR memo, my lord, so manipulated CR memo. हाँ, कुछ भी नहीं है. एक इंक्रीमेंट रोका गया आपका संचयी प्रभाव से. कल बुला लीजिए, कल लिखिएगा. Shri Vipul Jain submits that arguing counsel Shri Rajkamal Chaturvedi, Nilesh Jain had to leave the court because of illness of his son. Prays for listing of this case tomorrow. List this case tomorrow, top of the list as the first case. It is made clear that petitioner will be required to arrange for a counsel, and in absence of counsel, neither any passover nor any adjournment will be granted, and case will be decided on its own merits. बता दीजिएगा, ठीक है? और नहीं तो आप पढ़ के आ जाइएगा. Lordship, in this case, reply has not been filed with the देखिएगा, let reply of the state. नहीं, state reply of the state is still awaited. Notices were issued on 3/1/23. By way of indulgence, 4 weeks time is granted to file reply. List in the week commencing 6 May 2024. Number 72. None for the petitioner. My lords. आप किसके लिए है? My lords, we are for respondent number 2, my lords. Respondent number 2. Yes. आप गवर्नमेंट काउंसिल हैं? No, my lords. हैं? I am respondent number 2 for the Sorry, corporation. एक सेकंड भेजिए. जी, जवाब कहाँ है आपका? My lords, in fact, reply is ready, my lord. We intended. Ready मतलब? My lord, we have to file the reply, my lords. Reply is in fact ready. Reply of the respondent number 2 is yet not on record. Petition is pending since 2022. By way of indulgence and subject to payment of cost of ₹3,000, 2 weeks time is granted to file reply. My lords, my humble submission. We'll coordinate with the OIC. We'll file it by this week. In fact, ठीक है, कर दीजिएगा. आपका शुभ नाम बता दीजिए. श्री आदित्य अवस्थी. श्री आदित्य अवस्थी जी, आपके नाम में श्री आदित्य नाम है आपका? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक, My lords, ठीक है भैया, कर दिया. आपको टाइम दे दिया, 2 हफ्ते में फाइल करिएगा. my lords, नेक्स्ट my केस. humble submission if cost may be waived. नहीं, ये सब नहीं होता. After only 2 weeks time, file the rejoinder, my lord. देखिएगा, श्री ब्रजेश कुमार चौबे प्लेस फॉर एंड इज ग्रांटेड 2 weeks टाइम टू फाइल रिजॉइंडर. लिस्ट आफ्टर 2 weeks. How? Number 74. I pray for 2 weeks time. आई के लिए
So actually, this matter pertains to the order passed by the Tehsildar as well as the Commissioner. एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है ना सर, वो बिल के आधार पर हमें नामांतरण चाहा था सर. हाँ, तो बिल के आधार पे कहाँ होता है, सेटल्ड लॉ है, अब आपको वहां से डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा. सर, वो मेरा एक निवेदन है सर. उसी पॉइंट पे एक दो डिस्प्यूटेड जजमेंट थे, तो उनको लार्जर बेंच के लिए रेफर किया है. करने दीजिए, अभी तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा. अब डिक्लेरेशन ले लीजिए, जब तक स्टेटस को कर देंगे पार्टीज विल नॉट एलिनिएट दी सूट प्रॉपर्टी. ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे मालूम है, दे दीजिए, दीजिए गोस्वामी साहब. ठीक है ना. श्री विवेक अग्रवाल, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. श्री Sushil Giri Goswami for the respondent. In view of the decision of the coordinate benches in MP 2664/2019, Satish Chandra Sharma versus State of MP and others, and that of Gwalior bench in MP 4911/22, Chhatar Singh versus State of MP versus Surendra Kumar and others, it is now well settled that will could not have been acted upon as a basis for mutation, and the remedy is before the competent civil court for obtaining a declaration in regard to the will. Full stop. Shri Vivek Agarwal is at liberty to file appropriate civil suit. Till then, parties are requested to maintain a status quo in regard to the suit property. That is, that they will not create any third party right in respect of the suit property, if the suit is filed within 30 days from today. Chali. In above terms, petition is disposed of. Number 75. Lordship, I request Lordship 2 week time. Lordship, file additional document. My lord, pretty much similar. क्या हो गया? Lordship, इसमें some documents file करने हैं Lordship. Some documents. Yes, Lordship. अच्छा, ठीक है, लिखिएगा. श्री जयदीप सिलपुरकर for the petitioner. Shri Shamantak Mani Shukla for the respondents. Shri Shukla prays for time to file some documents. Accordingly, he is given. कितना समय चाहिए आपको? 2 weeks, Lordship. 2 weeks time is granted. List after 2 weeks. IR to continue. Only, Lordship. Number 76. Manoj Kumar Mundra. On the basis of bill, Lordship, the mutation order was passed in favor of the respondent, Lordship. Then by the Tehsildar? By the Tehsildar, I preferred the appeal along with the application of a condonation of delay. But delay application was allowed, against which they filed revision before the additional commissioner. That revision was dismissed. Thereafter, बहुत सेटल्ड हो गया है. सिविल सूट फाइल कर लीजिए बिल के बारे में, जब तक पार्टियों को स्टेटस को भी थोड़ी देर पहले आप सेम ऑर्डर कर देते हैं. ये कभी कंसेंट not the mutation in his favor, Lordship. अरे भाई, वो जमीन को एलिनिएट नहीं करेंगे संपत्ति को. आप ले आइए डिक्लेरेशन कि वो बिल सही है गलत है. इनको लेना पड़ेगा क्योंकि ये बिल के आधार पे आए. हाँ, तो वी आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो आर यू चैलेंजिंग दैट विल? भाई, if you are aggrieved of any action taken on the basis of that will, then you are required to file a suit challenging the validity of the will. Well, in fact, my lord, they have seeks to declaration, Lordship, and the mutation orders have been quite clear. समझ गया, आपकी बात समझ गया. इस जजमेंट की लाइट में 2 जजमेंट अभी साइट किए हैं. Mutation entries will not be sustainable, but parties will have to maintain status quo in regard to the suit property, and then anybody who seeks mutation will have to seek a declaration, and in the meanwhile, if you wish, you may also challenge the validity of the will. That is the part. With the consent of the parties. This petition is being disposed of by quashing impugned order annexure P6 dated 27/6/2023, passed by the Additional Commissioner Sagar Division Sagar, directing the party claiming mutation on the basis of the will to
seek a declaration from the competent civil court, and if the other party has any objection to the will, then they may also file a suit for declaring the will as null and void, as may be permissible under the law. And till then, all the mutation entries will be subject to the outcome of the said civil suit. Full stop. It is directed that parties shall prefer a civil suit staking their claim to the will or opposing the will within 30 days from today, and in that event, the party who is in possession of the suit property shall not create any third party rights without the leave of this competent civil court. इसमें वो दोनों जजमेंट लिख लेना, ऊपर जो लिखाए थे ना, अभी आप ही को लिखाए थे ना. हाँ. The above terms petition is disposed of. number 77 is Patna. None for the petitioner. Shri. उमेश शिवहरे. जी. उमेश शिवहरे. Umesh Shivhare for the respondents. Number 1. Number 1. By way of indulgence, case is adjourned. List after 6 weeks. Number 78 is Sandeep Dubey. None for the petitioner. Shri. Shyam Yadav. Shyam Yadav for the respondents. Number 1 and 2. 1 and 2. As nobody is appearing for the petitioner, by way of indulgence, case is adjourned. List on 2nd April 2024, top of the list. Number 79 is Surya Kumar Patel. Here, none for the petitioner. This petition is filed
challenging order dated 27/10/2023 Annexure P3 passed by learned Civil Judge Junior Division Ajaygarh District Panna in Civil Suit number 13A/2018, whereby learned Trial Court has dismissed an application under Order 18, Rule 17, read with Section 151 CPC for cross-examination of the plaintiff witness, namely Hakku Patel and Babbu alias Babulal Patel, in regard to documents produced in the suit. Full stop. Next paragraph. बताइए आपका क्या कहना है? My reply has been filed. I am appearing for 1 to 5 Malad at 12 and 13. जी? Page number 30 may be seen in beyond. 30. 30. Para second Malad, may I read? हाँ प्लीज. वादीगण द्वारा आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए लेख किया गया कि प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य होकर दिनांक 25/8/2022 को वादी साक्ष्य समाप्त घोषित की जा चुकी है और प्रकरण दिनांक 20/10/22 को प्रतिवादी गण की साक्ष्य हेतु नियत था, जिसमें करीब 1 साल से ज्यादा समय हो जाने के बाद भी प्रतिवादी गण की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा प्रकरण में वादीगण के रूप में मोतीलाल का नाम दर्ज नहीं है, for whom they are wanting to cross examine. ना न्यायालय के समक्ष एक क्षण क्या लिखा है, फिर से पढ़िएगा। और साक्ष्य प्रस्तुत की प्रकरण में वादी के रूप में मोतीलाल का दर्ज और न ही न्यायालय के समक्ष दर्ज नहीं है, साक्ष्य हुई है। लिखिएगा दिस एप्लीकेशन श्री आपका शुभ नाम? नीरज दुबे submits that trial court has rightly dismissed the application because plaintiff's evidence was over on 22/8/2022. Case was fixed for defendant evidence since 20/10/2022 and for more than 1 year defendant did not lead his evidence. Moreover, there was no witness in the name of Motilal was examined before the trial court on behalf of the plaintiff, and the plaintiff and the defendant, with a view to seek undue mileage, made a false application that he is required to examine the plaintiff witness Mohanlal मोतीलाल हक्कू पटेल और बाबूलाल पटेल को इन्होंने कहा था एग्जामिन करने के लिए। ये मोतीलाल कहाँ से आ गए? मोतीलाल का भी मेंशन किया है इसी ऑर्डर में। वो आवेदन कहाँ है इनका? 18-17 का इनका आवेदन है सर P1 at page number 10. P1 at page number 10 पढ़ते हैं। पैरा नंबर 4 सर। हाँ पढ़िएगा। यह कि प्रतिवादी गण की ओर से वादी मोतीलाल व उसके साथी हक्कू पटेल व बब्बू बाबूलाल पटेल से मोतीलाल को तो आपने एग्जामिन ही नहीं किया है। ये सब प्लेंटिफ भी नहीं है सर। हाँ लिखिएगा। It is submitted that neither Motilal was a plaintiff nor his और ये हक्कू पटेल और बबलू भी नहीं है विटनेस आपके वकील साहब। Nor suit was filed by the Motilal. Therefore, the evidence that therefore the application was made on a false pretext. Full stop. When provisions contained in Order 18 Rule 17 are examined, then Order 18 Rule 17 provides that the court may at any stage of a suit recall any witness who has been examined and may, subject to the law of evidence for the time being in force, put such question to him as the court thinks fit. Full stop. Next para. Law is very clear that a witness cannot be recalled or re-examined to fill the lacuna in the evidence. Para number 16 is important, my lord. As held by Honorable Supreme Court in Vadiraj Nagappa Varnekar within bracket D bracket close through LRs versus Sharad Chand Prabhakar Gogate. Para number 16. एक मिनट रुक तो जाइए। 2009 AIR SC 1604
wherein in para 16 it is held that the main purpose of the said rule is to enable the court, while trying a suit, to clarify any doubts which it may have with regard to the evidence led by the parties. Full stop. The said provisions are not intended to be used to fill up omissions in the evidence of a witness who has already been examined. Full stop. Taking note of the said judgment, comma, it is evident that there is no illegality in the impugned order calling for interference. Petition fails and is dismissed. रख लीजिएगा इसको फाइल में. मेरी रेफरेंसेस में डाल दे. मैं हाँ, आपका शुभ नाम डाल दीजिएगा प्रेसिडेंट. सूर्य कुमार पटेल फॉर द पिटिशनर. चलिए. So we moved an application for substitution of LRs of respondent number 2, IA number 1929 of 2024. Heard on IA number 1929 of 24. Application for substitution of legal heirs of respondent number 2. Respondent number 2. Same is allowed. Let necessary collection be carried out within 3 days. List this case. Ji. My lord, as per their own application, the respondent number 2 had died on 12 June 2023, my lord. They have not filed any application for setting aside of abatement or condonation of delay. Allow mat kariga application. Shri Raman Chaube. Raman Chaube has serious objection to said application and he submits that no application has been filed for setting aside the abatement, etc. Next para. Let Shri Raman Chaube file his reply to the application IA 1929 but it Chaubis within 4 weeks listed thereafter. So IA may be continued. Ji? IA to continue. 2 weeks kar do time. IA to continue list on 5 April 2024. On the last 2 occasions, the IA was not continued, my lords. ठीक है, चलिए. Number 81. In this case, respondent have rejected the claim of the for promotions only on the ground that there is a stay in Supreme Court, my lord. And yesterday, my lord, तो खत्म हो गया Supreme Court का stay, दीजिएगा. Yesterday, my lord, himself disposed of the petition, my lord. इसके आधार पर जो हमसे एक नंबर होगा उसका DPC करके promotion भी कर दिए. Petitioner's grievances that respondents refuse to consider the case of the petitioner for promotion on the ground that there is a stay from Honorable Supreme Court. Full stop. Shri Ajit Singh submits that this bogey of stay is falsely propagated by the respondents. Full stop. The respondents have recently promoted a person junior to the petitioner. एक number ऊपर शशि कुमार तिवारी. Just senior to the petitioner. Page number 42. On the post of senior accountant, as a fact which was communicated by Shri Aditya Khandekar in WP 10437 of 23, decided on 18 March 2024. Next para. Even otherwise, Honorable Supreme Court in दीजिएगा भाई. Rabish के पास से वो SLP नंबर निकाल के लाइएगा. अप्रैल का ऑर्डर है. इन इतना has directed the state to carry out the promotions and made all the promotions subject to the outcome of the SLP. In view of such facts, respondents are directed to consider and consider the case of the petitioner, for which they shall convene a DPC within period of 30 days and if found fit to take all consequential actions. Above terms petition is allowed and disposed of. P1 को quest करना पड़ेगा my lord. And except P1 is hereby quite to. But इसमें 90 days कर देंगे. 30 days बहुत है वकील साहब. काम करने वाले की 30 days बहुत है. Oblige. For respondent 1 to number 83. Please mark them. My lord, kindly pass over, my lord. कहाँ प्रावधान है पास ओवर का? 40 पे. नेक्स्ट पिक कर दो. आज बता दें, नहीं तो इसको फिर आपका शुभ नाम बताइए. उमेश शिवहरे. Umesh Shivare is not ready with the matter. Case is adjourned. कोई स्टे वगैरह है क्या इसमें? मतलब there is an order for मतलब subject to outcome मतलब. ठीक है, subject to outcome होगा जब ये decide होगी तो देखेंगे. You proceed. Case is adjourned. List in the week commencing 13 मई 2024. चलिए.
Yeah, number 84. Yeah, nothing. The return is awaited, my lord. Huh? Return is awaited. ये लिख लेना ये 10/4/23 का ऑर्डर है वो प्रमोशन वाला जो था ना उसमें ये हाँ रिटर्न इज अवेटेड लेट रिटर्न बी फाइल्ड विद इन 4 weeks लिस्ट देयर आफ्टर फिर मेरा कि रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो ठीक है Dispute is only regarding to 800 and something rupees, my lord. Huh? Matter pertains to the recovery. Of 800 rupees? My lord. They have specifically meant. Of 802 from ठीक है जवाब फाइल कर दिया चलिए Yeah, number 85. My lordship, the respondents are praying for 2 weeks' time to file the reply. श्री आदित्य वीर सिंह फॉर द पिटिशनर आपका शुभ नाम बताइए मैडम Rishika Pandey. हैं Rishika Pandey. Miss Rishika Pandey for the respondent prays for and is granted 2 weeks time to file reply list after 2 weeks. Yeah, number 83. Bharmati Apur. My lord, in this case, we have made very small prayer for modification of the order. Annex of P7. Earlier, the petitioner approached before this honorable court, my lord, and the order was pleased to pass by this honorable court disposing of my writ petition by order dated 1st March 2017, in which the this has been held by this honorable court that the petitioner has been discriminated in the matter of regularization. And with observation, my lord, may kindly come to paragraph 11 of the order. What is the annexure? Annexure, my lord, P7. 1 is the order. जी हाई कोर्ट का जी इसका पैराग्राफ 11 पढ़ना है 11 से मैं पढ़ रहा हूँ, my lord, पूरा ही रिलेवेंट है ये तो 11 के बाद जी The petitioners have also brought on record that the benefit of regularization has been accorded to the other similarly situated employees, namely Sri Lal Kumar Sharma and Motilal Dhar Dwivedi. In their return, the respondents have not denied the aforesaid ground. Petitioner इन लोगों का रेगुलराइजेशन कब से हुआ था इन लोगों का बहुत पहले हो गया, my lord. Exact date we are asking for from them under the RTI. They are not giving any information. चलिए जवाब बुला लेते हैं जवाब आ गया है डेट मांग लेते हैं हाँ जी जी Respondents are directed to bring on record date of regularization and the order of regularization of Shri Lal Kumar Sharma and Motilal Dhar Dwivedi as mentioned in para 11 of the impugned of the order passed by a coordinate bench in WP 1194/2012. They are also directed to produce the gradation list or oblique seniority list as on the date of their regularization, so that comparative position of the petitioner may be ascertained to adjudicate his claims. Let needful be done within 4 weeks. List thereafter. Chaliye. Number 57. Lordship, there is 3 days time to file rejoinder. It is ready. Mrs. Nirmala Nayak prays for and is granted 2 weeks time to file rejoinder. List after 2 weeks. Highly evidence. Number 88. Gopal Singh Baghe. Lordship, I am praying time to file reply in this. Shri Vinay Pratap Singh for the petitioner. Shri Atul Dwivedi prays for and is granted 4 weeks time to file reply. Number 89. Kumar Muni. My lord, in this matter, my lord, my application under 5 Rule 20 is pending, my lord. IA number, my lord. IA number 265 oblique. Pardon, IA number 265/2024, my lord. 24, my lord. 24, an application for publication of notice to serve the respondents number 1 to 47. 1 to 4, my lord. 1 to 4 is allowed. Let publication be made. कहाँ के हैं ये? ये नैनपुर, my lord. Be made in a daily newspaper having wide circulation in the district Mandla.
अनूपपुर एंड शहडोल, किसका 87 नंबर का केस है ना ये? 89 अनूपपुर शहडोल काट देना कोई। नैनपुर का ही है ना? नैनपुर डिस्ट्रिक्ट मंडल be having circulation in Nainpur district Mandla be made for which petitioner to take steps within 7 days, returnable 4 weeks. चलिए। Ma'am, I am appeal for respondent number 5 and reply. Rakesh Kumar Jain on behalf of respondent number 5 and 6. Number 90. But the another matter, my lord, is related, my lord, to the benefit of increment, my lord. The petition was retired, my lord, on 30th of June, my lord, 2000. 30 जून वाला जो 1 जुलाई वाला इंक्रीमेंट वाला है ना, वही वाला सीपी मुंदेना मनी से गवर्ट है, सीपी मुंदेना मनी से गवर्ट, सीपी मुंदेना मनी वाला है, याद है आपको? हाँ, कर लीजिएगा, चलिए। Number 91. Mr. Tiwari. May I please, dear lords? Lord, in this case, annexure P9 is under challenge. Case number, my lord, 31, by which my application for special appointment has been rejected without giving any reason. क्या रिटर्न में कुछ कहा क्या? रिटर्न में सर इन्होंने जो रिटर्न दिया है, रिटर्न में इन्होंने कंपेंसेट अपॉइंटमेंट का रिटर्न दिया है, बट दिस इज नॉट ए केस फॉर कंपेंसेट अपॉइंटमेंट. My father was soldier, my lord, and he was died by the militant fire during the Operation Rakshak. Now he comes under the policy made by the state government for special appointment, not regarding the compassionate appointment. Contention is that petitioner's case is not that of compassionate appointment, but of special appointment in terms of the policy dated. It's my lord, 11/10/2001. 11/10/2001. Respondents are directed to file a personal affidavit of the respondent number 2 in this behalf within 4 weeks, list after 4 weeks. Much obliged. Number 92. Mr. Tiwari. I'm praying for 3 weeks of time to file rejoinder in this matter. Shri Chopra, Ankit Chopra. Utkarsh Pachori, sir. Utkarsh Pachori, praised for and is granted 3 weeks time to file rejoinder. Obliged. Additional return, if any, be filed within further period of 3 weeks, listed thereafter. Obliged. Number 93. In compliance with the order, we have filed the affidavit of the my lord Chief Secretary and my lord grievance of the grievance of the petitioner has been redressed, my lord. Payment of 1,33 lakh. मेरा कॉपी अभी सप्लाइड टू मी, my lord. मिल गई ना आपको कॉपी? कॉपी दे दीजिए। May kindly grant me some time to go through. आएगा some time भाई, ये इनके अंडरटेकिंग नोट करते हैं कि इन्होंने वाउचर बना दिया है, 30 दिन के अंदर आपके खाते में क्रेडिट पूरा पेमेंट चला भी गया सर? चला गया, लिखिए बस, खत्म हो गया, लिखिएगा। श्री Akshat Arjaria for the petitioner, Shri Manas Mani Verma for the state. Shri Manas Mani Verma submits that all the due payments of the petitioner, including the areas of pension and gratuity, etc., have been paid to the petitioner, and in this regard he has filed affidavit wide IA number 111/2024, sworn by Shri Mohammed Suleiman, Additional Chief Secretary, Government of MP, Public Health and Family Welfare Department, in view of such undertaking furnished by the respondent state and the calculation chart enclosed by them. This petition can be disposed of with a caveat that in case any amounts are left, that petitioner will be entitled to agitate for them again by filing an appropriate petition. One liberty may be granted to me. About the promotion and to the 4th pay scale, my lord, they say that I have not been found entitled for that, my lord. So, my lord, I may be at liberty to challenge. तो कर तो दिया, चैलेंज करने के लिए दे तो दिया। Petitioner will be at liberty to challenge order dated 28/2/2024
passed by the state government. Next, by the competent authority. Chali. Inappropriate proceedings. Serial number 94. Lords, in this matter, my lords, we have recently filed Wakalatnama, my lords. I'm praying 3 weeks time to Aditya B. Singh Shri. Parag Tiwari. My lords. Praised for and is granted 3 weeks time to file reply list after 3 weeks. Highly open. Serial number 95. Lordship, I'm paying time to My file lord, reply. petitioner is seeking direction for 7th pay scale, my lord. Consider कर लीजिए लिखिए. My lord, annexure P5 same order has been passed, my lord. क्या करते क्या हैं आप? अब regular पे scale वाले petitioner's contention is that petitioner is working as a peon. अस्थायी कर्मी, हाँ Peon, स्थायी कर्मी, and he has not been given benefit of 7th pay commission in the light of the judgment of Supreme Court in Ram Naresh Rawat. ठीक है, petitioner has already made a representation. इतना will be decided. कौन सा order बोल रहे थे? Same order है? P5 my lord. P5 तो नहीं है यार. 27 नंबर पेज. हाँ? P5 27 नंबर पेज. 27 नंबर पेज पे तो कहानी और ही है कुछ. रोहिणी प्रसाद पटेल के नाम से है. माय लॉर्ड का ही ऑर्डर. ठीक है. 27 पेज पे तो नहीं है. पेज नंबर 27 में. 27 पे तो नहीं है वकील साहब. कहीं और लगा दिया आपने. नहीं माय लॉर्ड. कहाँ है ऑर्डर की कॉपी दे दीजिए मेरे. दे दो. सॉरी 95. आई एम सॉरी. ये जो P5 है ऑर्डर से कवर्ड है. सेम ऑर्डर कर दीजिएगा. चलिए आगे चलिए. Serial number 96. The reply is a bit. Shri Jitendra Kumar Tiwari for the petitioner. Shri Darshan Soni praised for and is granted 4 weeks time to file reply to the petition. List after 4 weeks. Serial number 97. Rajas Pohankar. Petitioner's grievance is that they have not been considered for promotion to the post of assistant engineer and the respondents be directed to convene a DPC and consider their cases for promotion to the post of assistant engineer in accordance with the rules. Next para. Nobody is appearing for the petitioner nor for the respondents, but the fact of the matter is that Honorable Supreme Court in ले लीजिएगा अभी भी इसको दिया है judgment has directed the authorities to go ahead with the promotion, which all will be subject to the outcome of the said SLP. डाल लीजिएगा, language ले लीजिएगा, ठीक है ना? In the same terms, petition is disposed of. 60 दिन में DPC करेंगे, and if found fit, then will issue promotion orders, which will be subject to the outcome of the SLP. Petition is disposed of. Serial number 98. Reply is waiting, Lord. जी. Reply is waiting, Lord. Amritlal Gupta. I'm praying time. Sony 4 weeks time to file reply. Any week comes. Week commencing 6 May 2024. Problem. Number 99. But in this matter also reply. Shri Abhay Tiwari. Abhay Tiwari for the petitioner. Shri Itna 4 weeks time to file reply. Serial number 100. Lord, I have moved an application for dismissal of petition. On the ground, this petition is not maintainable against the answering respondent, my lord.
since a DAV institution is a society, my lord, recently, my lord, the apex court had decided this issue in the case of Saint Mary, my lord, in which, my lord, the DAV institution was also considered, relying the judgment of the Marwadi Balka also, my lord. काट के दो लीडर को दे दे And paragraph 65 also, my lord, says even the institution is receiving the grant, my lord, then also, my lord, writ petition is not maintainable, my lord. देख लिया आपने ये जजमेंट? Yes, my lord, I have seen it. अच्छा. It doesn't come in my way. Okay. I'll demonstrate. इसको फाइनली सुनना है ना? हाँ जी हाँ सर. हाँ तो इसको फाइनली कब सुनाएंगे बताइए? फाइनली लगा देते हैं बुधवार गुरुवार को किसी. जी सर, जी सर. Readings are complete. Shri Manoj Kushwaha submits that in the light of the judgment of Supreme Court in St. Mary's Education Society and another versus Rajendra Prasad Bhargav and others 2023 का 4 SCC 498 this petition is not maintainable. Shri N.S. Rupra disputes this proposition and submits that petition is maintainable. Absolutely wrong. List this case for final disposal on 24 April 2024. Obliged. In part B of the cause list, top of the list. Yes, I'm so. Number 101. Reply is awaited. Which? Reply is awaited. Not responding. Reply has been filed on. Reply file हो गया? Respond number 5. अच्छा, respondent number 5. क्या है क्या? और दिवेश साहब एम्प्लॉय किसके हैं? Not for respond number 5. अच्छा 5 तो है ही नहीं इसमें. 3 और 4 ही है. Not we have subsequently pleaded by way of amendment. Not this is the IA 17524. नेताजी सुभाष चंद्र के एम्प्लॉय हैं क्या आप? My lord. अच्छा अच्छा. Let reply of the respondent number 5 be filed. आप आते हैं क्या इसमें? नेताजी सुभाष चंद्र के लिए कौन आता है? कहाँ है? कहाँ ढूंढने जाए उनको? Shri Siddharth Sharma is requested to accept notice. Shri Aditya Veer Singh is directed to supply an advance copy to Shri Siddharth Sharma, who may seek instructions list in the week commencing 8 April 2024. चलिए. Number 102. IR में गाड़ी. IR if I need to continue. जी. Your Lordship, I was instructed to pray this court for adjournment so that we can file the rejoinder. आपका शुभ नाम बताइए. Sir, Advocate Shashank Mishra. Advocate Shashank Mishra prays for. Sir, petition. और कौन अपीयर होता है इस हाई कोर्ट में? Sir, Gaurav Tiwari sir होते sir, but actually he was in. Advocate ही अपीयर होता है ना भैया? I'm sorry, Your Lordship. ठीक है. Shri Shashank Mishra, advocate, prays for time to file rejoinder. On his request, 2 weeks time is granted to file rejoinder. List after 2 weeks. Oblige, my Lordship. Serial number 103. Lord, in this matter, I'm praying that 4 weeks time may be granted for filing reply. आपका शुभ नाम बताइए. नीलेश अवस्थी. जी. नीलेश अवस्थी. क्या बोल रहा है? नहीं समझ में आया. नीलेश अवस्थी. Nilesh Kumar Avasthi for the petitioner. Shri Darshan Soni prays for and is granted 4 weeks time to file reply. Number 104.
Petitioner is claiming none for the petitioner. Petitioner is claiming that he is working as headmaster in government high school Budhiya, Riva, and his case for promotion be considered. Now the embargo which has been presented by the state government has been removed by the Honorable Supreme Court in SLP number itna itna. ठीक है ना? Therefore, respondents are directed to consider case of the petitioner for promotion to the higher post by convening a DPC within 60 days and passing appropriate orders in accordance with law. चार्ज ऑफ हायर पोस्ट चार्ज ऑफ हायर पोस्ट मांगा है। हाँ ठीक, चार्ज की जरूरत ही नहीं, डीपीसी कर लीजिए, अब तो आपको बचा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डीपीसी करने के लिए, 60 दिन में डीपीसी करिए जी। नंबर 105 Not some praying for 4 weeks of time to file rejoinder in this matter. श्री आदित्य पचौरी, Utkarsh Pachori. Utkarsh Pachori prays for and is granted 4 weeks time to file the rejoinder. List after 4 weeks. Hello. Obliged. चलो ले लो, 4 ही केस तो बचे, 5 केस, 2 2 4 5 केस बचे, 10 मिनट और चलने दो। नंबर 106 None for the petitioner. Shri Soni prays for and is granted 4 weeks time to file reply list after 4 weeks. Number 107 ये वो यूनिवर्सिटी वाला जो मैटर, University, I am appearing point 1 in which an application of 156(3) was filed, my lord. Then the FIR was registered, so we have challenged that part. Malaj, on the last date, compliance report was awaited, Malaj. हाँ अभी आ गई क्या? State. किसको देना है compliance? State, Malaj. आ गई compliance भी है? As per the order, Malaj, the university जी was required to answer the timings for the movement of students. हाँ वो आ गए नहीं आ गए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। University, my lord, is In fact, I had filed the out passes issued by the university, my lord. आउट पासेस तो ठीक है, जो पूछा था वो तो बता दे यूनिवर्सिटी। जी जी। the university is a separate. Affidavit of the registrar of the Dharmshastra University is still awaited. नहीं आ तो गया, आ तो गया, आपको कॉपी नहीं मिली क्या? ये फाइल किया है कॉपी नहीं। मनीष खरे एप्लीकेंट मेमो फाइलिंग डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड, ये आपने फाइल किया है क्या? नहीं, आई प्रोफेसर शैलेश हदली इतना इतना, रजिस्ट्रार इतना इतना। We haven't received the copy of the same, Malaj. Let copy of the affidavit filed by the registrar of the university, Dharamshastra National University, be supplied to। ये किसने फाइल किसने किया है? ये एप्लीकेंट मनीष खरे करके साइन हो रहे हैं इसके ऊपर। पिटीशन में जरूर होगा मनीषा करे। नहीं, मनीषा खरे तो पिटिशनर है। यस। एफिडेविट देखिए ना, उस पर जो साइन हो रहे हैं कवरिंग मेमो पर, वो एप्लीकेंट मनीष खरे करके साइन हो रहे हैं। आप तो फाइल करेंगे नहीं यूनिवर्सिटी के ब्याह पे। Let copy of the said affidavit be supplied to Shri Bindele, appearing for the Siddharth Bindel,
appearing for the petitioner in the connected matter Where is respondent? I'm for the respondent. and respondent in 107.1 by the learned counsel for the university within 7 days. Reply, if any, be filed within 2 weeks. List in the week commencing 8 April 2024. A copy of that may also be supplied. Shri, copy of this affidavit be also supplied to Shri Anil Khare, learned senior advocate, assisted by Shri Priyanka Agarwal. अग्रवाल जी डाउनलोड कर लीजिएगा, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफिशियली लिखा दिया है, जरूरत नहीं है सर, हमको वैसे we have just now seen it. डाउनलोड कर लीजिएगा, हम लोग कर लेंगे सर जी, कोई जरूरत नहीं है उसके लिखाने की, we'll get it. Serial number 108. Please, Shyam Yadav. Not 4 weeks time to file reply. None, 4 weeks time to file back. List after 4 weeks. Serial number 109. Please, Prabhakar Singh. Your Lordship, I am proxy counsel from the petitioner praying for 1 week time. 1 week for recovery. Recovery वाला. देखिएगा, list this case after decision in WA 815/17 is uploaded on the official website of the High Court. चलिए. Serial number 110. Reply is awaited. In 4 weeks for reply. 4 weeks for reply. List after 4 weeks. चलो ले लो भैया, 2 कुछ 5 केसेस हैं, तो ठीक है, अभी चलो और चलो 15 तक चलो, 115 के बाद फिर ले लेंगे. चलो. Serial number 111. VIVEK Kumar Patil. लॉर्डशिप इसमें निवेदन है लॉर्डशिप के फ्रेश नोटिस के लिए. लॉर्डशिप दस्ती नोटिस इशू हुआ था लॉर्डशिप, इसमें तो लेने से इनकार कर रही. 24 पेज रिटर्न आ गई है. कहाँ है, वेयर इज दी? 24 को लॉर्डशिप इसको नोटिस हुआ था, दस्ती नोटिस को 24. हाँ, उसके बाद क्या हुआ? लॉर्डशिप नोटिस तो रिसीव लेने से मना किया, तो वापस कहाँ है वो एफिडेविट? कहाँ है वो एफिडेविट? फाइल करना उसको लॉर्डशिप, अभी तो 2 दिन पहले आया मेरे पास, तो लॉर्डशिप मेरा निवेदन तो मैं उसको ही फाइल कर दूंगा फ्रेश नोटिस के लिए. लॉर्डशिप इसमें Ravinandan Dwivedi prays for time to file copy of the affidavit in support of Dasti service. List once affidavit is filed. चलिए. लॉर्डशिप इशू तो फ्रेश नोटिस तो कर देंगे. क्या मैटर क्या पहले समझाइए तो. यस लॉर्डशिप. किस ऑर्डर से दुखी हैं आप? लॉर्डशिप नेक्स्ट नंबर P1 से. हैं? नेक्स्ट नंबर P1 से. पेज नंबर 13 में लॉर्डशिप इसकी मैरिज हुई थी, मैंने डाइवोर्स का पिटीशन सेक्शन 13 के अंतर्गत फाइल किया था. मायके में रहते हुए लॉर्डशिप 2 चाइल्ड का बर्थ होता, मैंने इसको डिनाई किया कि मेरे बच्चे नहीं है, उसके लिए मैं लॉर्डशिप डीएनए की मांग किया था इसमें. और लॉर्डशिप इसमें डीएनए टेस्ट कराने के लिए notice to the respondents afresh on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. Number 112. Your Lordship, reply is awaited. Reply of the state is awaited. List after 4 weeks. Serial number 113. State नहीं है, reply of respondent is awaited. State है ही नहीं, पार्टी नहीं है उसमें. महाराज इन दिस केस आइटम नंबर 113 महाराज. हाँ. महाराज लास्ट डेट ऑफ हियरिंग 1/3/2024 का महाराज. ठीक. नहीं जी. Affidavit has been filed. अब क्या लिखा उसमें आपने? My lord, this is affidavit, my lord, filed by the district project coordinator. And this has been filed on 15th March.
विड्रॉ कर लिया अपना कम्युनिकेशन। Paragraph 6, my lord, we have admitted our mistake. हाँ लिखिएगा। श्री लालजी कुशवाहा। लालजी कुशवाहा for the petitioner. District Project Coordinator Shri R.P.R. Tripathi, son of Shri Ram Sevak Tripathi, has admitted his guilt in admitted his mistake in para 6, and therefore, after admission of the mistake and tendering unqualified apology, it is directed that now the applications of the petitioners be forwarded by the appropriate authority. Petition is disposed of as it does not call for any further action. Day number 148. So this is a matter after a dismissal from service after inquiry, lordships. The board is there, lordship, the person has expired. Now his mother is the person who is to, so it has required to be heard. Finally, lordship may fix any date so that I can. This case is to be heard finally. List for final hearing in Part B of the court list in the week commencing 22 April 2024, top of the list. Day number 150. और दिस इज दी अगेंस्ट दी अवार्ड ऑफ दी सीजीआईटी मतलब सीजीआईटी के अवार्ड के अगेंस्ट है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का केस था। इनिशियली कंपलसरी रिटायर दिया था उसको। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को प्रॉपर हेल्ड किया है लेकिन पनिशमेंट रिड्यूस डिस्प्रोपोर्शनेट करके डिस्प्रोपोर्शनेट की फाइंडिंग नहीं है। नहीं देखिएगा। श्री गोपी चौरसिया फॉर द पिटिशनर, नन फॉर द रिस्पोंडेंट्स by way of indulgence list this case on 13 April 2024। चलिए अब ले लीजिए भाई 126 मेंशन केस। टर्मिनेशन की अपील पेश किया था सीओ जिला पंचायत में लॉर्डशिप 2020 लॉर्डशिप टर्मिनेट हो गया था मतलब की अपील पेश किया लॉर्डशिप सीओ जिला पंचायत का पर लॉर्डशिप अथॉरिटी बीच में लॉर्डशिप चेंज हो गई है। नेक्स्ट P4 से लॉर्डशिप 24/7/23 को मतलब सीओ जिला पंचायत का स्थान पे कलेक्टर होने का मतलब अब अपील पेंडिंग है मतलब। Petitioner's contention is that he has moved an appeal against the order of dismissal passed by the CEO Jila Panchayat and Janpad Panchayat before the CEO Jila Panchayat. Now appellate authority has been changed and who has been nominated? Sub collector हो गया। And now collector of the district has been made the appellate authority. It is submitted that the appeal is since pending. Collector कहाँ के collector? सब सीधी मतलब। सीधी be directed to consider and decide the appeal. 15 दिन 60 दिन if not already decided, this court has not expressed any opinion on the merits. Number 129. लॉर्डशिप सीजीआईटी ने अवार्ड पास किया हुआ है उसको चैलेंज किया हुआ है एनेक्सर लॉर्डशिप P1 है लॉर्डशिप। The arguing counsel is joining through VC. कर दीजिएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा। हाँ बताइए क्या हुआ? थोड़ा सा आवाज अपना वॉल्यूम। Now I am audible, Lordship. हाँ अब आवाज बताइए प्लीज। It is to be heard finally, Lordship. It is against the award of the Labour Court, Lordship. लिखिएगा this case is to be heard finally. List for final disposal in the week commencing 13 May in Part B of the cause list, top of the list. चलिए। हर्षवर्धन सिंह राजपूत through video conferencing. श्री Pramesh Jain for the petitioner in person. I'm out. Day number 134. अरे अग्रवाल साहब जी, एक केस में हमने आपको म्युनिसिपल मिल गया ना? आनस वर्मा जी ने बता दिया ना आपको? मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। किसको इन्फॉर्म करेंगे आप? कॉर्पोरेशन को भी। अरे आप खुद ही इन्फॉर्म्ड हो जाएं बस काफी। नहीं, क्लाइंट को भी बताना जरूरी सर, विदाउट इन्फॉर्मिंग द क्लाइंट। क्या मैटर है ये? Lord, in this case, I am only seeking a direction to the respondent, Lord, to assign election duty, Lord, taking into consideration our seniority, Lord. Now, this petition, Lord, they are working on the direction दे देते हैं ना कि आपको appropriate काम
अभी भाई देखिए उनके स्टेटस का काम दीजिए आप उनको। Sir, my instructions are, my lord, the same matter, same subject matter, the same issue, my lord, has been decided by this court earlier. And my lord, I would just rely upon those two orders. दीजिएगा। Yes. क्या कह दिया? आप इतना तो कह सकते हैं ना कि आपके स्टेटस का ख्याल रखा जाएगा। सर वो स्टेटस का ख्याल तो वैसे भी रखा है। इन्होंने कहा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर हमें नहीं बनाया जाना चाहिए। नहीं, ये नहीं करना, ये मेरा नहीं करना। नहीं, स्टेटस में उनका आशय ये है सर कि अगर हम पोलिंग ऑफिसर हैं तो कोई एसडीएम या तहसीलदार जो प्रीवियसली ये बहुत पहले से रिप्रेजेंटेशन हर चुनाव में आता है। सो योर लॉर्डशिप में काइंडली सी my lord, these are the two orders which this honorable court has considered. My lord, they are clear directions by this honorable court, my lord. In other cases, that while assigning election duty, they should take into consideration the status of the employee. Direct decision, my lord, your lordship may kindly see this order. As far as possible. No. Mr. R.K. Jain. My lord, may first see, my lord, the instruction issued by the election commission. I am only seeking implementation of those instructions by the returning officer. Annexure P9, my lord, your lordship may kindly see Annexure P9. The relevant part is at page 49. I only say, my lord, that the returning officer should act in accordance with these instructions, my lord. These are the handbook for returning officer 2023. Okay, petitioner's contention is that page 49, my lord, clause 4. Senior professors in the university, assistant professor / professors in the university. Election Commission of India has issued handbook for returning officers 2023 enclosed by the petitioner as Annexure P9. Full stop. According to the petitioners, there are detailed instructions meant for the returning officer. Full stop. As per the provisions contained in general guidelines in para 3.2. Not clause 4, page 49. हाँ आ रहे हैं। जी। Clause 4 reads as under, within inverted comma, seniority of officials should properly be taken care of, comma, while giving election related duty, and it should be ensured that a senior official is not put on duty / under an official who is quite junior to him / her. Full stop. Presiding officers and polling officers are to be classified on the basis of a scale of pay and their post and rank. Full stop. In determining the rank and status of officials drawn from different pools with different pay scales, comma, the relative position of the official in his cadre / organization may be taken into account and not merely the pay scale. Full stop. Say, for example, comma, if a Group D employee from any pool, comma, even if drawing a higher scale, should not be assigned duties of a presiding officer or polling officer. Full stop. The presiding officer should be of higher scale / grade in comparison to all polling officers. Full stop. Inverted commas close. It is thus submitted that these guidelines be directed to be adhered to by the concerned returning officers / district election officers. And previously also directions have been issued, not in several writ petitions. I will just submitted that previously. लीजिएगा भाई. ये आपके आप ही appear हुए. Directions have been issued in WP 20455/13. Dr. R.K. Jain and others versus State of MP and others decided on 21/11/2013, comma, in WP 20756/2012, Dr. Dharmendra Pare and others versus State decided on 7/12/2012, and therefore this petition can be disposed of in the same terms, directing the authorities to
follow the principles laid down by this High Court in WP number 1536/04, Dr. Ranjit Singh versus the Bharat Nirvachan Ayukt and others, in letter and spirit, and in the forthcoming elections while assigning duties to various officers. Full stop. In above terms, petition is allowed and disposed of. My lord, may I respectfully submit? My lord, this would create a little, because here, my lord, my submission may be recorded. I am relying upon those 4 orders. The 4 orders, my lord, including all of them. Your lordships may kindly record those 4 orders, and I'll just take one paragraph of the Punjab and Haryana High Court. क्या कहता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट? कि आप प्रोफेसर को जो है चपरासी के अंडर में अपॉइंट कर देंगे? ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। अब तहसीलदार क्या होता है? क्लास 3 होता है। Can a professor be made to work under a तहसीलदार? Your lordships may kindly appreciate the Punjab and Haryana High Court order. बताइएगा। Yes. कहाँ है ऑर्डर? आपने दिया नहीं पंजाब एंड हरियाणा? है उसमें। लीजिएगा। ऊपर डिस्पोज ऑफ करने के पहले लिख लीजिएगा श्री Siddharth Seth has placed reliance on the judgment of coordinate bench in WP 348/2015, Dr. Dilip Kumar and others versus the state of MP and others, decided on 22/1/2015, and also in WP 24583/18, decided on 30/10/2018. Full stop. Reliance is also placed on the judgment of Punjab and Haryana High Court in Punjab and Chandigarh College Teachers Union and others versus Election Commission of India and others, 2004 SCC online P&H 450. ये बताइएगा क्या करना है? This one is from Calcutta High Court. इसको तो पहले पंजाब पढ़ लें. Sir. Lord, in this case, your lordships would allow me from para 5 onwards. Para 5 पढ़िए. Yes. So पैराग्राफ 10 ही देख ले, मैं भी उतना ही डायरेक्शन मांग रहा हूँ जितना इसमें दिया। पैराग्राफ 10 में जो डायरेक्शन दी, पैरा 9 पूरा पढ़ देता हूँ। पैरा 9 में डिस्कशन सब ठीक है, बट अल्टीमेट फाइंडिंग इज इन पैराग्राफ 10 में लॉर्ड। Now that is what my submission is all about. बस उतना ही तो कहा है, उतना ही पंजाब भी जो कह रहा है। नेक्स्ट पैरा, as far as WP 24583 of 2018 and WP 348/15 are concerned, the only thing is, my lord, here the court has said that the deputation is a temporary assignment. नहीं ठीक है. What has to be adhered to is, in principle, as far as possible, this should be adhered. Still, but Punjab and Haryana High Court in para 10 has categorically held as under, within inverted commas 10 dot, in the circumstances, ये para 10 note quote कर लीजिएगा इतना है ना. Same direction will follow in letter and spirit in the present case also. चलिए ये दीजिएगा. Petition is allowed and disposed of. कल को आप प्रोफेसर को पटवारी के नीचे काम करने बोल दीजिएगा. नहीं ऐसा हो ही नहीं रहा. ऐसा होता है, हमने देखा है. हम लोग भी वोट डालने जाते हैं, हमने तो ये भी देखा है. अभी आप आइएगा, आपको बताएंगे क्या क्या होता है वहां पर. हम यहाँ से बोल नहीं सकते हमने क्या देखा है. Because this honorable court has said, my lord, that election duty is akin to a national duty. So at least a temporary inconvenience, we understand that the inconvenience that not we are not ready to perform duties. We are ready to perform duties. मालूम है भाई, मालूम. वो जो जजमेंट रिलाई कर रहे हैं उसमें उनका कहना था कि स्टडीज अफेक्ट होंगी, therefore they should not be assigned election duty. ठीक है, वो अलग चीज. That is sacrosanct, my lord. We are so here in this case, my lord, we will be following the guideline as far as possible. नहीं, as far as नहीं, you follow it in letter and spirit. My lord, that area, my lord, I wish to, with great respect. चलिए बाद में बात करेंगे. Next case. Number 150. Lots of matter relates to frequent transfer, and as well as petitioner is going to retire just after 2.5 months. Lordship, that is on 31/5/24. Lordship. नहीं वो तो ठीक है. आप किस पद पर हैं? ADM सर. ADM, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. चुनाव आयोग की क्या डायरेक्शंस हैं? डायरेक्शन सर, जिनको 6 महीने से 30 जून 2024 को, जिसको भी 3 साल पूरे हो रहे हैं पिछले 4 वर्ष में, एक स्थान पर उनको हटाना है. आप कब से हैं वहां पर? वहां मैं सर भिंड से बैतूल ट्रांसफर हुआ मेरा जुलाई 2023 में. अच्छा, उसके बाद कब थे?
बैतूल में कब से कब तक रहे उसके पहले? जुलाई में आया हूँ सर बैतूल में। अच्छा, अभी कहाँ ट्रांसफर हुआ? अभी बैतूल से जबलपुर कर दिया सर। P3 से? जी सर, P3 पेज 21। Petition is that petitioner was posted at Betul wide order dated 20 जुलाई 2023। 20 जुलाई 2023. Prior to that he was posted at Bhind. जी। Full stop. Now wide order dated 14 March 2024 he has been transferred from Betul to Jabalpur. Full stop. He has been left with less than 2.5 months time. Full stop. His case does not fall within the guidelines of the Election Commission of India for transferring executive officers. Therefore, in view of the transfer policy of the state, which prohibits such frequent transfers and also permits a person to continue at his last place of posting when he is left with less than 1 year of transfer, impugned transfer order as far as it concerns the petitioner, is hereby state. Let the state file reply. State notice is waived by Shri Manas Mani Verma. Let reply be filed within 4 weeks. List in the week commencing 22 अप्रैल 2024। Praying for history. क्या चाहिए? Sorry, बात तो करिए आप लोग। extremely मुद्दे की बात ही I नहीं was सुनी। thinking something else. Obliged, highly obliged. Number 151. This is pertaining to the appointments of Samiti Prabandhaks, my lord, that is 40%, 60% ratio, my lord. Your lordships have heard, lord, in various. This is arising out of same dispute. सेम ऑर्डर कर देना, कनेक्ट करके लगा देना। Obliged. Serial number 160. Shri Rahul Mishra. None for the petitioner. एक सौ 16 में रिप्लाई है। By way of indulgence, cases adjourned list after 4 weeks. Serial number 117. My lord, requesting 2 weeks to file a reply. None for the petitioner. Shri Akash Munaf. Sandeep Marwa. Sandeep Marwa. Marwa for the respondent number 2. For the respondent. Raised for and is granted 3 weeks time to file reply. List after 3 weeks. Serial number 180. Shri Rajan Sponsor. None for the petitioner. आप किसके लिए हैं? नहीं सर। None for the respondent. Cases adjourned. List in the week commencing 8 अप्रैल 2024. Serial number 190. Shri Prabhakar Singh. Lordship, I'm praying for 1 week time. जी So your senior is not in the court. क्या हो गया?
He's not well. He went आपका home. शुभ नाम तो बताइए. Ashutosh Singh. आशुतोष सिंह. Raised for time. Case is adjourned. Just after 6 weeks. Published. Number 120. And the petitioner was the employee of respondent CRPF. जी. And his writ petition number 3316 of 2002 was allowed by this honorable court on 18/3/2008 by annexure P1 at page number 14 to 18. माइलर पेज नंबर 18 पे ऑर्डर का फाइनली सुनना पड़ेगा कोटेचा साहब. जी माइलर. फाइनली सुनना पड़ेगा. जी माइलर, छोटा सा पॉइंट है, इंटरेस्ट का पार्ट बस बाकी है. क्या इंटरेस्ट का पार्ट है बताइए. माइलर, इंटरेस्ट के पार्ट में हमने हमारा क्लेम है रिलीफ में कि पिटिशनर बी पेड interest on back wages, reasonable interest of 12% per annum on back wages from 18/3/2008 to 25/3/2017 till the actual date of payment. अच्छा, अब नौकरी में आने से संतुष्ट नहीं है अकेले. चलिए. Petition is to be heard finally. Readings are complete. List for final hearing in Part B of the cause list in the month of July 2024. फाइनल हियरिंग एंड मोशन. हाँ लाएगा. टॉप ऑफ द लिस्ट कर दीजिएगा. चलिए. ओबलाइजेशन. सर आप कुछ कह रहे हैं क्या. 136 पे था तो मेरे का हाथ में जाएगा इसलिए बैठा हुआ. 136 वो 134 तक हुए थे. देखो आई वाज सिटिंग. जी जी.